ಹಲೋ. ಎಸ್ಎಂ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಸಿಪಿಎಲ್ T20 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 T20 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂಥ ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು MCF ತಂಡದ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಶವ್ ಪೂಜಾರಿ, ಯಾವ ಮಾರೆ ಯಾವ ಬಲೆಯವರ ಏಯ್ ಏತು ಪಾತ ಇರುವಾರ ಮಾರ ಮಂಡದಿ ನೋಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತುಂಡಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪುರ ಇರೇ ನಿಕ್ಲೆ ರಜ್ಜ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ರೂವಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದೀಪಕ್ ರಮೇಶ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜಯರಾಮ್ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧರ್ನೇಶ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 Cpl T20 ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. SM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು MCF ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ 3 ದಿವಸ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ರೂವಾರಿ ಜಯರಾಮ್ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಚಪ್ಪಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಯರಾಮ್ ವಿಜಯ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿ ಜಯರಾಮ್ ವಿಜಯ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಇನ್ನೋರ್ವ ರೂವಾರಿ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೇಶವ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕೇಶವ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಇನ್ನೋರ್ವ ರೂವಾರಿ ದೀಪಕ್ ರಮೇಶ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ರಮೇಶ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ Cpl T20. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ರೂವಾರಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧರ್ನೇಶ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಈ ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಣಗಾರ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ, ಕಳೆದ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎಜೆ ತಂಡದ ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಎಜೆ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಹಿದ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ
ಓಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. 3 ದಿವಸ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ದ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ officials, because they are the one is responsible for the cricket responsible for the success of any cricket tournament. Officials ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿರಾಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಧರ್ನೇಶ್, ಹಾಗೆ ಧನುಷ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತರು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಮೃತಾಸದಿಂದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಮೂಲಕ CPL ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗೋಪಿ ಅವರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಾರಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಸರ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗುವಂಥ ಸಂಕೇತ ಅದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ಜಯರಾಮ್ ವಿಜಯ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಮೃತಾಸದಿಂದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸತೋಮ ಸತ್ಮಯ ಸತ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯುರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾಧಿಸೇವಿತಂ ಕವಿಗಜಂ ಗೋಪಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ. ಓಂ ಗಣಗಣಪತಾಯ ನಮಃ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಇವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 CPL T20 2025 ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು CPL T20 Corporate Premier League 2025, it was inaugurated by the dignitaries in our dais. Thank you very much for your important time for this prestigious cricket tournament. We are straight away going into the next procedure of this cricket tournament. Tossing ceremony will going to start within 5 to 10 minutes. So thank you very much each and everyone for your cooperation. ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಟಾಸ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. AG ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಗೂ NCF ಈ 2 ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ matches in the 3 days of cricket, and I hope every team will go into play with the true spirit of game and play hard, play well, and play fair, and straight away going into that commentary box for the first match of this cricket tournament. MCF takes on AG Hospital in the opening encounter of this prestigious CPL T20.
Hello. Check. Check. हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने बहुत ही I request captain of AJ. AJ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है बेशर्म कहाँ है दुनिया वालों हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने नशा चढ़ा So welcome back once again for the tossing ceremony of the prestigious Corporate Premier League 2020, which is 2025, which is proudly presented by SM cricketers in this most beautiful NMPA BR Ambedkar Cricket Ground. All set now for the opening match, and we have umpires for this cricket tournament. We have the very experienced umpire, Mr. Viraj, in my right, and Mr. Avinash, the qualified umpire of Karnataka State Cricket Association. Welcome, sir, for this prestigious cricket tournament for the day number 1. And we have Mr. Gopi in my right, and of course, one of the organizer, Mr. Jairam Vijay, will going to toss the coin for this opening match. And we have 2 captains of the opening match. We have a captain, Mr. Keshav Pujari, for team MCF, and Mr. Dr. Sharan for Sharan Shetty for AJ Hospital. All the best for the opening match for both the captains. And now it's time for the tossing ceremony. Yes, Jairam will go into toss the coin, opening tosser. Our chief guest as well as, yes, organizer of this cricket tournament. The call for captain of MCF, Keshav Pujari. He will go into call, and Jairam will go into toss the coin. Tail is a call, and it is head. So congratulations, Dr. Sharan, you have won the toss. What you are going to decide in the morning? As for your prediction, how will go into the wicket, and what your decision going to be after winning the toss? We're going to ball first because it's a very fresh match, and then probably we don't know how it is going to be there. So we will try to restrict them to a decent total, and it will be easy for chasing. Okay, and you are just talking about you wanted to ball first, and you have to restrict them in 22, you know exactly T20, and you are observing the present cricket is almost dominated by the batters. And what is your strength in a bowling department? The combination of your bowling department, how much face bowler and the spin bowler in our bowling department? No, we have a mixture of both. We have experienced and little inexperienced players. So let me not talk more about them. Let me see how they'll perform in the field and then get the best out of them. Thank you. Thank you very much, Dr. Shan. All the best. And yes, we have Keshav Pujari. He is one of the organizers as well as leading the MCF team. And Keshav Pujari, are you disappointed with losing the toss? If you are the winner of the toss, what your decision? We decided to bat as well.
So nothing, we lost the toss. It's okay. We have put on good score and defend the total. How much score you wanted to score in this surface? You know exactly NMPD cricket ground. It's first 3 overs might be a little bit difficult. If you manage to negotiate that first 3 overs, and you can put some good score on the board. And what is your batting strength? And we will going to point out your trump card batter for your side. 150 plus will be the key, and first openers and 1 down 2 down will be the key players for us. So first 6 overs will be the key in this. Actually, some little bit of moisture will be there, so we'll see what will happen next. Exactly. So that is the game plan of Keshav Pujari. He wanted to put 150 plus runs on the board in the morning, and he was just talking about the morning might be a little bit advantage for the ball, but not that much of Gopi, because of course if the month of December and November we can say that there was a little bit of moisture and the moment, but month of April, everybody knows the hot condition in Mangalore, isn't it? It's more than 30 to 38, and especially Kanimkirita Panambur. If you see that the weather condition in Mangalore, Panambur is witnessing more than any places. 37 is the morning itself. So I'm not thinking about it going to be any moisture will going to help the wind. But the moment, what I'm talking about, the shining, the new ball is hard in the nature. So maybe a little bit moment, but not more than 3 overs. I think it's going to be a best game of cricket. If the batting first team will going to score 150 plus or 170, it might be a very good match for the spectators in the openers. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त हालांकि टेम्परेचर के बारे में जहाँ तक सवाल है तो शायद कर्नाटका में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मंगलूर के इस पणंबूर में कई बार दाखिल हो चुका है. तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी इट्स गोइंग टू बी टू हाई. इट्स गोइंग टू बी 34 to 35 डिग्री सेल्सियस. और इस गर्मी में खेलना उतना आसान नहीं है, और देखना यह है कि खिलाड़ी किस तरह इस गर्मी को एडजस्ट हो पाते हैं. और निश्चित रूप से हम कहते हैं एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला CPL T20 2025 विच इज प्राउडली प्रेजेंटेड बाय SM क्रिकेटर्स. और एक बेहतरीन रोचक क्रिकेट हमें यहाँ पर इन 3 दिनों में देखने को मिलेगा इन 6 प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट टीमों के बीच. और इस उम्मीद अपेक्षा के साथ एक बार पहली बार वी आर स्ट्रेट अवे गोइंग टू आवर कमेंटेटर बॉक्स. Exactly, Gopri, what we were talking about the weather condition, it might be the challenge for the players, because they have to play with the 37 degrees Celsius, almost which is going to record in the after 11 or the 12 o'clock. It's going to be challenging for them. And at the same time, the advantage for the batter is that at artificial track, isn't it? Astro a track which is implemented for this NMPA cricket ground. It's going to be a opportunity for the batters to get some good score on the board. And wait and see how well this team will go to battle for the victory in the opening matches of this prestigious CPL T20 leather ball cricket tournament, which is proudly presented by SM Cricketers Mangalore. Thank you. So we are going to start within 5 minutes. So please note, within 5 minutes we're going to start the first ball. We're going to bowl the first ball, and I request both the teams, please get ready for the inaugural match. Thank you.
beats we make unstoppable. Don't stop the party. Don't stop the party. This is that original. This has no identical. You can't hack my digital. Future aboriginal. Get up off my genitals. I stay on that pinnacle. Kill you with my lyricals. Call me verbal criminal. Send you to that clinical. Subscribe you some chemicals. Audio and visual. Can't see me. Invisible. I'm old school like biblical. Futuristic next level. Never on that typical. Will I stop? Oh, never know. I ain't gonna stop until I'm done. Don't stop it. I ain't gonna quit until I won. Now, baby, don't you stop it. Stop it. Now, baby, don't you stop it. Stop it. Now, baby, don't you stop it. Stop it. You cannot stop the time. I ain't gonna stop until I'm done. Don't stop it. I ain't gonna quit तो शुरू करें। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था। तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। Let's go! थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए।
The back foot nicely flicks that one off his legs down to short fine leg region for a single. So Rajiv got his fifth run from the bat, and the scoreboard now moves on to 5 on the board. Left and right combination. Deepak Ramesh is a striker. Deepak Ramesh is one of our organizer as well in this CPL. So that one of the good player for the side as well for MCF. So they're looking for the decent start. Bowler who started the first over. Shishir Holla, the bowler who brought into attack to bowl the first over of the power play. So the fielder down at deep long off, Loki Puttur, and one at a little bit long on, in fact, and one at deep mid wicket. And now nice looking drive, but lack of placement. Played it down to short mid off region. The edge of the circle is standing in the edge of the circle. The power play, only 2 fielders outside the circle, not more than 2 outside the circle in the power play. Appeal for leg before wicket. Umpire not interested. Maybe that ball is just going down the leg side. Of course, the bowler is operating around the wicket angle, which is definitely will going to miss the leg stump after seeing the bowler is bowling coming wide of the crease, and no run scored. Oh, lovely delivery, high arm bowling action. The spin bowler in operation in the first ball. It's the first over itself. The decent start there from Shishir as he bowled a tidy over. Just 5 runs came from that over. And Deepak Ramesh has played that last 3 deliveries, but fails to open the accounts. But altogether 5 runs. Steady start from the opening batters of MCF. Loki Puttur, and one more well-recognized name in cricket. Of course, got a lot of experience behind him. Great all-rounder. Will going to start his first over and second over of the innings of MCF. In the first 10 overs, the bowler have to operate from highway end, that is our commentary box end, and just I want to see the field setting of Loki Puttur, the wicket keeper in the right position for the medium pass bowler. And there is a first slip. The fielder at backward point, one at cover point. Short extra cover or not tucks. And in fact, the not in the edge of the circle, but mid of that. There is fielder at short mid off. The fielder at mid on, little bit wideish, and fielder at in front of square. And one fielder down at deep fine leg and deep third man. So 2 fielders outside the circle. One out to deep fine leg. Little bit squarer, and the deep third man is also almost between gully and third man. Loki. First ball right on the money, right on the target. Absolutely, as always, Loki Puttur very accurate in the first ball. Usually, fast bowler will going to start with some warm-up delivery of the morning, but here is Loki is absolutely right on the spot and forcing the batsman onto the back foot with that fantastic line, and batter off the back foot played it defensively. Lovely delivery. Have a look at that extra bounce in the negation. Hitting the deck hard and getting some extra pace, and the bounce in the negation. Nice carry to the wicket keeper. In fact, this is the typical Loki for you. This man who represented for Team Red Hawks in the CBL, Coastal Big Bash League. One of the most successful performer in that tournament for the respective team, and the 3rd time in this over. Flicks that one very nicely. Beautiful shot. No need to run for that. Down to deep square leg boundary for 4 runs. Into the legs of the batter, but always the batters is all very strong of their legs. And little margin for error when you're bowling in the power play. He didn't got adequate field for that. He's got one fine leg which is deep in the fine leg. But this time the wonderful flick shot coming from Deepak. Whips it away off the toes. Down to deep square leg boundary for 4 runs. Thank you, Ajit, our DJ. The first time he has got the opportunity to play the music, because it's the first boundary of the tournament as well, and first boundary innings of
MCF. Good comeback by Loki. After that, is bowled by around the legs of the batter. He's learned from the mistake, and again he's targeting that line around the off stump. This time, quite watchful. Deepak Rajiv is looking very sound so far. Is moving his front foot very well to the line of the ball. Everything is perfect. Nice stance. We can see that little bit high bat lift. Went for expansive off dry, but this time his front foot is not really coming to the pitch of the delivery. At the same time, it's not ideal length to go for the cover dry, and a little bit the ball is moving from the good length spot. Outswing delivery from Loki. Very luckily that the batter didn't caught any bat onto that. Nicely shaped away from the right-hander batter, Loki. Again, bowling away from us. Oh, beautiful shot. Glorious. Absolutely glorious. The stroke of the day. Magnificently struck. The ball is in the off volley. The batsman has got absolutely perfect time to get the front foot into that line. And dispatch that one just wide of that mid-off fielder down to the block of boundary for 4 runs. Second over completed, 6:13 on the board. 2 boundaries in that over is good enough for the team to get the runs what they really wanted for MCF. Thank you, DJ. Nice off volley in the last delivery of the over, and Deepak Rajiv off the front foot dispatched that one to long off for 4 runs. And no change in bowling, and Shishir to continue. Around the wicket, appeal for leg before wicket. Umpire not interested. It might be a little bit the impact, which is maybe the little bit outside the line of off stump, maybe it's struck him. And a very experienced umpire Avinash, you know exactly that hitting him outside the line. Full toss, nicely driven. That was absolutely the delivery that the batsman will always enjoy. That low full toss. It is always going to be a crime. Your bowling in the power play means easy pick for the batter. Getting his front foot into that line of the ball, and bat always almost coming together, and exquisite timing and the placement to Rajiv. Deepak Ramesh in fact is dispatched that boundary, and he's got a first run from his bat and open the account with that boundary, and the runs are coming very freely here. Again driven, this time lack of placement, straight to the hands of short mid-off. Deepak Ramesh this time off the front foot. He wanted to get that one into the long off, but couldn't manage to get the placement right. Shishir. Oh, using his feet, but wicket keeper behind the stump. I think didn't got the opportunity. Is of course half-minded, isn't it? Deepak Rajiv just wanted to use his feet, quickly realizing that it's difficult for him to reach to the pitch of the delivery. He's absolutely blocking himself and almost stays in the crease. Otherwise, the chance of stump out. There might be a little bit opportunity for the wicket keeper to make that stump out, but not easy sometime. The extra bounce, and Shishir has got a very good height and getting some extra bounce in that delivery. Again driven that one. Oh, that was absolutely sloppy. The fielder at short mid off with the face to stop that one ball, just passing between his legs into the deep long off boundary for 4 runs. Lucky boundary coming here for Deepak Ramesh. The second boundary from his bat, and total score now moves on to 21 without loss of any wicket.
Thank you, DJ. And again, a little bit unlucky for the bowler, but lucky for the batter. Has got a boundary for that. Again, flicks it away nicely down to short mid-wicket region. Very dangerously played there by the batter, but he's very confident by playing that one a little bit against the line. But one more great over for the point of view of MCF, which is comes to an end. They got a 2 boundaries in that over altogether after completion of over number 3. Good going for the team MCF. 22 on the board, even they lost toss, asked by the opposition to bat first, and they got a very good start, a decent start from just opening batters. At 3 overs, which is belongs to the team MCF, and Loki will going to continue. This time opportunity for the wicket keeper, but timing of the jump is not proper in the occasion. Little bit late reaction from the wicket keeper, and ball went into the deep third man boundary for 4 runs. Very fine, in almost behind the wicket keeper. So no signal from the umpire, means it's absolutely a perfect edge, a healthy edge. Unlucky for the bowler, the lucky for the batter. It might be the chance for the wicket keeper, but the reaction time always a fraction of second. When the ball is got a thickest edge, the wicket keeper, of course, down on his knees, have to get up. It take a little bit time, and score runs. 4 runs scored. Again, nice looking drive, off stop by the fielder at square leg, and good fielding there by the fielder. Good commitment from the fielder at square leg, even though fumble, but it was a perfectly timed flick shot from Deepak Ramesh, and with that single score, but moves on to 27 on the board. Runs are coming very freely, just like me and Gopi has mentioned earlier. It's going to be batting paradise. The ball which is nicely coming to the bat. Again, try to turn that one in the onside region. Ball is in the air for a while, but I have to see the umpire decision. No contact with the bat, leg bite, the flare of the pad. One more addition to total addition of that single score, but moves on to 28 on the board without loss of any wicket. Left and right combination doing the job in the morning, and they started very slowly in the first over, but they are absolutely changing the gear in the second over, getting some runs in even the third over, the most productive over. Lucky ball, cuts it hard, beautiful shot, magnificently played, right on the top, right onto the top of that bounce, isn't it? Deepak Ramesh, even though he's a little master, not a tall man, but the way that he's handled that shot pitch delivery been outstanding. Lokesh pitching it short, and batter Deepak Ramesh absolutely cuts the ball just like he cuts that one from the axe, cuts wood from the axe. Nothing much wrong in that delivery, but the way that the batter is handled that short pitch delivery to try to york the batter. Negotiated very well by Ramesh in that occasion. Excellent cricket out there in the middle. And the Yorker lane delivery followed after that the short pitch delivery. Outside the line of off stump, and Loki bowled that Yorker lane delivery. Ramesh the negotiated very well to get his bat into the line of the ball for the last moment. And score but moves on to 33 on the board. Very hot morning. The morning itself, we are seeing some hot condition here. Oh, lovely short pitch delivery to finish the over. The bowler have to use that benefit of getting one from the over, but I think it's not one from the over. It might be the playable delivery for the batter, but a fantastic executed short pitch delivery from Lokesh
Over number 4, which is comes to an end of the power play. And total score is 33 on the board. They're going almost 8.25 runs per over. जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल To continue the spin attack from the highway end. The first ball. Lovely delivery to start with. Of course, short pitch, but not that much of easy short pitch delivery for the batter to get that one off the back foot. Deepak Ramesh just wanted to cut the ball, but missed it completely. Shishir. Slower one and picked that one very nicely, and good field. Conceded with that single score, but moves on to 35 on the board. Shishir, of course, and only first, second over is a little bit expensive over. And first over he bowled well in the power play. It's not so easy for the spin bowler to come and bowl in the power play. The big challenge. Again, bowler's back drive. Lovely delivery. He's keeping that tight line. Know exactly when the bowling in the power play. How to get a good line and length if they wanted to survive. So far, a good bowling display from Shishir. Using his feet. Excellent stroke, isn't it? Up and over. Glorious again. Using the feet very well. Deepak Ramesh played absolutely imperious lofted off drive. One more boundary takes the total score into 39. Thank you, DJ. And yes, Shishir will going to continue. Ramesh absolutely is in a terrific touch. Ball him! This is the last thing what the bowler wanted to execute when the batter going after him. Absolutely good comeback. And the batter, after he got the boundary, Deepak Ramesh little bit excited and tried to get one more big shot, but this time he's choosing a wrong delivery for that wrong shot selection. Across the line, he just wanted to go for the big shot. You miss high it.
The first wicket for the team AJ Hospital. Shishir at last got a vital breakthrough for his team. 39 for 1. After playing a very good innings, Deepak Ramesh departs. He scored a valuable 24 runs. He played some delightful cricketing stroke. The 3 boundaries which is included in that 24. The partnership of 39 runs which is comes to 9. Thank you, DJ. And 5 overs, which is comes in, and at last, the last delivery of the fifth over, the bowler Shishir has got a vital breakthrough from the last delivery. Deepak Rajiv departs after scoring 24 runs and 39 after completion of 5 overs. And before the next over will going to start here, it's a time for change in commentary box. It's over to Mr. Gopi for the first time today in our commentary box. Welcome, Gopi. And just like we mentioned, it's going to be a batting paradise, and the team, the MCF, even they lost the toss, but got a opportunity to bat first, and opening batters put on 39 runs in 5 overs, almost the 8 runs per over. They scored that, and this is going to be a danger for the team. AJ have to get some good overs because their plan is have to restrict them under 150. They have to work hard in the bowling if they wanted to restrict them. धन्यवाद सतीश। तो सारे दर्शकों को मैं गोप यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं एमसीएफ और एजे हॉस्पिटल के बीच पहला मैच इस वक्त गुजरता हुआ, और इस बार गेंद नीचे रहते हुए गेंद को उछालना चाहा था, गेंद जा चुकी है इस वक्त डीप फाइनल की दिशा में, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। तो एमसीएफ एजे हॉस्पिटल ने पहले टॉस जीतने के बाद 1 शॉट का इशारा, पहले टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय जो कि लिया है, और फलस्वरूप इस वक्त एमसीएफ पहले बल्लेबाजी करता हुआ कुल मिलाकर 40 रन जोड़ चुका है, और छठा ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर 40 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। राजीव और केशव पारी की भागदौड़ को इस वक्त संभाले हुए, और इस बीच गेंदबाज अजय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट लंबे रनअप के जरिए अगली गेंद, यह गेंद पुल किया इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन फील्डर मौजूद और फंबल यहां पर, और इस फंबल का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर लिया। शॉर्ट गेंद थी, गेंद को पुल कर दिया था इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, और थोड़ी सी मिसफील्ड की वजह से बल्लेबाज 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। तो स्कोर इन 2 रनों के साथ अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 42 रनों पर। 42 on the board for losing 1 wicket in the over number 6 in progress for MCF at batted first। और जहां तक सवाल है गेंदबाज अजय अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। राजीव इस वक्त सपना करते हुए अजय की गेंदों का दाहिने हाथ ऊपर द विकेट अगली गेंद, यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ, कोई फील्डर वहां पर नहीं, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है इस वक्त 4 रनों के लिए। Fantastically turns it away off the toes down to a deep backward square leg in fact, और deep square leg पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन 2 स्क्वायर, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 46 रनों पर। 46 on the board for losing 1 wicket in the over number 6 in progress। तो इस बीच 46 on the board for losing 1 wicket in the over number 6 in progress। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो अजय इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार।
इस बार कट किया खूबसूरती के साथ। ओ मिसफील्ड इस वक्त गेंद जाते हुए बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त पंच कर दिया था। इस वक्त पॉइंट फीडर के हाथों से गेंद चूकी जरूर है, लेकिन बैकअप होता हुआ डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर। 48 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। अजय, ये गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट, उछाल लेती हुई गेंद की उछाल को भांपते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट हल्के से गेंद को पुश कर दिया कवर पॉइंट पर। जब तक गेंद फील्डर के हाथों में फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका है। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 49 रनों पर। 49, just one short of a 50, and the 6th over of their innings has been came soon, and a good over in MCF's point of view came soon, and 10 runs came from this over, and after the completion of 6 power play over, they are still looking in a good situation, except they lost their 1 wicket in the face of Deepak, who's out for 24. They are progressing along nicely. It's 49 for 1 after completion of 6 overs. एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सीपीएल टी20 कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग 2025 टी20 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की शानदार प्रगति यहां पर होते हुए, और जहां तक सवाल है इस वक्त मुकाबले का, तो इस वक्त मुकाबला इस वक्त जारी है एमसीएफ और एजे हॉस्पिटल के बीच इस श्रृंखला के इनॉग्रल उद्घाटन मैच में। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए शिशिर, जो कि अपना चौथा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद राजीव इस वक्त सपना करते हुए, और 7वां ओवर इस वक्त लेकर शिशिर तैयार। 14 ओवर का खेल कुल मिलाकर अब उनके पारी में शेष। शिशिर इस बार कट किया बैकफुट पर जाने के बाद डीप कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद पहुंची, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और इन 2 रनों के साथ 50 कम्स अप फॉर एमसीएफ। 51 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 7 started just short while ago in their innings. और गेंदबाज शिशिर इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट राजीव के लिए, जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए सामना करने के लिए तैयार शिशिर की गेंदों का। फ्लाइटेड गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया, कलाइयों के सहारे गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका। 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 52 रनों पर। धीरे धीरे दूसरे विकेट के लिए यह साझेदार ये पार्टनरशिप जो कि जमती हुई राजीव और केशव पी के बीच में, जो कि कप्तान है केशव पी, इस वक्त एक कप्तान के रूप में इस वक्त उतर चुके, खाता भी खोलना उन्हें बाकी है। तो इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया केशव ने, लेकिन गेंद को ठीक तरह से प्लेसमेंट ढूंढने में असफल। और जहां तक केशव का सवाल है, अगर केशव 50 रन 50 अगर बनाते तो 1000 रुपए का नकद पुरस्कार जो कि श्रीमान जयराम इनकी ओर से घोषित किया गया है। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद इस वक्त पहुंची लॉन्ग ऑफ पर। तो इस वक्त ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहता विकेट कीपर, चूंकि तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन इस बीच बल्लेबाज पूर्ण करते हुए वाइड का इशारा। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल, जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड इन द लास्ट मोमेंट, एंड अ कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल, एंड विद अ कपल रन द स्कोरबोर्ड is now moving up to 55 on the board for losing 1 wicket in the over number 7 in progress. शिशिर यह गेंद कट किया खूबसूरती के साथ, गेंद की तेजी को पहचानते हुए, लेकिन पॉइंट पर फील्डर खड़े हुए थे जिनके हाथों में गेंद पहुंची, और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है। 56 ऑन द बोर्ड, 56 अब तक 56 रन बन चुके हैं, जबकि 7वां ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। और इस बीच शिशिर अगली गेंद टॉप एज मौका, लेकिन फील्डर कोई वहां पर नहीं, खाली क्षेत्र पर गेंद टिप्पा खाते हुए। फुल टॉस गेंद पर ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहता, टॉप एज पर गेंद टकराए, लेकिन खाली क्षेत्र पर गेंद टिप्पा खाते हुए 1 रन का इजाफा। 57 for 1, 7 overs have been bowled. MCF are now progressing along nicely.
Right, the 8 over starts in their innings. Jay is now brought into the attack. He's continuing, in fact. और 8वां ओवर लेकर पहली गेंद लेकर इस वक्त जय तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद इस वक्त सीधी रफ्तार के साथ रक्षात्मक तरीके से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। राजीव इस वक्त सामना करते हुए और एक लंबी पारी इस वक्त राजीव खेलते हुए। दीपक रमेश जो कि आउट हो चुके हैं 24 रनों का 24 रनों की बेहतरीन पारी उन्होंने खेली और उनका विकेट गिर चुका है। बाउल्ड आउट हुए थे शिशिर की गेंद पर और इस बीच अजय अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हीव नॉट सक्सीडेड और गेंदबाज तब तक फॉलो थ्रू में अपनी बाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करे। एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और एक रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 58 रनों पर 58 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 18 प्रोग्रेस। और केशव जो कि कप्तान इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और केशव के लिए कि नाम यहाँ पर घोषित किया गया है। हैट्रिक चौका अगर केशव लगाते तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार, हर छक्के के लिए 500 रुपए और अगर 50 रन बनाते तो 2500 रुपए का नगद पुरस्कार एसएम क्रिकेटर्स इनकी ओर से घोषित किया गया। इस बार कट किया बैकफुट बजाने के बाद निशाना इस वक्त चूका। द थ्रो विल जस्ट ओवर द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट। इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड रन इन द फेस ऑफ ओवर थ्रो और 2 रन यहाँ पर बल्लेबाज को मिले और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 60 रनों पर। 60 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 18 प्रोग्रेस और 60 द स्कोर। और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन्हें हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहा, ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए। बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद पहुंची जहां पर फॉलो थ्रू में गेंदबाज अजय ने खुद गेंद को इस वक्त फील्ड कर लिया और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 60 रनों पर। एक विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता। वन डीप बैकवर्ड थर्ड मैन, डीप एक्स्ट्रा कवर मौजूद, कोई डीप कवर पॉइंट नहीं। मिड ऑफ और मिड ऑन दोनों सीमा रेखा के अंदर मौजूद। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक फील्डर तैनात ठीक सीमा रेखा के पास। अजय ये गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को उछाला जरूर लेकिन नॉट क्वाइट होल्ड ऑफ दैट शॉट और गेंद पहुंची इस वक्त डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर। थ्रो जब तक पहुंचे बल्लेबाज के पास वक्त था कि 2 रनों के साथ अपने अपने छोड़ पर वापस लौट सके। तो कदम आगे निकलते हुए गेंद को उछालना चाहता लेकिन स्ट्रोक्स पर नियंत्रण नहीं, नॉट क्वाइट होल्ड ऑफ दैट शॉट और 2 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। couple of runs added to the total. It's 62 for the loss of 1 wicket in the over number 9 in progress. धीरे धीरे ये साझेदारी पार्टनरशिप जो कि जमते हुए और केशव इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और जय गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए केशव के लिए। Again, just gone for a motive, not succeeded. Better one from the bowler, just missing और साधी ऑफ स्टंप और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, केशव के लिए, सिर्फ केशव के लिए हर छक्के के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार और हैट्रिक चौका अगर लगाते हैं 1000 रुपए का नगद पुरस्कार। अगर 50 रन केशव बनाते हैं तो 2500 रुपए का नगद पुरस्कार एसएम क्रिकेटर्स इनकी ओर से घोषित किया गया और यह इनाम सिर्फ केशव इनके लिए लागू होता है। 8 overs completed, 62 on the board, 1 wicket lost. And now still in overall calculation, it's going to be 12 overs remaining. That means 72 balls to go. और देखते हैं 72 के अंदर उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। CPL T20 कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग 2025-2025 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई 6 प्रतिष्ठित टीमें, 6 फ्रेंचाइजी, इनफैक्ट 6 corporate teams are participating in this tournament और जहां तक सवाल है इस वक्त MCF, MRPL, BASF, AJ हॉस्पिटल, इन्फोसिस और BG इंडिया इस वक्त 6 टीमें इस श्रृंखला में भिड़ रही हैं। पहली गेंद इस बार बेहतर गेंद इस वक्त गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चुके गेंदबाज अविन गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ कर चुके हैं। तो 63 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट। ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हुए अविन अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड कर लिया। एक बार फिर से गेंदबाज अविन।
इस बार बल्ले का टॉप है जिस वक्त लगता है गेंद जाती है, ओ इस बार मिसफील्ड थर्ड मैन फील्डर की दिशा में। और जहां तक सवाल है, दोबारा जब तक अपने पीछे की ओर काफी दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करे डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। वन शॉट का इशारा, दैट मींस ओनली अ सिंगल रन एडेड टू द टोटल, एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 64 ऑन द बोर्ड for losing 1 wicket in the over number 9 in progress. और एक लंबे स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ इस वक्त एमसीएफ और गेंदबाज अविन इस बार उछाला, जस्ट ओवर द बॉलर सेट, दिस गॉट हैड ऑन टू दैट एट द लास्ट मोमेंट ऑन हिज फॉलो थ्रू, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 65 now for the loss of 1 wicket. Runs are coming quite easily now at the situation for the batsmen of MCF. Slowly and steadily, this partnership is now building up. Avin. Reverse shot, fantastically struck, but straight to fielder at point area. In fact, he's got only a single for that stroke. गली पर जो फील्डर थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस बीच 1 रन का इजाफा बेहतर फील्डिंग फील्डर द्वारा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 66 रनों पर। 66 for the loss of 1 wicket in the over number 9 in progress। और गेंदबाज अविन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। केशव सामना करते हुए इस बार कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रहते हुए just wanted to cut that one after being rocked on the back foot, not connected that one. The ball kept at the last moment and went into the hands of wicket keeper. Successful kept in and from Avin, and now this over cost only 4 runs. 4 runs came from Avin's first over, and after 9 overs, still MCF looking in a good situation at 66 for 1 after completion of 9 overs with 11 to go in their innings. एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला सीपीएल टी20 कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग 2025 की शानदार प्रगति होती हुई सुंदर से विशाल से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एनएमपीटी के मैदान पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज देखते हैं कौन से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए यहां पर बॉलिंग एंड पर आते हैं। पहला मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट, द मैच नंबर 1 इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। सीपीएल टी20 जिसकी शानदार प्रस्तुति की है एसएम क्रिकेटर्स मैंगलोर ने, और ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करते हुए। और गेंदबाज द बॉलर स्टार्ट्स फ्रेश प्रोसीडिंग्स, श्रेयस द न्यू बॉलर इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक, और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार राजीव जो कि एक बेहतरीन पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए, एक लंबी पारी खेलते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार श्रेयस की गेंदों का। पहली गेंद श्रेयस की, पटकी हुई गेंद कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद द बॉल गेट्स सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। एक एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब कमल लिन के सारथ्य में। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का टूर्नामेंट का मुआयना करते हुए, और एक एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर इस वक्त किया जा रहा है मैंगलोर मीडिया द्वारा। तो इस बीच श्रेयस अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ तो बढ़ता विकेट, ये गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन पर, फील्डर इस वक्त मौजूद लॉन्ग ऑन पर आगे की ओर दौड़ कर आए, गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 67 रनों पर। 67 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 10 इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो श्रेयस अपने टीम के दूसरे खिलाड़ी द्वारा इस वक्त कुछ हद तक इंस्ट्रक्शंस सलाह मशवरा इस वक्त लेते हुए, और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार just call for a big one this time, not succeeded, not connected that one this time, और लेकिन 1 रन जरूर मिला। I think he's got a bat on that at the last moment, और शायद बल्ले और गेंद का इस वक्त मुकाबला हुआ था, और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है। 68 रन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ था कहना पड़ेगा। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 68 रनों पर। 68 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 10 इन प्रोग्रेस। 3 बॉल्स बाउल्ड बाय श्रेयस इन दिस ओवर, और अगली गेंद लेकर गेंदबाज श्रेयस डी इस वक्त तैयार। यह गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त, खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, क्लीनली पिक अप बाय द लॉन्ग ऑन फील्डर। द बैट्समैन क्रॉस्ड ओवर फॉर द सिंगल वेरी सेफली इन द एंड। 69 ऑन द बोर्ड
for losing 1 wicket in the over number 10 in progress. और पहला विकेट गिरा था जब स्कोर था 39 रनों पर 30 रन से 30 रन दूसरे विकेट के लिए अब तक जुड़ चुके हैं राजीव और केशव जो कप्तान है इनके बीच। धीरे धीरे ये साझेदारी इस वक्त जमती हुई। Again, this बार टॉप एज लेकिन फील्डर कोई वहां पर नहीं। डीप बैक थर्ड मैन पर गेंद का इंतजार करते हैं फील्डर। क्लीन पिकअप, बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। थ्रो पहुंचा लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे विकेट कीपर गेंद को थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेट उखाड़े। बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल 71 द स्कोर नाउ। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। इस ओवर में अंतिम बार श्रेयस डी इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। 32 runs already added for the second wicket, unbeaten second wicket so far between Rajiv and Keshav. Slowly and steadily, this partnership is now building up. और केशव इस वक्त सामना करते हुए श्रेयस डी की गेंदों का। और अंपायर विकेटों को सही करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए स्क्वायर लेग पर। और इस ओवर में अंतिम बार श्रेयस डी गेंदबाजी करते हुए केशव के लिए। पटकी हुई गेंद ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद। 1 रन मिलेगा। क्लीन पिकअप, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 72 रनों पर। सो 10 overs completed, half the way mark, and after halfway still MCF looking in a good situation. In fact, it's 72 for the loss of 1 wicket after completion of 10 overs. 3 extras conceded by the bowlers of AJ Hospital in this first 2 overs. In this first 10 overs, in fact, they conceded only 3 extras. निश्चित रूप से यहाँ पर MCF एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ। 10 ओवर का खेल बाकी। एंड बॉलिंग एंड इस वक्त बदल दिए जाएंगे। तो 10 ओवर में देखते हैं यहाँ पर बल्लेबाज MCF के और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते। तो इससे पहले कि 11वां ओवर पाना वो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द 11th ओवर आगे का आंखों देखा सुनाने क्लब में एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को जब यहाँ पर 11वां ओवर शुरू होगा। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you. Thank you, DJ. Welcome back. And thank you, Gopi. And 10 overs completed, half a mark, which is completed by MCF. And they're looking so good so far. 72 for the loss of 1 wicket. Only 1 success so far for Team AJ Hospital. And
testing time for the bowlers of, because 9 wickets in hand, certainly MCF will look for some acceleration of their run rate. A win will go into ball is second over to Keshav. Keshav this time almost a cross-batted stroke, played it down to wideish long on for a walkable single. With the addition of that single, scoreboard now moves on to 73 on the board, and Keshav is individual score now moves on to 13. So that brings a well-settled batsman Rajiv into strike now. He's batting on 33. There's an off the backfoot, nicely played it down to backward point region. Good fielding, excellent fielding there from the fielder at backward point region. One and pick up throw, and both the batters completed the single in between. With that single, scoreboard moves on to 74 on the board for the loss of 1 wicket. The 11th over is in progress. A win. Switch it is, comes into play, straight to the answer field. Oh, he drops the catch. My goodness, there is opportunity missed out by the fielder at gully region, and the batter is trying for the switch it. The ball went in the air. The fielder absolutely in the right position to got that from his two hands, but ball is absolutely popped up from his hand, and closing fielder tried to get that one in the second attempt, but again the ball is missing that two hands of the two fielders. This time Rajiv went for the big shot. Again opportunity which is gone in vain. Again no control whatsoever for that delivery, which is bowled by Avin. The batter just wanted to go for the big shot and the chance of cotton ball, but ball just gone past bowler on his follow through. Again nicely driven down to mid-wicket region for a walkable single. With that single, scoreboard now moves on to 78 on the board. Runs are coming very freely. Right arm over the wicket. Again cuts, and fielder in that third man fields the ball. One more single. So one more over completed, over number 11, which is comes to an end. 11th over, which is comes to an end, and the scoreboard is 72 on the board, 78 on the board, and 79 in fact, and the good going here for the team MCF as they got the very good start. The partnership which is building up after that, the very good start given by after that start which is given by opening batters. They're continuing. This time he lofted high up in there, but no one there in the mid-wicket region. Ball is just landed into the deep mid-wicket region before the deep square leg fielder run across his left. Ample time for the batter to complete a valuable couple of runs. Of course, the batter wanted to clear that mid-wicket region. Doesn't get hold up that in properly, and a couple of runs here for the batter Keshav. And just he wanted to grab the opportunity of 500 rupees, which is announced for him by SM cricketers Jairam Vijay. Again, the bowler will going to continue. Look, he bows. Oh, slash it hard. Magnificently struck down to deep backward point boundary for 4 runs.
Again, wide outside the line of leg stump, and couple of runs which is completed in the form of extra, the bye. And with that extra score, but now moves on to 85 on the board. Wide call by umpire. And 88 on the board. 88 for the loss of 1 wicket. The huge one, the wide plus 2 runs extra. Oh, again, using his feet, a lovely delivery. The good directed short pitch delivery. The batter just wanted to use his feet. Keshav Pujari, one of the Keshav Pujari, one of the organizer of this cricket tournament, Keshav Pujari. Of course, you know exactly they got a 9 wickets in hand, so why not go for some big shot here? But Loki, the experienced campaigner, is absolutely wanted to keep the things tight. Again, lovely shot. Have a look at the sound. Have a look at the sound of the bat. That's a clearly indication of the ball which is hit by the middle of the bat of the batter Keshav. Thank you, DJ. DJ Ajit, very excited with that stroke. Everyone definitely, because this is the one kind of cricketing stroke. Everyone really wants to hear the sound, the instrumental sound, isn't it? And the 50 partnership, 92, which is a score. The 50 partnership comes up between Raju and Keshav. Of course, only the instrumental sound for in the dugout of the supporter of MCF, not for the supporters of AJ Hospital, because they absolutely knows that without breaking this partnership, very difficult for them to put the brake on the run rate. Both the batters are absolutely going in a big gun. And Loki Puttur absolutely feeling some pressure. One more, edging it down to deep. Third man protection is given in the deep. Now they wanted to come back for the second mix up. Opportunity of run out there. Keshav wanted a second. His partner Rajiv is not interested. Of course, the Keshav is the man is wanted to take the risk. He's the one is running towards the dangerous end. But Rajiv is not interested for the second run. And with that couple of a single, score but moves on to 90. 3 for 1. They're cruising towards a big score here. The MCF. Loki again. Coming down the track, using his feet, but the bowler Loki reading the intention of the batter, quite deliberately pitching it short, beaten by the pace. And one more over which is comes to end, but nothing much about that, worried about that dot ball, because they got 2 boundaries in that over. It's good enough for the team MCF to keep the momentum what they had. And 14 runs came from that over. One more expensive over from the point of view of team AJ Hospital. After completion of over number 12, it's 93 on the board. Correction, Avin, the bowler who completed that over. Shreyas is the bowler who completed that his second over, little bit expensive. Now Avin, Loki Puttur brought into attack, and who bowled 2 overs from this end. Wait and see how he can be very effective. How can he will be the effective from the far end. Again pulls that one just over the head of that short mid-wicket fielder. Down to deep mid-wicket boundary for 4 runs. Fantastically pulled that one. What a shot. Nothing much wrong with that short pitch delivery, but the way that the batter took this position so quickly.
This is the stroke of the man is in a good nick, Keshav. The immediately is absolutely taken the position quickly and pulls that one handsomely down to mid wicket. Just the fingertips of that fielder. 97. Again off the back foot. What a delicate touch. They played it down to gully region. They wanted to come back for the second. They made it quite easily. With that couple of runs, the scoreboard now moves on to 99. Just one short of 100. It could be the magical figure. Psychological advantage. Just over number 13 in progress. They're cruising towards a huge score. And after, of course, even the captain is also told, Keshav Pujari, that his team is wanted to get some big score here. Oh, this is an uppercut comes into play. Oh my goodness. That was a one more excellent cut shot. Shot outside the line of off temp and batsman off the back foot. Standing on his toes and cuts it away down to deep backward point boundary for 4 runs. 100 comes up for MCF. Thank you. Thank you, DJ Ajit. And 100 comes up with that boundary for MCF. 103. And both the batters absolutely now, they're shifting the gear here and taking the fast bowlers of their opposition. Oh, lovely change of pace. This is what the last weapon the bowler have to be used when the batters are looking for some big shot in aggressive frame of mind. Change of pace is absolutely very effective. A lot of announcement here coming for Keshav. There is already 2,500 rupees for the 50. And if he manages to get the 70 runs and 2,000 rupees which is announced by Prajwal Shetty for Keshav. A lot of the fans and followers for Keshav. So far, he's really played an excellent knock, isn't it? All we can say that the quality cricketing stroke, not unorthodox, all the orthodox cricketing stroke. Good comeback here by Loki after that boundary. Ball him! This is unnecessarily. They're looking for the improvising scoop shot into the fine leg region, but he misses the line complete, and Loki absolutely disturbed the furniture. And the stumps which is cartwheeled. This is what all the fast bowlers loves. The sound of the timber. The good innings of Keshav, which is comes run. He played a very good knock for his team. $103 for 2. The partnership of 50 plus runs, which is the Kamsanan. Thank you, DJ. And what a delivery there from Loki. But I think more than the delivery, the shot selection of Keshav Pujari, as he just wanted to scoop the ball into the over the head of that fine leg fielder. And a typical T20 improvising flick shot, but he misses the line completely. He need to be very accurate while trying for that such kind of unorthodox cricketing stroke. But he missed it, and he disturbed the furniture. Then second wicket, which is comes to an end, partnership which is absolutely comes to an end. This is the right time for
Team AG Hospital to tighten up the screws here. Because whenever the new batter coming to the middle, the right time for the fielding team to get some good overs. Pick some wickets quickly. Ball some economical over. And they brought their spin bowler into attack. A win straight away is in action from the far end, highway end. Short pitch delivery off the back foot. Rajiv played it down to a deep square leg region for an easy single. Maybe announcement of 2000 extra by Prajwal Shetty for Keshav. Maybe that was little bit disturbed his concentration. He's concentrating over 2000 plus 2500, 4500, and he's lost his concentration over that particular delivery while concentrating over the huge money. So new batter Nitin Ulal. Off the back foot, doesn't get that much of shot enough to go for the pull shot, but he adjusted the stroke at the last moment. Played it down to short extra cover for an easy single. He's got his first run, and the scoreboard moves on to 105 on the board. This time a reverse sweep comes into play, defeats the infield, long chase here for the fielder, but ball will go into win the race because the quick outfield here in NMPA. The ball will go into do the rest, the outfield will go to do the rest once it beats the infield. Ball running down to deep third man boundary for 4 runs. Thank you. Improvising stroke from the batter who is in a good touch. Rajiv is seeing the ball like a football. Again a glorious, again one more magnificent stroke down to deep extra coverage, and the fielder tried to get that one on using his feet very well to stop the boundary, but ample time for the batter to turn for the third as well. The good running between the wicket as well. Altogether the good understanding between the wicket and good placement as well from Rajiv. And scoreboard moves on to 112 on the board. 1-1-2 for 2. Avin balls, played it down to mid wicket region for an easy single, and with that single scoreboard moves on to 113. Time is exactly 10 o'clock in the morning. The bright sunny morning, the hot condition continues here. Again, I wanted to go for the switch it, but the ball misses the line completely. White call by umpire. Umpire Viraj. So ball is gone outside the line of that frame line, outside the line of off stump. Avin balls, good delivery, good line, and bowler himself have to cover the ground and towards a short mid wicket region to get that one, but no one there in the mid wicket region inside the ring, so that bowler have to run to the ball. So one more over completed, over number 14, which is comes in, and after completion of over number 14, the MCF 115 on the board for the loss of 2 wickets. Again, the over of 12 runs, even though they lost the wicket of Keshav, but no change in that intention. They didn't lost any momentum. They continue that the momentum what they got. That's what the beauty of the T20 cricket, because each and every batter only looking towards acceleration of run rate, and that will go into benefits, because when you are having a good partnership before, if you have plenty of wickets in hand, and you can bat free-mindedly,
No pressure at all. One batter is there in the middle for a long time. Rajiv is absolutely playing the responsible innings, anchoring the innings of MCF. The batting in the top, and he will going to face his first delivery of the 15 and played it a little bit cross batted down to deep square leg for a walkable single. With that single scored more than 116 on the board. Over number 15 in progress. Aryan, the one more bowling change. Arya, little bit correction. Second time in this over. Tossed up delivery. And the batter just taking that one in the pull. And played it down to mid wicket for easy single. With that single scored moves on to 117 for the loss of 2 wicket. Decent start from Arya. Full toss and played it down to square leg. Oh, defeats that fielder. Absolutely. What we are taking, the sense which is very important when you are standing in the deep, have to see that the ball will going to bounce in front of you. He was not standing in the deep, isn't it? He tried to rush to the ball. The ball is having a little bit extra bounce for the fielder. Misjudgment costing a boundary. What could be a certain single there because of that fielder's misjudgment. Ball has got a fingertips, went into the boundary for 4 runs. Firmly struck anyhow by Rajiv. He's batting on 49, one shot of 50. Now the 50 for Rajiv. The first 50 of this tournament, Cpl T20. Rajiv, the first batter, registering his name. And of course, he's celebrating, why not? The dugout of MCF absolutely acknowledging that innings, which is absolutely high quality. They played some great cricketing stroke. Well controlled, well focused and composed innings from Rajiv. One more single, quick single taken. With the addition of that single score, but moves on to 123. 1, 2, 3 for 2. Aryan. Aryav. Aryav to continue the final time in this over. To Rajiv. Lovely delivery, edging it down. Defeats the fielder. Try to use his feet. Again, it's not a good effort there from the fielder, isn't it? They want to come back for the third as well. Excellent running between the wicket, but not a good fielding from AJ Hospital. They have to pull their socks in that department. It's not up to the mark. So one more over completed. 15 over which is completed. After completion of 15, it's 126. 126 for the loss of 2 wicket. It's good going. 5 overs remaining. And certainly AJ Hospital have to bowl good 5 overs here if they wanted to restrict them less than 170. And wait and see how well the MCF will going to continue their momentum in the remaining 5 overs. And the time to change in voice and language. Again, it's over to Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. And Gopi, and what we are talking about, the same thing is happening here. And high scoring game, what we had mentioned about earlier after seeing the condition here in NMPA. And 126 in 15, the 5 overs remaining, 30 balls remaining, excluding wides and no balls. And out of that 30, I think Gopi, they has got opportunity to get at another 60 runs because they got 8 wickets in hand. And more than anything else, Rajiv is the man who's got a first 50 in the tournament. He's a danger man as far as the opposition is concerned. So altogether, Gopi, the 5 overs very important for the team AJ Hospital to have to get some good overs, have to get some wickets if they wanted to restrict them under less than 160. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त 5 ओवर का खेल बाकी है, कमबैक करना है तो इस वक्त एजे हॉस्पिटल के गेंदबाजों को एक टाइट लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करनी होगी। और यहाँ पर पहला 15 ओवर एमसीएफ के पक्ष में जा चुका है।
ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और जब तक विकेट कीपर स्वयं शॉर्ट पॉइंट पर जाकर गेंद को फील्ड करे, 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 127 रनों पर, 127 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और एक बेहतरीन पारी यहाँ पर खेलते हुए बल्लेबाज राजीव। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, अविन फ्लाइटेड गेंद को उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। स्लाइट बिट ऑफ फंबल देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट द बैट्समैन कम बैक फॉर द सेकंड रन बिफोर दैट। तो 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं और नितिन उल्लाल का स्ट्रोक इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर 2 रन में पर्याप्त, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 129 रनों पर, 129 for 2। और गेंदबाज इस वक्त तैयार। क्विकर गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन पर, फील्डर काफी पीछे तैनात, मिड विकेट पर कहना पड़ेगा। जब तक एक बार फिर से फील्डर दौड़कर आकर मिड विकेट से गेंद को फील्ड करके थ्रो करे विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। रन इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए और एक लंबे स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ यहाँ पर एमसीएफ। और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अविन, जबकि नितिन उल्लाल सामना करने के लिए तैयार। और दोनों बल्लेबाज काफी हद तक थके मांदे नजर आते हुए, खासकर राजीव जो कि पारी की पहली गेंद से वो बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए, जबकि इस वक्त उनकी पारी का 16वां ओवर प्रगति पर। और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करने के बाद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार अविन। फ्लाइटेड गेंद को उछाला इस वक्त, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं, 1 रन का इजाफा हो चुका है, जस्ट अ सिंगल ही कॉट, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 132, 132 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 16वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। अविन ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। अब राजीव सामना करते हुए अविन की गेंदों का। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, और गेंद इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन और डीप कवर पॉइंट के दरमियान जा चुकी है। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला था, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं, फलस्वरूप सिर्फ 2 मात्र रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 134 रनों पर, 134 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 16th ओवर हैज बीन केम्स टू एन एंड, एंड आफ्टर 16 overs MCF looking in a commanding situation. It's 134 for 2 with 4 to go in their innings. और जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है, just talking about this tournament, CPL T20 Corporate Premier League 2025 T20 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच, इनॉग्रल मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ। आज सुबह भव्य उद्घाटन समारोह के बाद ये श्रृंखला इस वक्त शुरू हुई, और इस श्रृंखला की शानदार तरीके से प्रस्तुति की है SM क्रिकेटर्स मैंगलोर ने। और निश्चित रूप से ये श्रृंखला, ये टूर्नामेंट एक बेहतरीन प्रगति करते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया खूबसूरती के साथ। गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर, 1 रन का इजाफा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहाँ पर बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल। विकेट कीपर ने विकेटें जरूर उखाड़े थ्रो को रिसीव करने के बाद, लेकिन बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। couple of runs added to their total. It's 136 on the board for losing 2 wickets. They are heading towards to a huge total at this situation. और इस बीच बल्लेबाज नितिन उल्लाल अपना हेलमेट इस वक्त देते हुए टीम प्लेयर्स डगआउट से जो उनके साथी आए थे उनको अपना हेलमेट लौटाते हुए, और इस वक्त बिना हेलमेट के बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। और गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए आर्यन हेगड़े, तो आर्यव हेगड़े, और दोनों छोर से इस वक्त स्पिन अटैक लगा दिया गया है, तो इस वजह से अपना हेलमेट इस वक्त दे चुके हैं उनकी टीम के अन्य खिलाड़ी को। और इस बीच गेंदबाज आर्यव डाउन द ट्रैक, टॉप एज, चांस, नो ही वोंट गेट दैट वन। फील्डर काफी पीछे तैनात है। जहां तक सवाल है रनों का, तो रन से इस वक्त मिलेंगे 2। कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को उछालना चाहता, लेकिन नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट। टॉप एज पर गेंद टकराई और आखिरकार लॉन्ग ऑन से फील्डर आगे की ओर दौड़ कर आकर मिड ऑन पर जब तक गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 138 रनों पर। फुल टॉस पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर मौजूद, नॉट फाइंड्स द गैप एज वेल, एंड बिकॉज ऑफ दैट इज गॉट जस्ट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 139 रनों पर, 139 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 17 इन प्रोग्रेस। नाउ द मैन
is in a terrific touch, is now back on strike. राजीव इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. आर्यव की गेंदों का इस बार शफल होते हुए ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, स्टंप्स एक्सपोज करते हुए, लेकिन आखिरकार गेंद कनेक्ट करने में ठीक तरह से असफल. डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ और एक बार फिर से राजीव सामना करते हुए इस वक्त आर्यव हेगड़े की गेंदों का. लेग स्पिन गेंदबाजी कदम का इस्तेमाल करते हुए गेंद को उछाल दिया. Comes down the track and lofted that one, and he just finds the gap as well between cover point and extra cover. This is an outstanding struck. Inside out cricket he played, and he just got the placement absolutely perfect. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 142 रनों पर. चौका इस वक्त जुड़ चुका है राजीव के खाते में, और कुल मिलाकर एक बार फिर से वो सामना करने के लिए तैयार आर्यव हेगड़े की गेंदों का. और निश्चित रूप से एक बेहतरीन एक लंबी पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए बल्लेबाज राजीव. इस बार रिवर्स शॉट जस्ट ओवर द पॉइंट फील्डर्स हेड एंड फाइंड्स द गैप एज वेल. कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर द बैट्समैन, और दो लगातार चौके इस वक्त राजीव लगा चुके हैं, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 146 रनों पर. एक 147 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका. 2 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति हो चुकी है. 17 overs completed, 147 for 2. They are looking at a commanding situation. और अंतिम पिछले ओवर के अंतिम 2 गेंदों में 2 लगातार चौका राजीव झड़ चुके हैं. और जहां तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइक का, तो नितिन उल्लाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. राजीव इज बैटिंग ऑन 64, और एक बेहतरीन पारी अपने टीम के लिए वो खेलते हुए, और नितिन उल्लाल इस वक्त सामना करते हुए. अजय गेंदबाजी पर इस वक्त उतर चुके हैं. तेज गेंदबाजी और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार बल्लेबाज नितिन उल्लाल सामना करते हुए. पहली गेंद कट किया, बैकफुट पर जाने के बाद पॉइंट पर गली पर कहना पड़ेगा गेंद पहुंची. जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है. 148 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका. 148 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 18th over. Really, they are heading towards to a huge total. Maybe it's a 200. जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो अजय गेंदबाजी करेंगे इस वक्त राजीव के लिए. यह गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त राजीव ने. गेंद पहुंची इस वक्त वाइड स्लॉन्ग ऑन पर. 1 रन का इजाफा. क्लीन पिकअप, नॉट मोर देन अ सिंगल. Rajiv moving up to 65 now with that single, and the side total is now moving up to just one short of 150. That means 149 for the loss of 2 wickets. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, अजय इस वक्त गेंदबाजी करेंगे नितिन उल्लाल के लिए. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. पटके हुई गेंद, उछाला लंगोन पर, मौका फील्डर के लिए, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. ऐसा कहना पड़ेगा, he just hit that one pretty hard but can't face the gap as well. और लंगोन पर जो फील्डर खड़े हुए थे एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकने में सफल, और इसी के साथ नितिन उल्लाल की पारी पर पर्दा गिर चुका है. एक बेहतर पारी उन्होंने खेली, और तीसरा विकेट खो चुका है MCF का 149 रनों के ऊपर. It's 149 for 3, and also it's time for DJ. MCF lost their just the 3rd wicket in the face of Nitin Ullal, who is out for 15. लेकिन एक अच्छा साथ उन्होंने निभाया राजीव का, और तीसरा विकेट 149 के योग पर इस वक्त खो चुका है MCF. नए बल्लेबाज न्यूमैन नंबर 5 बैट्समैन is now comes out to the middle after the departure of Nitin Ullal. अभिजीत नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार अजय की गेंदों का.
और अजय अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज अभिजीत सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद नए बल्लेबाज अभिजीत जो कि अपना ग्लव्स इस वक्त पहनते हुए फील्डिंग का मुआयना इस वक्त करते हुए और सामना करने के लिए तैयार अजय की गेंदों का। पहली बार वो अजय का सामना करते हुए, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त अजय अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद कट किया खूबसूरती के साथ, लेकिन गली पर फील्डर मौजूद, जस्ट अ सिंगल गॉट और इस एक रन के साथ 150 कम्स अप फॉर एमसीएफ। Absolutely terrific progress here for them. 150 came in 17.4 overs for losing 3 wickets, and now they are looking in a commanding situation in fact. और गेंदबाज अजय इस वक्त गेंदबाजी करते हुए राजीव के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार ड्राइव कर दिया राजीव ने, गेंद इस वक्त जा चुकी है थर्ड मैन की दिशा में। He's got outside edge on that at the last moment. Has got just a single, 66 for Rajiv, and the side total is now moving up to 151 for 3 in the over number 17, 18 in fact in progress. Still a ball left in this over, और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस बीच अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार जय। इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया है खूबसूरती के साथ, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई, फील्डर ने सीमा रेखा के अंदर थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करके थ्रो करें। बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऑन साइड पर गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया था इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। Couple of runs added to the total. Rajiv moving up to 68 now with that couple run, and the side total is now moving up to 152 for the loss of 3 wickets. So अभिजीत के बल्ले में 2 रन जुड़ चुके हैं, तो 153 रन, 153 for 3 after completion of 18 with just 2 to go in their innings. और 19वां ओवर हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त शुरू होता हुआ। 90th over starts from the far end, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज लोकेश जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और राजीव सामना करने के लिए तैयार। पहली गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, चूंकि just drifting down the leg side at the last moment, wide declared it by umpire, और वाइड के इस रन के साथ एक स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 154 रनों पर। 154 for the loss of 3 wicket at the start of the 19th over in fact, और गेंदबाज लोकेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। Fourth over from Lokesh starts now. Ball aim! Just gone for a loft, not succeeded. Much straighter line from the bowler, and he just got the rid of the batsman. This is an outstanding delivery. And at last, a fantastic innings of 66 runs came to an end from Rajiv. Bowled by terrificer from the bowler Lokesh. And a 4th wicket loss. Rajiv departs for 66 and a 4th wicket loss for MCF. It's 154 for 4. तो इस वक्त स्टैंडिंग एविएशन तालियों के साथ प्लेयर्स डगआउट में इस वक्त उनका स्वागत करते हुए राजीव का टीम के अन्य खिलाड़ी, और उनके बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है।
तो इस वक्त नए बल्लेबाज न्यूमैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल आफ्टर द डिपार्चर ऑफ राजीव्स विकेट. अगेन फुल टॉस गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर जस्ट अ सिंगल ही गॉट और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुके 155 रनों पर 155 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. तो इस वक्त नए बल्लेबाज किशोर इस वक्त नए बल्लेबाज जो कि पिछले गेंद पर अपना खाता खोल चुके हैं और अभिजीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. लोकेश की गेंदों का दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. अगली गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया. सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए इस गेंद पर और फील्डर को पहले ही भांप लिया था शॉर्ट कवर के कवर पॉइंट के जो कि फील्डर पीछे मौजूद है. एक रन के साथ तेजी के साथ गेंद को पुश करने के बाद हल्के से गेंद को पुश करने के बाद तेजी के साथ एक रन यहाँ पर पूर्ण करते हुए और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 156 रनों पर 156 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. और लोकेश अपने गेंदबाजी के मार्ग पर इस वक्त तैयार सामना करते हुए नए बल्लेबाज किशोर जो कि एक रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए. यह गेंद टॉप एज और गेंद इस वक्त डीप थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है यहाँ पर 4 रनों के लिए. ऐसा कहना पड़ेगा डीप थर्ड मैन और डीप बैकवर्ड थर्ड मैन के बीच जो खाली क्षेत्र है उस क्षेत्र से गेंद निकल चुकी है इस वक्त सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. गली फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद को खेला था इस वक्त 4 रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज किशोर 160 रन 160. वन 160 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट और अंतिम गेंद लेकर लोकेश इस वक्त तैयार. पिछले गेंद पर किशोर का बेहतर स्ट्रोक था. स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त कट करने में सफल. गली फील्डर के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए अंतिम बार इस ओवर में लोकेश तैयार. यह गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त. लॉन्ग ऑफ पर गेंद पहुंची और इससे पहले कि लॉन्ग ऑफ पर गेंद पहुंचे मिड ऑफ पर अपने पैर के जरिए गेंद को रोका गया फील्डर द्वारा और इस बीच एक रन का इजाफा हो चुका है. एक रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 161 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 161 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लास्ट बॉल लेफ्ट इन फैक्ट. तो अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी है और अंतिम गेंद फेंकने के लिए लोकेश इस वक्त तैयार. एक लंबा ओवर इस वक्त प्रगति पर गेंदबाज लोकेश का और इस वक्त सामना करते हुए अभिजीत. इस बार क्विकर एब्सोल्युटली क्विकर मत स्ट्रो डाला जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप. डॉट बॉल टू एंड द ओवर. 18 gone and after 18 overs still MCF looking in a commanding situation. In fact it's a 19 overs completed. So 19 overs completed and after 19 overs still MCF looking in a commanding situation. It's 161 for 4. So 161 for 4. Ajay starts the fresh proceedings and the last over starts in MCF's innings. पहली गेंद. यह गेंद टॉप एज मौका हो सकता है कवर पॉइंट फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल. नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट. कवर पॉइंट पर जो फील्डर थे शिशिर उन्होंने इस वक्त कोई गलती नहीं की. एक विकेट गिर चुका है किशोर के रूप में. Salimos por la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy Mariana, la 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 Mariana, y yo le digo que yo estoy Mariana, la 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 Mariana, y yo le digo que yo pasa, súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Dame una botella de Cali, ¿qué pasa? Con los tigres de Guay, ¿qué pasa? Ahora van a poner el éxito de igual, súbeme la música DJ, ¿qué pasa?
So number 7 batsman Ashwin is now comes out to the middle after the departure of Kishore. अश्वित इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया, स्टंप्स को कवर करते हुए कलाइयों के साथ स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद फील्ड हो। 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 162 रनों पर 162 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। कुल मिलाकर 4 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। द लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस इन एमसीएफ इनिंग्स। अजय अगली गेंद लेकर तैयार रहा। पटकी हुई गेंद उछालना चाहता इस वक्त लेकिन नाकामयाब और वाइड का इशारा यहां पर हो चुका है अंपायर का। काफी ऊंची गेंद थी इस वक्त, गेंद तक पहुंच नहीं पाए और वाइड इस वक्त घोषित करते हुए अंपायर और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 163 रनों पर 163 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। स्टिल 4 balls left in overall calculation in their innings. Ajay bowls. Again, top edge, लेकिन gone. It's very fine, and it's no. In fact, it fielder out there, just a single. In fact, they come back for the second. 2 रन यहाँ पर पूर्ण करते हुए। हालांकि गेंद टॉप एज पर टकराई थी लेकिन डीप थर्ड मैन पर जो फील्डर खड़े हुए थे सीमा रेखा के पास काफी पीछे और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 165 रनों पर 165 for the loss of 5 wickets now. Now just 3 balls left in their innings in overall calculation. अजय गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अभिजीत के लिए अगली गेंद। इस बार स्टंप से एक्सपोज करते ऑन साइड पर गेंद को स्कूप करना चाहता, नॉट कनेक्टेड दैट वन। इन फैक्ट द बॉल वेंट जस्ट साथ ही लेग स्टंप एट द लास्ट मोमेंट। गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ चुका है। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 165 रनों पर और कुल मिलाकर 2 गेंदें अब बाकी और अजय गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अगली गेंद। यह गेंद उछाला इस वक्त लंग ऑफ पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल और इसी के साथ अभिजीत की पारी पर पर्दा गिर चुका है। Shravanesh, the batsman, number 8 batsman, is now comes out to the middle to face the last ball of their innings. और गेंदबाज अजय इस वक्त गेंदबाजी करेंगे पारी की अंतिम गेंद लेकर। बल्लेबाज श्रवणेश सुवर्ण जो कि लेफ्ट हैंडेड श्रवण इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है उनके पारी की अंतिम गेंद का। तो अंतिम गेंद लेकर अजय तैयार। The last ball of their innings is now coming up. This time, driven that one, down to Langon. Fielder standing so deep, they completed one. They come back for the second. Langon fielder after 8, 10 before that, the batsman come back for the second run. Very safely in the end. And after that's it. And MCF, they started well, progressed well, and finished well with 167 runs they scored in the simulated 20 overs. For losing 6 wickets, and now they set a huge target in front of AJ Hospital of 168. तो 168 रनों का लक्ष्य इस वक्त AJ हॉस्पिटल के सामने MCF ने तय किया है और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है इस वक्त द रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम इज एग्जैक्टली 8.40 रन्स पर ओवर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। 8.40 रन प्रति ओवर के औसत से 168 रन बनाने हैं। 168 run, 168 they have to score in the stipulated 20 overs with the required run rate of exactly 8.40 runs per
per over with the help of 10 wicket they have to score for victory. The present equation shows for them. और देखते हैं यहाँ पर एजे हॉस्पिटल के बल्लेबाज इस लंबे से लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं. 168 the target for AJ Hospital set by MCF and their innings now going to start within just short while. तो यहाँ पर AJ Hospital की पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त एक बार फिर से सतीश के साथ अंग्रेजी में जब यहाँ पर AJ हॉस्पिटल की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक ऑफ 5 minutes. थैंक यू, धन्यवाद. ऑल्सो इट्स टाइम फॉर DJ.
So welcome back for the innings of team AJ Hospital. They have to chase 168 to win this match. 167, which is the total score of MCF, and 160 is going to be a target for AJ. And wait and see how well the opening batters will going to lay the foundation for the team AJ Hospital. And Avin and Prajwal, the opening batters, are in the middle. And the bowler will going to start the proceedings with the jersey number 99. The first ball is missing the direction. The warm-up delivery of the morning, which is pitched outside the line of leg stump and moved away from the outside the line of leg stump, and white call by umpire Avinash. First run for the team AJ in the form of extra, one without loss of any wicket. Abhijit brought into attack from the community box end to bowl the first over of the power play, and not more than two fielders outside the circle. And straight away the fielder down at deep third man, and one at deep fine leg again. Tried to work that an onside region. This time ball is almost deflected from his pad and went into that square leg region behind the square. No chance of any run. And first delivery of the match and of the innings, in fact, and the wide, which is followed the good one there from Avinash. Abhijit, correction. Short run up. Oh, what a delivery. Absolutely perfect one. Almost drawing the batsman onto the front foot with a beautiful delivery. Line and length is so good in the occasion. Shaping little bit away from the right-hander batter. And luckily, Avin, the batter, just wanted to poke that ball outside the line of off the front foot. And missing his bat fractionally. And the wicketkeeper behind somebody, the rest back to bowler. Again, a lovely delivery. One more lovely delivery, shaping this time incoming delivery from the batter off the back foot. Avin played at one soft end, and no run scored. So good comeback by the bowler after that. The first one, which is missing the line, and after that, two very good deliveries from the bowler Abhijit. So one without loss of any wicket in the over number first is in progress. Abhijit again. Avin. 5 men in the offside and 4 in the on. This time appeal for leg before wicket. Too much. The height will be the factor in that occasion. A lovely delivery. The batsman again uncertain with that beautiful delivery coming from the hand of Abhijit. Again, the batsman tried to get that one onto off the front foot. Luckily, that ball is got a little bit height, favoring the batter from that appeal for the leg before wicket. Good shout, but right decision from Avinash. Excellent stuff there from Abhijit in the first over. The power play always the key for the success for the team, chasing a total like 168. Again, it's swings and missed, and again the batter Ravin just wanted to go for the expansive drive on the offside region, but this time again tried to play that one away from his body, beaten by the swing in the negation, and the first 3 overs might be a little bit helpful for the bowler if they able to get that line and length proper, can create the problem for the batter. One more lovely delivery. Have a look at the bounce. He's got height. So exploiting that the benefit of what height he has got is pitching the ball very nicely and getting some extra bounce as well. Fantastic over, which is comes to an end from Abhijit. Only one run came from that over, that in the form of extra white. And then Avin, absolutely, he's been uncertain with that fantastic over from Abhijit. Chasing 168, it's a slow start from the opening batter of AJ Hospital. 168 is the target. First over completed, one without loss of any wicket.
Shravan S. Suvarna brought into attack from the commentary box end to bowl his first over and second over of the power play, and Prajwal is the batter facing his first delivery. Didn't got opportunity to bat in the first over. Now we'll going to face his first delivery. Left-hand batter. Left-hand batter to left-hand bowler introduced for the left-hand batter, and starts with a beautiful delivery. Well pitched up delivery. Again, drawing the batsman onto the back foot. Tried to push the ball. Very lucky again for a batter. That ball is absolutely missing the outside edge of the bat. Wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. Left arm bowler. They brought into attack to bowl the over the wicket to the left hand bowler batter. The fielder down at deep third man, one at backward point, short cover point, short extra cover. The mid off almost in the edge of the circle. That's the offside field. Again, what a catch! Magnificently taken. That was absolutely a stunner there from the slip cordon fielder. And again, the batter is doing a mistake of just wanted to get the ball off the back foot, played it away from his body, and pays the penalty for that. Got outside edge of the bat. And the slip fielder absolutely taken a fantastic diving catch. Little bit into his left and onto his front foot. The good catch taken by Deepak Ramesh. Outstanding catch. One of the difficult plays in the field set. That was a slip cordon. Because the ball absolutely coming very quickly to that region. Have to react quickly. And unfortunately, Prajwal is out for duck. What we are talking about needed some good start from the opening batter for AJ Hospital. But what we are watching here is that they lost their first wicket very early and cheaply. 1 for 1. Danvit is a new batter in. Now walked towards the middle. Needed some partnership for the team AJ Hospital. The partnership also, they have to exploit that fielding condition restriction what we are having in the power play over the 6 overs. When you're chasing a total like 168 to win this match, the need to take the advantage of the power play. But losing a wickets early will make a little bit tough for the chasing team. Wait and see how well the one more left-hand batter replacing here. Danvit will go into face the next one. Suvarna has been fantastic in this over. Shravan. Oh, copybook style. Everything is right behind that front foot punch. And absolutely, it was a head very straight. We can see here the front foot almost nicely coming to the line of the ball. Even along with the front foot, that the bat is also coming to the line of the ball together. But unfortunately, we're not going to get the runs for that. Drives, nice looking drive, lack of placement. Played it down to short mid off. So that will going to frustrate the batter when you are hit the ball pretty well right from the middle of the bat, but you fails to get the placement right. That might be a little bit frustration, but nice to see that he is hitting the ball very well. Abhijit. Off the back foot, cuts it. Again, the lack of placement. And this time he just wanted to go for the blind run. No run at all. Done with after he cuts the ball. Without seeing the fielder, he just wanted to go for the single. Rightly so, his partner is sending him back. Otherwise, asking for trouble, going for the run. 1 for 1. Very hard to combine the runs against a disciplined bowling performance by the opening bowler.
Shravan balls again, doesn't get hold of that in properly, and not that much of shot enough for Dhanveer to go for the pull shot. The height of the delivery has been a difficult one for the pull shot. Maiden over. The first maiden of the CPL T20. And Shravan S. Suvarna is registering his name. He's the first bowler. They got the maiden over, especially in the power play. Your bowling a maiden over means he's been outstanding. So still long way to go for the team AJ Hospital. They are searching for the right track. They're 1 for 1. The start of the over number third. The bowler, one who bowled brilliantly in the first over, Abhijit. No bowling change, in fact, and Nihal brought into attack. Nihal Karkera, one more very talented young bowler. Again, try to pull the ball. Again, the position what you are talking about. Not a good enough here from the batter, Avin. Nowhere near the pitch of the delivery. Just wanted to play across the line and misses the line completely. A good start for the over number third as well. Nihal Karkera. This time doesn't get hold of that one. Oh, he drops the catch. He's put down. Short mid-wicket fielder. Rajiv is known to be one of the safest pair of hands at short mid-on. Just little bit, not that much of height for the fielder to take the catch, but the judgment, which is not proper. He's put down life for the batter. Avin, lucky escape for him. Single taken, two. After a long time, scoreboard is moving. It's a 2 for 1. Dhanveer back on strike. Flicks that one very nicely. Beautiful shot. Played it down to deep square leg boundary for 4 runs. Even though outfield is absolutely little bit sluggish because of grass in that region. But still good enough for the batter Dhanveer to get his first boundary. And first boundary for his team as well. The breaking the shackles. It's 6 on the board. Nice flick shot. Whips it away. The ball is almost onto the legs of the batter. That will give a lot of confidence for the batter. The kind of flick shot he played. Very safe when you're playing in the power play. That's why I'm talking about. It was a batter's paradise, what we are talking about, the power play. They have to take the advantage of fielding restriction. Lovely delivery indeed. Again, coming into the batter. Short one, but a little bit extra bounce in the occasion, forcing the batsman. Played it that one, just wanted to play that one gently. Back to bowler, not for run. Scoreboard remains on 6 on the board. Third over is in progress. Nihal. Balls again. Played it gently down to short mid-wicket region. The soft hand comes into play to get the single. The batter exactly knows that the fielder is in the edge of the circle.
So he will going to retain the strike for the next over. 3 gone. And first good over. 6 runs came from that over for the team AJ Hospital are 7 for 1 after 3. So 3 overs completed, 7 on the board. New over started. Forward number fourth in fact. This time just wanted to go for the pull shot, deflected from the leg. One more single been added total with the addition of that single in the form of leg by Scoreboard Namuzanto. It's from the bat. Sorry. And one more single from the bat. 8 on the board. Shawan Boss, copybook style, played it gently down to cow point region, and of course the single there because he played it one just left of that cow point field by batter Avin, and the scoreboard numbers on to 9 on the board. So needed some partnership so that the batters are quite watchful in the occasion. Doesn't want to lose the wicket and know exactly if they study down in the middle, they can get some acceleration in the last. Shravan. Was nice looking try again, like a placement, chance of run out to the fielder at short mid off in edge of the circle, and the good calling from this batter, good understanding. He won the risky run, but they converted easily because the fumble from the fielder. One more addition, scoreboard moves on to double figure, 10 on the board. Not a easy 10, it's hard for 10 runs for the team AJ Hospital. Nihal bowled 1 over, Roy Abhijit bowled 1 over, Shravan bowling his second over. Bowled him round the wicket. He operated, and batsman just wanted to play across the line, swinging his bat, but not in the line of the ball. You miss high it absolutely the stump, the off stump, which is cartwheeled. This is what the fast ball always loves to see. Absolutely fantastic delivery, disturbing the furniture with the beauty, but more than the beauty of the delivery, I think the wrong shot selection from the batter. Avin just wanted to go for the big one across the line. The wicket number 2 gone. It's 10 for 2. Avi, the batter, walking towards the middle after scoring only 2 runs from his bat after facing 10 deliveries. Thank you, DJ. And the batter, new batter Ajay, walks towards the middle with the jersey number 14, wearing the red color. The pad might be is a danger man for the opposition. The wait and see how well we'll going to
contribute from the bat. They needed some partnership. They needed some sensible batting. Seven balls played copybook style, back foot defensive stroke, very, very strong. Perfect, everything is perfect in that defensive stroke. Good, the balance as well. Reading that line and length so quickly. Getting the position and played it defensively back to bowler. Good bowling there from Shravan so far. He's not giving any opportunity for the batters to freeze their arm. Left arm bowler. Round the wicket he balls again, copybook style again, one more defensive stroke and one more good over. The successful over which is comes in and one wicket in that over as well for Shravan S. Suvarna. And after completion of over number 4 and searching for the right track, only 10 on the board for the loss of 2 wicket. AJ Hospital looking in trouble. Thank you, DJ, and we're going to start the over number 5. And you're watching Cpl T20 2020, the Corporate Premier League 2025. Again, I wanted to go for the big shot, but I couldn't manage to get that stroke purchase properly. It's just intention of the batter to go over the top of the infield, because of that line and length which is bowled by the bowler Nihal is not easy enough for the batter to get that one over the top of the field. Just a single, 11 on the board. The first match of the day number 1 is in progress. T20 leather ball cricket tournament organized in this most beautiful NMPA cricket ground, New Mangalore Port Authority, Dr. B.R. Ambedkar Cricket Stadium, one of the most beautiful and historical cricket ground, witnessing Cpl T20. Top edge, catch it is a call, but no one there in that slip cordon. The fielder is been up in almost in the deep third man region, so that one more single, no control whatsoever, as Ajay just wanted to go for the pull shot, but again he's got a top edge. The 12 for 2 in the over number 5 is in progress. 2 success, the one leave bowler has got a 2 wicket, Shravan S. Suvarna, registering the 2 wickets in his name. This time lofted at one handsome looking drive. Its ball went towards a deep long off boundary. 1 bounce, 2 bounce into the fence for 4 runs. This is what needed. The batter of AJ Hospital have to take the initiative of getting some acceleration. Done with this time. Got that one right from the middle of the bat into the deep long off for 4 runs. Thank you, DJ. The previous delivery what you're talking about, the width is offered by the bowler Danvit for Nihal for Danvit, and Danvit off the front foot played it exquisite lofted off drive towards a deep long off for 4 runs. This time against the line, against the moving delivery, just wanted to go for the big shot. They're all happening when you're got a boundary in the previous delivery. The very next delivery, just wanted to go for the one more big shot. But you have to see that the bowler is always clever. They're looking for the bouncing back. And good one there from Nihal. To get that away from the batter. This time going down the leg side, wicket keeper fumbles. So that 1+1. The 2 wides has been added to total. With that extra scope. But Namuzanto 18 on the board. This is all happening actually. If you're too much in a defensive frame of mind, the bowler going to attack you.
And if once you started to get some runs, then the bowler started to defend. Of course, they needed just such kind of a brave and gutsy batting here for the team AJ Hospital. If they wanted to get a 168, they take that all loose deliveries into the fence. This time again, away from the bat too much. So white call by umpire. The bowler looks like he's lost his balance. Maybe is a problem with this ankle. While he's just delivered the ball, looks like the twisted ankle for the bowler. But nothing much worried about that because they are playing against doctors, so they will definitely have some treatment here. So AJ Hospital and having some very experienced professionals there, so we're going to see what will happen. If it's a normal injuries like what in cricket field we are watching hamstring injuries, the cramp, it might be not a big issue. With the quick relief spray, can the bowler get up quickly? Wait and see. If the twisted ankle, then it's going to be a little bit problem for the bowler. So what talking about this cricket tournament, it's fantastically organized by SM cricketers under the great leadership of five, the pillar of this cricket tournament. That same the personalities who organized a very successful cricket tournament in last month in Manipal end ground. Looks like the batter bowler is leaving the field. Means it is not the cramp, but it's definitely the twisted ankle of the bowler. Looks like is in trouble, and hoping for his quick recovery. The bowler will going to change, and umpire saying Avinash saying that someone will going to complete the remaining deliveries of this over. Ashwin will going to continue. So last the two balls remaining, and Ashwin will going to continue here. Not a good news here for MC of that they're missing the service of Nihal, the young good bowler for the side. Just number 24 is coming to the ground, substitute player for the side of MCF. The scoreboard remains on 19 on the board. This time hit that one just over that of the infield. The ball will not going to travel to the fence, and the two fielders behind the ball, one of them will going to get that one. And before the throw coming from the deep, ample time for the batter Ajay to complete at couple of runs. No timing, but good enough for Ajay to get that one over the infield. And the scoreboard moves on to 21 on the board. Shifting the gear here. Both the batters, after taking a little bit time in the middle, needed to be, because it's the fifth over of the match. Again, going to be a punishable, not from the batter, but from the umpire, because the line which is outside the line of leg stump, and with that extra scoreboard moves on to 22 on the board for the loss of 2 wicket. Over number 5 in progress. Slowly and steadily, the partnership slowly building up. This time I played it down to backward point region for no run. Now they got a single overthrow. With the addition of that single, scoreboard moves on to 23.
So over number 5, which is comes in end after completion of over number 5, total score is 23 for the loss of 2 wicket, replying to 167, 168 to win the match. Still long way to go for the team Edge Hospital, but still manageable. And they're just trying for that partnership. Of course, they wanted to continue in for a long time. So next match, EG India takes on Edge Hospital, the match number 2 for day number 1. I request the EG India, the players come, please report here and register your player's name as quick as possible. So time to change in commentary box as well. It's over to Gopi for the next 5 over of the innings of AJ Hospital. Dhanyawad Satish. So really testing time continuing here for the batsmen of AJ Hospital. Just managed to score 23 runs on the board. और बैकफुट पर गए, पहली गेंद खेल दिया, कवर पॉइंट पर रन्स नहीं मिलेगा. दीपक रमेश अगर 3 विकेटें प्राप्त करते हैं तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार एसएम क्रिकेटर्स इनकी ओर से दिया जाएगा. अगर 5 विकेट प्राप्त करते हैं तो 2500 रुपए का नगद पुरस्कार एसएम क्रिकेटर्स उनकी ओर से दीपक को दिया जाएगा. और इस बीच दीपक की गेंद को इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को इस वक्त खेला जरूर, स्क्वायर ऑफ द विकेट कवर पॉइंट पर गेंद पहुंची, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन्स नहीं मिलेगा. अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी. यहां पर एजे हॉस्पिटल को सिर्फ 23 रन बन चुके हैं इस वक्त 2 विकेट के नुकसान पर. और गेंदबाज दीपक बैकफुट पर गए, गेंद को कट कर दिया इस वक्त पॉइंट पर. दीपक अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हैं. फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद दीपक इस बार गेंद को उछाला है खूबसूरती के साथ, लॉन्ग ऑफ पर गेंद जाती हुई और गेंद को इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर गेंद हो चुकी है 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ बल्लेबाज धनवीत के बल्ले से, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त धनवीत के बल्ले से लगता हुआ और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 28 रनों पर. और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज दीपक तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद ओ परफेक्ट ऑफ कटर डिलीवरी इस वक्त ऑफ ब्रेक गेंद थी. गेंद को फ्रंट फुट पर जाने के बाद इस वक्त रक्षात्मक तरीके से ढकेलना चाह चुके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 28 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है और गेंदबाज दीपक का अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑन पर, फील्डर गेंद के नीचे आते और इस कैच को लपकने में सफल बेहतरीन तरीके से, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. So 28 for the loss of 3 wicket after completion of 6 overs. Really a struggling time continuing here for the batsmen of the hospital at the situation in these critical circumstances. The man called Arya is now comes out to the middle as a number 5 batsman.
और इस छोर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज केशव, और इस वक्त वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार, जबकि सामना इस वक्त करते हुए बल्लेबाज अजय, जो कि इस वक्त केशव की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। और केशव गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए एक्स्ट्रा कवर, कवर पॉइंट, गली शॉट, फाइन लेग, मिड विकेट मौजूद इस वक्त। और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर तैनात, जबकि डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास। और गेंदबाज केशव पहली गेंद लेकर तैयार। अजय सामना करते हुए यह गेंद इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, बैकफुट पर जाने के बाद लगॉन पर बल्लेबाज ने, और एक रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। 29 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी, 167 रनों का लक्ष्य, और इस ओवर के बाद 13 ओवर का खेल अभी भी शेष। और एक जहां तक साझेदारी का सवाल है, एक पार्टनरशिप की इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत। और गेंदबाज केशव अगली गेंद लेकर तैयार। पहली बार आर्यव हेगड़े, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और गेंदबाज केशव, यह गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल, लेग ब्रेक गेंद थी, बैकफुट पर गए, हल्के से गेंद को खेल दिया शॉर्ट कवर पर। और जहां तक रनों का सवाल है, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 29 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर इस वक्त प्रगति पर, और गेंदबाज केशव अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को पुल कर दिया है खूबसूरती के साथ, इनटू द गैप एज वेल, और गेंद सीधे डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। और ऐसा कहना पड़ेगा, he just picked that one right from the spot and just lofted it over deep mid wicket fence for a bound. A fantastic struck came from the bat of Jay. और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। 33 for the loss of 3 wickets। और गेंदबाज केशव अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। लेग ब्रेक गेंदबाजी, गेंद को उछाला इस वक्त लंगोन पर, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए, गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। और आर्यव के बल्ले से ये चौका लग चुका है, और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। निश्चित रूप से आर्यव हेगड़े ठान चुके हैं कि उनको चार्ज इस वक्त करना है। इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया लंगोन पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 38 रनों पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और इस वक्त जय, जो कि सामना करने के लिए तैयार। केशव की गेंदों का स्ट्राइक रेटेड हो चुका है पिछले गेंद पर, और केशव फ्लाइटेड गेंद ऑन साइड पर, गेंद को स्लॉप स्वीप शॉट इस वक्त खेलना चाहता, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली। इनफैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड, दे कम बैक फॉर द सेकंड कंफर्टेबली एट लास्ट। और 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 40 रनों पर। 40 on the board, 3 wickets lost, 7 over had been bowled, and now 127 they have to score for victory. 127 more runs, in fact, they have to score for victory in remaining 13 overs. That means in remaining 78 deliveries. Still, they got 7 wickets kept intact. सो दीपक का नया ओवर प्रारंभ करते हुए, और आर्यव इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी इस वक्त एजे हॉस्पिटल के लिए। पहली गेंद दीपक की,
फ्लाइटेड गेंद बैकफुट पर गए, हल्के से गेंद को पुश किया। इस वक्त रन लेने के लिए 2 कदम जरूर आगे बढ़ा है, लेकिन सही तरीके से नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने उन्हें वापस भेजा। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ जे हॉस्पिटल के बल्लेबाजों के ऊपर। निश्चित रूप से एक साझेदार यानी पार्टनरशिप की इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत है। फ्लाइटेड गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया। शम्स को कवर करने के बाद कोई फील्डर वहां पर नहीं, स्वयं गेंदबाज जब तक दौड़कर जाकर गेंद पर पहुंचे। 2 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। सेंसिबल क्रिकेट इस वक्त अपनाए और पहले यह भापते हुए कि फील्डर डीप मिड विकेट पर काफी पीछे तैनात है। स्टम्प्स को कवर करने के बाद हल्के से गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ दिया इस वक्त मिड विकेट पर और 2 रन तेजी के साथ बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। बेहतरीन क्रिकेट और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 42 रनों पर। 42 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 8 इन प्रोग्रेस। दीपक बैकफुट पर गए, कट करना चाहा, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद फाइन इस वक्त निकल चुकी है। डी थर्ड मैन पर गेंद का पीछा करते हैं फील्डर। काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करने के बाद दूसरे फील्डर के हाथों में गेंद को लौटाया और दूसरे फील्डर गेंद को कलेक्ट करने के बाद विकेटों पर थ्रो करे। बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर 2 रन प्राप्त करने का। हालांकि गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर जरूर टकराई थी, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के बाईं ओर से फाइन निकल चुकी थी इस वक्त 2 रनों के लिए और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर। फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को साइड पर मोड़ना चाहता, चूंकि वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 45 रनों पर। 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 8 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज दीपक again bowled out, just gone for a big one. Fantastic delivery now, just beating by the flight and he just got rid of the batsman. So after the departure of Aryav Hegde's wicket, new man, number 6 batsman is now comes out to the middle. For AJ Hospital is Lokesh. और वो इस वक्त सामना करेंगे दीपक की ओवर की गेंदों का। और दीपक बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज लोकेश इस वक्त अंपायर से गार्ड लेते हुए और पहली बार इस ओवर में सामना करने के लिए तैयार दीपक की गेंदों का। बाएं हाथ राउंड द विकेट दीपक इस वक्त गेंदबाजी करेंगे लोकेश के लिए। स्कोर रुक चुका है 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह काफी संकट की स्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ एजे हॉस्पिटल। और जहां तक एक साझेदारी का सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, इस वक्त एक लंबी साझेदारी की पार्टनरशिप की उन्हें सख्त जरूरत है। और लोकेश इस वक्त फील्डिंग का मुआयना करने के बाद सामना करने के लिए तैयार दीपक की गेंदों का। दीपक फ्लाइटेड गेंद, रक्षात्मक तरीके का खेल इस वक्त फ्रंट फुट पर जाने के बाद और इस वक्त गेंद को फील्ड करने में सफल शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 46 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 46 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 4 विकेट्स इन फैक्ट इन द ओवर नंबर 8 इन प्रोग्रेस। दीपक Oh, extra quicker, but the ball came just a little bit of a high at the last moment. बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलने के प्रयास में, चूंकि तेज गेंद थी परिवर्तन के तौर पर गेंदबाज द्वारा, लेकिन गेंद कुछ हद तक ऊंची आती हुई
और इस गेंद पर बल्लेबाज जय बच चुके हैं। ओवर की समाप्ति 8 overs completed, 46 for the loss of 4 wicket. Still, the problems are continuing for the batsmen of AJ, and now they are still struggling. It's 46 for 4 after 8 overs. This is the inaugural match of this prestigious cricket tournament, Cpl T20 Corporate Premier League 2025 is now progressing here, which is proudly presented by SM Cricketers. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, गणेश उपाध्याय इस वक्त गेंदबाजी यहां पर प्रारंभ करते हुए। भीषण गर्मी मैदान पर इस वक्त पड़ती हुई, न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी इस भीषण गर्मी का एहसास यहां पर करते हुए, और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहां पर बढ़ते हुए। पहली गेंद गणेश, इस बार ऑन साइड पर गेंद को पुल किया, कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड थर्ड मैन, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग कहना पड़ेगा, सीमा रेखा के अंदर जब तक अपने रफ्तार को खोने के बाद फील्ड हो। बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर जाने के बाद ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट ट्रांसफरिंग हिज वेट ऑनटू हिज बैकफुट एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद को उछाल दिया इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर 2 रनों के लिए। 48 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है गणेश। इस बीच गेंद इस वक्त टॉप एज पर टकरा चुकी है, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के सिर के ऊपर से एक बार फिर से गेंद इस बार सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। टॉप एज पर गेंद टकराई थी, लेकिन गेंद फाइन इस वक्त निकल चुकी है शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ द 50 comes up for AJ Hospital, 52 on the board for losing 4 wickets. Ninth over in progress, 52 for the loss of 4 wicket. हालांकि गेंद टॉप एज पर टकराई थी बल्लेबाज लोकेश के बल्ले से, लेकिन स्ट्रोक में तो पर्याप्त दम था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके, और लोकेश एक बार फिर से तैयार अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए, और गणेश अगली गेंद लेकर तैयार। शॉर्ट गेंद टॉप एज, एक बार फिर से गेंद फाइन निकल चुकी है, इस वक्त कोई फील्डर मौजूद नहीं, डीप स्क्वायर लेग पर, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। लोकेश इस वक्त जान चुके हैं, इस वक्त कुछ हद तक आक्रामक बल्लेबाजी यहां पर अपनानी है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है काफी हद तक इस वक्त बढ़ चुका है। और इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछाला था, टॉप एज पर गेंद टकराई थी, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है चौके के लिए। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 56 रनों पर, अब तक 56 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 56 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 9 इन प्रोग्रेस। कुछ हद तक महंगे साबित होते हुए गेंदबाज गणेश उपाध्याय इस ओवर में पहले 3 गेंदों में 10 रन यहां पर प्रदान कर चुके हैं, और अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लोकेश के लिए। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, और फील्डिंग का मुआयना करने के बाद इस वक्त गेंदबाज गणेश इस वक्त तैयार। डीप फाइन लेग के फील्डर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है। गणेश ये गेंद कट किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। कम से कम 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, शायद दूसरा भी मिलेगा, और मिल चुका है दूसरा रन ऑफ द बैक फुट, और ओवरथ्रो के रूप में बल्लेबाज 3 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। चौथा भी मिल सकता है अगर बल्लेबाज कोशिश करते हैं, लेकिन चौथा रन लेने में कुछ खास दिलचस्पी इस वक्त बल्लेबाज ने नहीं दिखलाई, और इस बीच 3 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 59 रनों पर। ऐसा कहना पड़ेगा just rocked on the back foot and cuts that one perfectly, and he finds the gap just wide of the cover point fielder, and because of that he's got 3 runs for that stroke, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 59 रनों पर। 59 for the loss of 4 wicket. Expensive over progressing here so far from the bowler गणेश उपाध्याय, और एक बेहतर ओवर साबित होता हुआ यहाँ पर एजे हॉस्पिटल के पारी में। और अजय इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गणेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बार स्कूप्ड अवे, और गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट जाते हुए इस वक्त। हालांकि आउटफील्ड पर काफी घने घास हैं, और इस बार लेकिन गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए।
तो बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त बल्लेबाज अजय का। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला था, हालांकि आउटफील्ड पर घने घास जरूर है, लेकिन स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। बेहतर स्ट्रोक का गणेश। अगली गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया बैकफुट पर जाने के बाद, और मिड विकेट पर जब तक गेंद फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका है। सो फर्स्ट गुड ओवर इन एजे हॉस्पिटल्स पॉइंट ऑफ व्यू केम्स टू एन एंड. 18 runs came from this over, and because of this over, I must say AJ Hospital are now back in the game a little bit after being a slower start. Now the score is 64, 4 wickets down, 8 overs. In fact, it's a 9 overs has been came straight, and 9 gone, 68 for 4 with 11 to go in their innings. 104 runs still they have to score for victory out of their remaining 66 deliveries. And the required run rate is now gone up to over 9 runs per over. That means 104 they have to score in their stipulated 11 overs, almost close to the 9.5 runs per over. और निश्चित रूप से जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, तो इस वक्त चंद चौके और छक्कों की उन्हें सख्त जरूरत यहां पर कमबैक करने के लिए। और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज लोकेश और अजय पारी की भागदौड़ को इस वक्त संभाले हुए, और निश्चित रूप से एक बेहतरीन साझेदारी निभाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करते हुए। राजीव गेंदबाजी शुरू करते हुए, फ्लाइटेड गेंद, परफेक्ट लेग ब्रेक गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद के इस वक्त उछालना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद चूके गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंच चुकी है। राजीव अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार स्वीप कर दिया गेंद को फाइन लेग पर, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद जब तक फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका है। फ्लाइटेड गेंद थी इस वक्त मिड लेग स्टंप पर, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 65 रनों पर, 65 for 4। राजीव जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था एमसीएफ की पारी में, 66 रन उन्होंने बनाए थे। राजीव स्कोर 66 रन फ्रॉम द बैट, और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लोकेश के लिए। इस बार जस्ट गॉन फॉर अ स्लॉग स्वीप शॉट अपील इस वक्त, लेकिन गेंद कुछ हद तक लाइन के बाहर इस वक्त टिप्पा खाते हुए, और शायद इसी वजह से अंपायर ने इस अपील को नकार दिया, और इस गेंद पर बल्लेबाज लोकेश बच चुके हैं, और स्कोर बढ़कर इस वक्त रुक चुका है 65 रनों पर। पहले 3 बेहतर गेंदें राजीव इस ओवर में फेंक चुके हैं। स्कोर है इस वक्त 65 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, 65 for the loss of 4 wickets. Just a single run conceded in the first 3 deliveries of this over by राजीव। और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार लोकेश इस वक्त सामना करते हुए। विकेट कीपर फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए, और राजीव तैयार। इस बार बैकफुट पर गए, कट करना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, बट गॉट अ सिंगल। कवर पॉइंट पर बैकअप होता हुआ बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, और 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 67 रनों पर, 67 for the loss of 4 wicket in the over number 10 in progress. Still couple of balls left in this over, और राजीव इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट अगली गेंद। इस बार कट किया बैकफुट पर जाने के बाद, लेकिन स्वीपर मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 68 रनों पर, 68 for the loss of 4 wicket with just a ball left in this over। और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज राजीव तैयार बल्लेबाज अजय के लिए, अंतिम बार इस ओवर में। पटकी हुई गेंद, स्क्वायर ऑफ द विकेट, जस्ट ओवर द कवर पॉइंट फील्डर्स हेड, और गेंद को इस वक्त डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर अपने पैर के जरिए नहीं रोकने में सफल हो चुके हैं शायद, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था यहां पर 2 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट, पटकी हुई गेंद पर स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था इस वक्त, और कवर पॉइंट पर काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद सीमा रेखा के अंदर अपने पैर के जरिए जब तक गेंद को फील्डर रोके, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 70 रनों पर। 10 overs completed, half the way mark, 70 on the board, 4 wickets lost, still 10 overs left in their innings, और देखते इन बचे हुए 10 ओवर में जो रन से चाहिए इस वक्त
98 run, 98 more runs now they have to score for victory in remaining 10 overs with a required run rate of exactly 9.80 runs per over. और देखते हैं इन 98 रनों को बचे हुए 10 ओवर में यानी बचे हुए 60 गेंदों में जे हॉस्पिटल के बल्लेबाज पूर्ण कर पाते हैं या नहीं। तो 11वां ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ और पानी ग्रहण इस वक्त खिलाड़ी करते हुए खेल है जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है और एक छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ पर अगला ओवर शुरू होगा और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ एक बार फिर से जब यहाँ पर 11वां ओवर शुरू होगा एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you. Thank you, Vijay, and thank you, Gopi. And the partnership is absolutely now flourishing here for the team. AJ Hospital, Ajay and Lokesh are the two batters out there in the middle. Absolutely, they're playing as per the condition required. And especially the Lokesh is taking the initiative of getting some acceleration and being the one of the trump card batter for the side. Definitely, he needed to bat till the end if they wanted to win the match. Along with him, Ajay just certainly is giving good support from other end. Right him over the gate, lovely cut shot, played it down to deep, short backward point region, but not for run. In fact, nothing wrong with that cut shot, but something wrong with the placement in the negation as off the back foot, quite delicately cut that one, but unfortunately placement is not right here. And the bowler brought into attack from the far end, Abhijit in his second spell. The bowled the first over and bowled one is considered only one run in that first over. Again, lovely delivery. Excellent one there from Abhijit. The well-directed, slow Yorker end delivery, isn't it? And Loki is the batter, is watching the ball till the last moment in the negation and got the bat onto that in the negation. No run scored. 70 on the board. Still long way to go. A lovely shot, played it down to deep long off, only for the single in the negation, and with the addition of that single, Skubanda moves on to 71 on the board. The chasing a total score of 168 to win this match. At one stage, the team are really struggling, but these two batters absolutely they're controlling the situation with some the calculated risk they taken in that last 3-4 overs. Try to get them into the track. Abhijit continues from the far end. This time Ajay lofted that one right in the gap. Out to cover point region. They wanted to come back for the second. And in comes the throw, not good enough. Loki is the one is asking Ajay to come back for the second. Before the throw will come from the deep
cover point, one of the longest distance I must say, as far as the dimension of this cricket ground is concerned, at deep cover point. Allow ample time for the batter to complete a valuable couple of runs. This time Ajay doesn't get hold of that full shot properly, but good enough for him to get the single down to corner between mid wicket and long on. With the addition of that single, Skobana moves on to 74 on the board. Over number 11 in progress. This time again, Lokesh just wanted to play the inside out cricketing stroke, making room to play the shot, but clever thinking there from Abhijit. Again, getting the ball a little bit away from his bat, but taking that one in the pull. Played that little difficult stroke into the deep long off for an easy single. With that single, Skobana moves on to 75 on the board in the over number 11 in progress. You are watching the match between AJ Hospital versus MCF, the match number 1 of Corporate Premier League 2025, day number 1, T20 leather ball cricket tournament, proudly presented by SM Cricketers in this most beautiful NMPA Dr. B.R. Ambedkar Cricket Stadium here in Panambur. 11 past 40 is the time here. Little bit overcast, you can see that cloudy weather condition. But we are feeling some high humidity. Having Lokesh and Ajay in the middle, this match is definitely going to be more interesting. 11 which is comes in, and 12th over going to start from the far end. Rajiv brought into attack from the highway, and Loki will going to take the strike. This time very interesting. Lokesh just wanted to use the deftness of the crease, just wanted to play that one off the back foot, and the intention to go for the pull shot. But he just taken that, blocked that stroke, and very next ball he got a single for that. And with the addition of that single, Skobana moves on to 76 on the board. Rajiv balls, Ajay lofted at one, right in the gap. I don't think the bowler will going to get there. Again, he tried to use his feet, but this time he fails to do that. So, nice placement here from Ajay. Very interesting that having the spin bowler, not having an orthodox long on. There is a mid wicket, there is no long on. So, very good placement there from Ajay. Quite deliberately seeing the gap, played it very nicely into the deep long on for 4 runs. 80, the total score now. Another 88 runs required for the victory. Match is evenly poised. Cuts it nicely off the back foot down to deep cow point region for a walkable single for Ajay, and with the addition of that single, Skobana moves on to 81 on the board. Again, nice looking drive towards the deep long on, misfielded by the fielder. Misfielded by the fielder. Now we can see clearly that the pressure onto the fielder of MCF, because runs which is started to flow. And Lokesh has got a quick fired 24 runs in 15 balls, really changing the momentum here. And even Ajay is also giving such a good support from other end. He is also batting on 24. Oh, golden opportunities missed out. The wicket keeper behind the stumps, absolutely missing a big fish in the net. Almost the big fish in the net. The bowler absolutely missing that wicket of Loki.
And coming down the track, misses the line completely. Wicketkeeper fumbles. Opportunity for Loki to regain his crease immediately, quickly. A very lucky escape, and we can wait and see how Lokesh will going to capitalize the opportunity. But this is definitely going to be a turning point of the match. If Loki will going to continue bat here, another 5 to 6 over, he can change the complexion of the game. Over number 12 completed. Total score is 85 on the board. $83 required. 85, which is the total score, and 83, which is the required run. Eight overs remaining. 48 balls. 48 balls remaining, and 83 runs required for the victory. The match is absolutely looks like it's going to be anybody's game. Off the back foot, pulls that one nicely towards a deep square, like in front of square. One more addition with the addition of that single score, but now moves on to 84 on the board. 86, correction. 82 required. This time, loose stroke and over that of that short extra cover field. Lokesh absolutely dealing with some luck, and one more boundary. So with the addition of that boundary, the scoreboard now moves on to 90 on the board. Deepak thought it might be a wicket for him, but the fielder at short extra cover, and just going over his trying hands into the wideish long off for 4. Again, drives, nice looking drive from Lokesh, looking so confident. Again, there are a couple of runs. Ajay had to look for completion of that second, and he managed to complete that, and with the addition of that couple of runs, Coburn moves on to 92 on the board. Excellent partnership is in progress for Team AJ. Again, slower one. Ajay is not interested. Loki very much interested for the single. Looks like Ajay is a little bit tired here. Quite understandable. Hot condition. Both are run so many runs between the wicket. Oh, lovely fielding there by the short fine leg fielder, because Lokesh is got enough pattern to that. He just wanted to get past that fine leg fielder, but he fails to get past the fielder. No run scored. Because oh my goodness! I think ball is hitting his head. Might be, yes. He's been hit very badly. And Lokesh cuts the ball pretty hard. The fielder at backward point region, after the ball is just passing his 2 hands, ball hits him just maybe above the eyebrow. I think so. Sometimes it's happening with a difficult position in cricket field, the backward point, because the batter definitely, when they are going for the cut shot, the ball definitely coming very quickly to that fielder. The reaction time is always a fraction of second. If you're a little bit late, and you are in trouble. Because Lokesh has got a lot of chance here. He's dealing with some luck. Of course, sometimes luck is a fundamental ingredient in success. And here is a Lokesh getting some luck here. Missed out by the wicketkeeper. The stump chance, one which is just going over the head of that short extra cover fielder. The same over. One more opportunity is missed out at back point fielder. The MCF missing some opportunity.
Completion of 13 over. It's 93 on the board. The 7 overs remaining. 42 balls remaining. Rajiva. 75 required from 42 deliveries, and Lokesh got the single in the first delivery of the over number 14. The bowler brought into attack from the far end, Rajiv. In the previous over he conceded 2 boundaries. Again Ajay just wanted to get that one off the back foot, but that ball is not that much of short enough for Ajay to get that one off the back foot. Dot delivery. Never miss that deliveries, have to convert that into scoring one. Drives that one down to wideish long on, almost into the cow corner for a walkable single. With the addition of that single, score moves on to 95 on the board. 73 more runs required for the victory. Using his feet, coming down the track, but this time he will going to find the field down at deep mid wicket. Lokesh will going to complete the single. With the addition of the single, score moves on to 96 on the board. Rajiv balls off the back foot. Ajay played it exquisite off drive towards the deep extra cover, but only a single. The protection is there in the deep. One more addition to total addition of that single, score moves on to 97 on the board. Very hot condition. Needed the boundaries and 6 in each and every over for the team AJ. Again off the back foot, played it down to extra cover. Chance of run out there. Oh, direct, it might be a curtain in the innings of Ajay. The fielder tried his level best to get that direct hit, but one more tidy over. It's a good over from the point of view of team MCF from Rajiv. The 5 runs came from that over. 14 gone after completion of 14. Chasing 168 to win this match. AJ Hospital still searching for the right track. They are 98 on the board. Exactly 70 required. 70 runs required from 6 over, 36 balls, 70. Just under 12 runs per over the required run rate. Bowler brought into attack. Left hand bowler Deepak Ramesh is been punished by Lokesh Puttar, down to fine leg boundary for 4 runs. Loose delivery, little margin for error when you are having a fine leg inside the ring. Asking for trouble bowling that line. That Lokesh dispatched that one down to define like boundary for 4 runs. With that boundary, 100 comes off here for AJ. 100 comes off, 102 on the board. So good reply coming from AJ and good partnership. Oh, lovely shot from Lokesh. It's been outstanding extra cover drive. That was absolutely gorgeous from Lokesh. Nothing much wrong with the line of the delivery, but he had to dispatch that one between cover point and the long off. Huge gap. One of the most difficult stroke to play in the book when you try to play that inside out cricketing stroke. This is what Lokesh Puttar can do here for this team. 106 on the board in the over number. He is batting on 42. Lokesh. Again using his feet. Chance here for the fielder taken. This is a huge one for the team MCF. The danger man Lokesh departs. He disappointed. Tried to use his feet, but he is not nearly the pitch of the delivery. But still he wanted to continue the stroke. That's a problem.
He continued that stroke even though he knows that he couldn't manage to reach to the pitch of the delivery, and ended up with that catch to that same fielder at backward point region. It's been dropped by twice, but this time the MCF fielder not giving much opportunity for Lokesh. Is back in the pavilion after scoring a well-made 42 runs from the bat, but without completing a job. Is back in the pavilion. Thank you, DJ. So great innings which is comes in hand here from the batter Lokesh Puttur, who scored a 42 runs. In 27 deliveries with the help of six very delightful boundaries came from the bat of Lokesh Puttur, scoring 42 runs. Captain of the side is an impact player as well. Is walks towards the middle. Sharan J. Shetty will be the non-striker. How to play captain's knock. Wait and see. Impact player addition signal came from umpire Avinash. The great huge wicket for Deepak. Little correction, there is a striker, Sharan. First ball just wanted to swing that one on the onside region, but fails to make a contact with the bat. No run scored. Deepak balls, nicely driven for a walkable single towards wideish long on. With the addition of that single, score moves down to 107 on the board for the loss of 5 wickets. Still long way to go. 61 runs, 71 in fact. They have to 61. They have to get. Again, wanted to go for a cross-patted shot. That was a great over from the point of view of team MCF. They got a wicket of Lokesh Puttur, the huge one as far as the contest of this particular game is concerned. This is turning out to be the match turning over for the team MCF. And after completion of over number 15, 107 on the board. Still they have to get another 61 runs in remaining 5 overs. 30 balls, 61. And Gopi looks like that seems to be a difficult chance here for the team. But a difficult road often leads to beautiful destination. And wait and see how well the team AJ Hospital will going to get that destination of 168. And for that, Gopi, Ajay is only the player who is looking very confident on the other end. But they have to get some support from the captain of the side, and then only they can reach this target. But altogether, Gopi, some explosive knock which is badly required for the team, because asking run is now 12 runs per over. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, आस्किंग रन ऑलमोस्ट 12 रन्स पर ओवर। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर पहली गेंद निकलती हुई वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, चूंकि 108 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। और जहां तक विजय का सवाल है इस वक्त, ये जो हॉस्पिटल का, तो उनका सारा दारोमदार रहा बल्लेबाज अजय के ऊपर। इस बार गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 109 रनों पर। शरण जय शेट्टी इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, और जय इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ लंगोन पर, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर। नॉट मोर देन अ सिंगल। प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं, और इसकी वजह से सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज जय इस वक्त प्राप्त करते। 110 रन बन चुके हैं। 110 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और शरण
फ्लाइटेड गेंद ऑन साइड पर, गेंद को उछाला डीप मिड विकेट पर, काफी दूर दूर तक का फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें इस वक्त दिखाई देता। और इस वक्त एमसीएफ के कप्तान जान चुके हैं कि बल्लेबाज एजे हॉस्पिटल के आक्रामक स्ट्रोक इस वक्त खेलेंगे जरूर, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 12 के आसपास पहुंच चुका है। तो अपने सारे खिलाड़ियों को इस वक्त मैदान पर फैला चुके हैं। यह गेंद कट किया बैकफुट पर जाने के बाद, गेंद पहुंची इस वक्त गली पर, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 112 रनों पर, 5 विकेट के नुकसान पर। बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है गेंदबाज राजीव का, और इस ओवर में अगली गेंद लेकर तैयार शरण सामना करते हुए। फुल टॉस, पुल किया इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, फील्डर जी नहीं, काफी पीछे तैनात है, एकमात्र रन मिलेगा। He just collected the ball after 1 bounce, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 113 रनों पर। 113 for the loss of 5 wickets now, and over number 16 has been game shown, and 16 gone, 113 for 5. That means 168 the target. That means 55 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs. The required run rate is now gone up to exactly 13.75 runs per hour. अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के यहाँ पर एजे हॉस्पिटल को इस मैच में वापस ला सकते हैं, लेकिन कोशिश इस वक्त जरूर जारी है। क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज अजय और शरण जय शेट्टी के बीच, और अभिजीत गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 17वां ओवर शुरू होता हुआ यहाँ पर एजे हॉस्पिटल की पारी में 113 रन बन चुके हैं, और हेलमेट की इस वक्त मांग की है बल्लेबाज ने, ये देखते हुए कि इस वक्त मोर्चे पर तेज गेंदबाज को इस वक्त लगाया गया है। अभिजीत जो इससे पहले 2 ओवर फेंक चुके, अपने तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार सामना करते हुए इस वक्त शरण जय शेट्टी हेलमेट पहनने के बाद पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार इस ओवर का। फील्डिंग में जमावट इस वक्त गेंदबाज अभिजीत इस वक्त करते हुए, 24 बॉल्स लेफ्ट, 55 रन्स मोर रिक्वायर्ड फॉर विक्ट्री फॉर एजे हॉस्पिटल, और पहली गेंद लेकर अभिजीत इस वक्त तैयार। शरण जय शेट्टी इस वक्त सामना करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज। फर्स्ट बॉल, ये गेंद पटके हुई गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद जाती हुई कवर पॉइंट पर, और गेंद को डीप कवर पॉइंट पर जब तक फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा हो चुका है। जितनी तेज तरीके से गेंद टिप्पा खाने के बाद उछाल ली, उतनी तेज तरीके से गेंद पर बल्ला उड़ाते हुए गेंद को इस वक्त स्क्वायर कट कर दिया खूबसूरती के साथ, और गेंद की उछाल को पहचानते हुए, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 114 रनों पर, 114 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, और अभिजीत इस वक्त जय के लिए अगली गेंद। बीमर, दिस इज एन एब्सोल्युटली बीमर, और ऐसा कहना पड़ेगा गेंद को शायद स्लो गेंद फेंकने की कोशिश की थी, और गेंद उनके हाथों से इस वक्त फिसल गए, और बीमर के तौर पर सीधे फुल टॉस विकेट कीपर के हाथों में जा पहुंची। 1 रन का इजाफा हो चुका है। फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए, और देखना है कि इस बल्लेबाज अजय इस फ्री हिट गेंद का किस तरह फायदा उठाते हैं। ये गेंद नॉन साइड पर, इट्स गॉन फाइन डाउन टू अ डीप फाइन लेग, और यहां पर बाई के रूप में चौका प्राप्त कर चुके हैं। विकेट कीपर के हाथों से गेंद इस वक्त चूकी, विकेट कीपर के दस्तानों से कहना पड़ेगा गेंद चूकते हुए, और डीप फाइन लेग पर कोई प्रोटेक्शन न रक्षण मौजूद नहीं, और गेंद बाई के रूप में सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। 119 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। रन इस वक्त चाहिए एजे हॉस्पिटल के बल्लेबाजों को, किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है, और इस बीच बाई के रूप में 4 रन प्राप्त कर चुका है एजे। अगली गेंद, यह गेंद उछाला इस वक्त मिड विकेट पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा हो चुका है। फील्डर थोड़ी से पीछे तैनात, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, 2 रन आसानी के साथ पूर्ण कर चुके हैं, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 121 रनों पर, 121 फॉर 5, एंड ओपन नंबर 17 इन प्रोग्रेस, और अभिजीत गेंदबाजी के मार्ग पर इस वक्त तैयार। अजय एक लंबी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए, हालांकि अब तक 1 चौका सिर्फ उन्होंने लगाया है, लेकिन एक बेहतर बल्लेबाजी अब तक की है उन्होंने।
इस बार टॉप स्कूप गेंद को खेलना चाहता, गेंद के उछाल को पहचान नहीं पाए और गेंद टिपा खाने के बाद कुछ उछाल लेती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ एजे हॉस्पिटल के बल्लेबाजों के ऊपर। निश्चित रूप से चंद चौके और छक्कों की उन्हें सख्त जरूरत है यहाँ पर इस मैच में कमबैक करने के लिए। और अभिजीत अपनी ओर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। बल्लेबाज अजय इस वक्त सामना करते हुए। यह गेंद एक बार फिर से गेंद को स्कूप करना चाहता है लेकिन विकेट कीपर चूके इस वक्त। और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता शॉर्ट फाइन लेग पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्टंप से एक्सपोज करते हुए अंतिम क्षण में गेंद को ऑन साइड पर शफल होते हुए गेंद को उछालना चाहता लेकिन गेंद को उछाल नहीं पाया। विकेट कीपर की गलती की वजह से 1 रन बल्लेबाज माफ कीजिए टीम को इस वक्त प्राप्त होता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 122 रनों पर। 1-2 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स नाउ। शरण सामना करते हुए इस वक्त अभिजीत की गेंदों का 46 रन और चाहिए विजय के लिए। इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल और बाकी उनकी पारी में। अभिजीत यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ शरण ने लॉन्ग ऑफ पर लेकिन जस्ट सिंगल ही गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 123 रनों पर। 1 2 3 4 5 और 17वां ओवर उनकी पारी का यहाँ पर संपन्न हो चुका है। 17 गॉन 123 for 5 45 to get in remaining 3 overs. That means in 18 deliveries and the required run rate is now straight away gone up to exactly 15 runs per over. 18 गेंदे 45 रन चाहिए। Still they got 5 wickets kept intact और जहाँ तक एजे हॉस्पिटल के विजय का सवाल है उनका सारा दारोमदार उनकी सारी उम्मीदें सारी आशाएं बल्लेबाज अजय के ऊपर इस वक्त निर्भर रहा और देखना यह है कि अजय शरण के साथ मिलकर अपने टीम को सही मंजिल तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। श्रवण गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए शरण सामना करने के लिए तैयार। 45 टू गेट फ्रॉम 18 बॉल्स। फर्स्ट बॉल again just gone for a mighty heave, not succeeded at the last moment and collected by wicketkeeper behind the stumps and there is no possibility of any run. Better start for the bowler with a dot ball और एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्क पर इस वक्त तैयार श्रवण शरण के लिए अगली गेंद। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना था विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। 2 कदम आगे जरूर बढ़ा है लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंच रही है और इस वजह से कोई क्षति नहीं बल्लेबाज के लिए। एक और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ और श्रवण अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। अपनी ओवर की तीसरी गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज शरण के लिए। Again, just gone for a mighty heave, not succeeded. Wicketkeeper misses and it's gone over the fence for a boundary. Bowled him, in fact. The ball stuck to his leg stump and it's gone over the fence for a boundary. तो विकेट यहाँ पर गिर चुका है। शरण का एक बेहतर गेंद पर बल्लेबाज श्रवण शरण का विकेट प्राप्त कर चुके हैं। So, in the last moment, the ball just kissed the leg stump. It went just wide of wicket keeper. Bells are disturbed, and that is the end of Sharon. New batsman is now comes out to the middle, wearing a number 10 jersey. As a number 8 batsman, and he is now going to face the bowling of Shravan. और श्रवण तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर। यह गेंद रक्षात्मक खेल बैकफुट पर जाने के बाद शॉर्ट कवर पर जब तक गेंद फील्ड हो, कवर पॉइंट पर कहना पड़ेगा, जब तक गेंद फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 125 रनों पर। 125 फॉर द लॉस ऑफ
6 विकेट्स। और अजय सामना करते हुए इस वक्त गेंदबाज की गेंदों का। पटके हुए गेंद जस्ट गॉन फॉर अ ब्लाइंड शॉट, नॉट सक्सीडेड। और गेंद के लाइन पर नहीं आ पाया, साइड पर गेंद को पुल करना चाहते थे और यही करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 15 से ऊपर इस वक्त गुजर चुका है। और इस गेंद पर स्ट्रोक लेने में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। एक बेहतर लेंथ तो लाइन के साथ श्रवण गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद। इस बार हल्के से गेंद को ड्राइव कर दिया अजय ने। गेंद पहुंची इस वक्त कवर पॉइंट पर। जस्ट अ सिंगल एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 125 for the loss of 6 wickets. और इस बीच श्रवण अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलते हुए। तख्ता इस वक्त एमसीएफ का भारी लगता हुआ, लेकिन कमबैक करने का मौका जरूर है इस वक्त जे हॉस्पिटल के बल्लेबाजों को चौके और छक्के के जरिए। यह गेंद उछाला इस वक्त मिड विकेट पर गेंद जाती हुई, लेकिन फीडर वहां पर तैयार। गेंद दिस इज स्लॉपी, दिस इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी। गेंद को फील्ड करने के लिए चलकर आए 3-4 कदम अपने आगे की ओर, लेकिन न गेंद जैसे उनके हाथों में आई थोड़ा सा मिस जजमेंट वो कर बैठे और गेंद उनके पैरों के बीच से होकर सीधे डीप मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। ओवर कंप्लीटेड। तो फर्स्ट बॉल बोल्ड, सॉरी फॉर दैट, इट्स एन स्कोरर्स मिस्टेक। और जहां तक सवाल है, दिस टाइम जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, नॉट सक्सीडेड, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा। फॉरवर्ड शॉट लेग पर विकेट कीपर गेंद तक जब तक पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 130 for the loss of 6 wicket. So 5th time in this over. इस बार टॉप एज मौका, लेकिन फील्डर का कवर पॉइंट तक नहीं पहुंच पाया और इस बीच 1 रन का इजाफा और बल्लेबाज चलकर इस वक्त जाते हैं। अब स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है। 131 for the loss of 6 wicket. टॉप एज, दिस टाइम चांस फॉर द फील्डर, स्क्वायर लेग, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं। स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा सीधा, सिर्फ एकमात्र रन इस बीच दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। 132 द स्कोर नाउ फॉर लूजिंग 6 विकेट एंड ओवर इस वक्त प्रगति पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो देखते हैं अगली गेंद पर कितना रन यहां पर बनता है। This time driven that one, but can't find the gap as well. और अगेन सीधे पहुंचे कवर पॉइंट फील्डर के हाथ में।
So 19 overs completed, 132 the score, 6 wicket down, and now the last chance, 6 sixes required in the last 6 deliveries for the batting side. अंतिम अवकाश इस वक्त 6 गेंदों में 6 छक्कों की दरकार है जी हॉस्पिटल को इस मैच में विजय दर्ज करने के लिए। और इस बीच गेंदबाज तैयार, अंतिम ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ। पहली गेंद पैरों पर गेंद टकराई, प्लम्ब इन फ्रंट घोषित, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। श्रवण पहली गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं। थोड़े से ऑन साइड पर सफल होने के बाद गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, गेंद उनके पैर पर टकराई, उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत ही नहीं हुई उन्हें पग बाधा यानी एब्सोल्युटली प्लम्ब इन फ्रंट घोषित करने में। So 5 balls now remaining, 36 runs required. अगर गेंदबाज इन 5 गेंदों में कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो यहाँ पर एमसीएफ की विजय निश्चित है, लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना आखिरी गेंद अंतिम गेंद फेंकी जाए। और इस बीच गेंदबाज श्रवण तैयार नए बल्लेबाज के लिए। अगली गेंद बाएं हाथ राउंड द विकेट। इस बार जस्ट गॉन फॉर अ लॉफ्ट, नॉट सक्सीडेड, मच स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द बॉलर श्रवण और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। द स्कोर स्टेज एट 132 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स नाउ, 4 balls 36 runs required. Absolutely impossible task if the bowler cannot bowl no ball or wides in this remaining 4 deliveries. Shawan. Oh, that one absolutely fantastic delivery, much straighter line. Again beaten completely by that pace. और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। तो 3 गेंदें बाकी, सिर्फ औपचारिकताएं ही अब इस मैच में बाकी रह गई है। 3 गेंदों पर 36 रन चाहिए और श्रवण तैयार। अगली गेंद इस बार, oh, again beaten completely and is gone, in fact, got behind the wicket. It's got a deflection on that at the last moment and wicket keeper finally made no mistake. Fantastic delivery by the bowler Sharan. Shravan, in fact, the bowler who's got the breakthrough. So now number 10 batsman is now comes out to the middle. 36 required from 2 deliveries. Absolutely impossible task in front of the batsmen of AJ Hospital. और देखते हैं इन बच्चे विद 2 गेंदों में बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर रहा। तो जहां तक सवाल है इस वक्त श्रवण का, five wickets for Sharan. Fantastic bowling performance continuing here from him. So श्रवण 5 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। अगली गेंद लेकर तैयार। Just wanted to cut that one, missing the line completely. Fantastic delivery from Shravan. Now just a last ball remaining in this match. Last ball, 36 runs required. The scoreboard stays at 132 for the loss of 8 wickets. And the last ball of the match is now coming up. Shravan गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज चिरंत के लिए मैच की अंतिम गेंद. The last ball of the match is now coming up. Driven down to extra cover. That's it. Just a single. In fact, the batsmen they are walking towards to the other end. In fact, they completed a single. That's it. 34 runs victory. Comprehensive victory for MCF against AJ Hospital in the inaugural match of this prestigious cricket tournament, Cpl T20 Corporate Premier League 2025, which is proudly presented by SM Cricketers. And with that 34 runs comprehensive victory, MCF back the complete points. So
Now the next match. So the next match is going to play between EG India versus AJ Hospital. The second match for AJ Hospital consecutively, and they will take over EG India in the next match, and that match starts at exactly that second match between AJ Hospital and EG India will be starts exactly at 12:30 p.m. And the man of the match award goes to Shravan, who picked up the 5 vital wickets of AJ Hospital. I request Mr. Shravan, please come out to the stage and receive the man of the match award from my I request Mr. my long-time partner, fantastic English commentator, please Satish Salian, please distribute the award, the man of the match award for Shravan. For his fantastic bowling performance. He took 5 wickets in this match, and because of that, he edged the man of the match. I request Shravan to please come out to the stage and receive the man of the match from my dearest friend Satish Salian, English commentator. So that's it. And the second match, EG India will take over AJ Hospital, and that match starts exactly at 12:30 p.m. We are just taking a short break, and we'll be back right after short break with my friend Satish when the second match of the day one of this prestigious cricket tournament, Cpl T20 Corporate Premier League 2025, is now going to start exactly at 12:30 p.m. Now it's time for break, and also it's time for DJ. Thank you. ಅಲ್ಲಿ EG ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ EG India as well as AJ Hospital, please report to the stage immediately for the toss procedure with umpires. Thank you.
I request the captain of each India, please tell the decision. Welcome back for the match number 2, and the match will be played between AJ Hospital versus team EG India, and the toss which is completed after winning the toss. Captain of AG won the toss, elected to bat first against team AJ Hospital. So this is a news, and the first match which is conference victory for the team MCF. And they defeated AJ Hospital of a margin of 30 plus runs, and we are into the second match of the day number 1 of CPL T20 2025 T20 Red Ball Cricket Tournament, which is proudly presented by SM Cricketers in this most beautiful Dr. B.R. Ambedkar Cricket Stadium here in NMPA, Panambur. Time is exactly 12 past 30. We request the team please make it past. Have to complete another match after this. 3 matches to be played today. The T20 altogether 120 overs in a day. It's a long day, so your cooperation is much required. It's 12 past 23 time now.
So thank you very much. Good afternoon, cricket lovers. Welcome back for the match number 2 of the day number 1 of the prestigious Cpl T20 Corporate Premier League 2025 T20 leather ball cricket tournament, which is proudly presented by SM Cricketers in this NMPA cricket ground, BR Ambedkar cricket ground. And meanwhile, toss which is completed, toss won by team EG India, and they are elected to bat first against team AJ Hospital. May I request extra player of EG India, please be reported here. EG India the extra players ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. I request extra player of EG India, please be report to the commentary box immediately. So opening batters already made their way to the middle of the pitch along with the fielding team AJ Hospital, and they are going to field first. And umpires for this match, one change in umpire, and the field umpire along with Viraj Dharnesh will be the umpire for match number 2 of this prestigious cricket tournament. T20 leather ball cricket tournament, winning the toss, selected to bat first. Opening batters are in the middle. Ali Demadi extra players. EG India. Thank you. Varun will going to take the strike. Here is the first ball of the match. The bowler Shishir. Oh, balls the first ball. Lovely delivery in that. Beaten him with the flight and a turn. Wicket keeper missed it completely. The ball is almost running down to a defined leg region. Very fine. And couple of runs. It might be the chance here for the wicket keeper. Looks like no signal came from umpire, means it might be the ball is deflected by call by umpire. Thank you. So no chance. In fact, the beaten by the flight and the turn. Shishir balls and batsman off the front foot. Free meditated. Already they may have set his front foot to play that defensive stroke. Back to bowler. Not for run. 2 without loss of any wicket. Shishir. Right arm round the wicket again, off the front foot. Batter taking his own time. Varun played it defensively, not for any run. Left and right combination, which might be. The Varun is a left hand batter. Oh, lovely delivery again. One more delivery. The batter little bit late to that extra cover drive. Again, he just stretching his front foot to the line of the ball, but it's little bit late reaction and missed by a long way. One more very good delivery indeed. Half-hearted shout for leg before wicket. Only from the closing fielder, not from the bowler. Shishir knows that ball will going to miss the stump for a long way and no chance of any run. Good start from Shishir so far. Again, lovely delivery. Almost the ball looks like going to hit the stump. The last moment, the batter Varun has got a bat onto that. No run scored. 1 ball remaining in this over. Over completed. Correction. Over completed. After completion of first over, and one is couple of runs, 2 on the board without loss of any wicket. So 2 on the board and maiden over actually. It's a maiden over there from Shishir because that is a bye. It will not go into the account of the bowler. It's in the account of extra. So good start from Shishir, and Loki brought into attack to bowl the second over from the commentary box. And in his first over, second over of the power play. And the first time the bowler Chirag will go in to take the strike. Yes, I want to see the field side there. Defined again, deep third, and the fielders are in the deep.
Bowled him, cleaned him up. He absolutely disturbed the furniture. Fantastic delivery, but not a good ideal technique there from the batter. You are playing your first delivery, but almost exposing the stumps. And a great idea for the bowler like Loki to where to pitch the ball. He's rightly bowled onto the block hold of the batter. And the batter, the while he's trying to get his bat into the line of the ball, it's too late for him. And the ball absolutely did the trick and disturbed the furniture. The wicket number first which is back in the pavilion. Loki Puttur absolutely produced exactly what doctor ordered. 2 for 1. Chirag out for Golden Duck. Replacing him with just number 17. Sudhendra will be the batter, walking towards the middle. Loki, what a start from him. And it's a fighting knock in the previous match, which gone in vain. He batted brilliantly along with Ajay. When these two batters are in the middle, little bit hope of winning the match for AJ Hospital. Loki again bows to Sudhendra again. A similar kind of delivery, identical mirror display of the previous delivery. With this time the batter Sudhendra negotiated very well to not allow the bowler to deal with that Yorker and delivery. And the one run completed. First run for Sudhendra from the bat, and it's a total score now 2 on the board for the loss of 1 wicket. In the over number second is in progress. For the left-hand batter, there is a slip. Deep third man, backward point shot, cover point shot, extra cover mid-off. That is offside field, mid-on. Short square leg. The fielder down at deep fine leg, almost between deep fine leg and the square leg in the deep. Loki continues. Driven, but timing is not proper, but not good enough for left-hand batter Varun to get his first run from the bat. And total score now moves on to 3 on the board for the loss of 1 wicket. 4 on the board. Mangalore media having a light telecast of this cricket tournament, and Kamaluddin is the one is leading from the fan, taking the initiative of this fantastic live telecast of this cricket tournament. So one more fantastic delivery there from Loki. A lovely delivery with the pace. And he's got a lot of pace in bowling. And very smooth and lovely bowling action. Full toss, missing the direction, and just a feather touch. And ball will not going to travel to the fence, and good fielding there by the fielder, defined like only a single. Not a good running between the wicket. Probably there's the opportunity for a couple of runs. No touch at all. In fact, it's a wide. I thought the batter got a bat onto that, but a ball which is going down the leg side. Sometimes it's happening when the bowler is trying for the Yorker and delivery. Now they're just missing the line. The left and right combination. Oh, this time it's going to be a one more delivery which is finished by the umpire. This is all happening, isn't it? When it's going to be left and right combination, the same line, it's definitely is a good line for the right-hander batter. But if it's a left-hander batter on his strike, the same line will going to be a wide one. And that's the problem when you're having a left and right combination for the bowler. 6 on the board. 7 on the board. Again, one more lovely delivery. Loki quickly getting the line and length. Seeing that the left-hand batter is on strike, it was a perfect line to ball. Line and length to ball to the left-hand batter. That was just moving from the good length spot. In swing, but definitely it's going to be out swing for the left-hand batter. Oh, this time opportunity is missed out. Wicket keeper missed that absolutely straightforward chance. Oh, by call by umpire. That means nothing has happened. They just
Looks like it's excitement rather than there's a confident. This ball is missing everything. There may be Lokesh Puthar thought it might be the wicket for him in the form of bowled out. But ball is absolutely having an extra bounce, beaten by the pace and the flight. One more over completed. Two gone. It's 8 on the board. Team EG India slowly try to get runs in the power play over after that slow start in the first over. They got some runs in the second over in the form of extras. Thank you. And thank you very much, Sachit, our physio. Has done a great job here for our wicket keeper. The finger, which has absolutely has got a little bit injuries, dislocated, but is absolutely he did a great job. Sachit, thank you very much. And here in the second over, third over, in fact, bowled him, cleaned him up, gone. Oh my goodness, looking for the blind stroke, isn't it? It's not a kind of delivery. Wanted to go for the expansive drive. This is a kind of delivery. Have to give some kind of respect. That was a sharp delivery, which is turning with the flight off spin, orthodox off spin. Bowler is in action, and you just wanted to go for the big shot against the spin. Pays the penalty for that. The left-hand batter departs. Varun gone. Both the opening batters are back in the pavilion. They are in a deep in trouble now. Team EG India, they lost the second wicket at the score of 8 on the board.
The new batter in is a jersey number 15, walks towards the middle. AG India have to get some good partnership. They wanted to get some good score here. AJ Hospital captain winning the toss, elected to ball first in this hot condition. Sumant is a new batter in. Shishir has got a breakthrough, and the first delivery of the is over number second and third over of the innings of team AG India. Sumant will going to take the strike. And a very attacking field set here. The quite understandable under pressure situation. Lost 2 wickets. They want to put some more fielders, closing fielders there. They're calling the D fielder into that unorthodox positions. Slip is in a position. This time again outside the line of off stump, and the batter the fresh leg, and wanted to get the ball on the offside region. Sumant missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did a rest back to bowler. Again off the back foot, nicely steers that one down to backward point region for a single. With the addition of that single, the scoreboard now moves on to 9 on the board for the loss of 2 wickets. And that brings Sudhindra into strike now. Shishir balls a slower one, and through the air, slower through the air. Nicely negotiated by Sudhindra. Nicely behind the line of the ball, off the toes. Plays it down to short mid wicket for an easy single. With the addition of that single, scoreboard now moves on to double figure. 10 for 2 in the over number 4 is in progress. Third is in progress, in fact. Oh, lovely delivery, very close. That outside edge of the bat. The wrong one there from the bowler. Shishir as he bowled leg cutter in the negation quite effectively. Again, nicely played it down to short cow point region for a easy single. With the addition of the single, scope and moves on to 11 on the board. Good over, tidy over there from Shishir. After completion of over number 3, the EG India 11 for loss of 2 wickets. Cpl T20 Corporate Premier League 2025 is under progress, and match number 2. And the EG India playing their first match, and AJ Hospital they're playing their second match. They lost against MCF in the morning match. It's a close match, in fact. At one stage we are expecting some nail-biting finish for the match, but unfortunately when they lost the wicket of Lokesh Puttur, the match is slowly turned around. Oh, this time Flum, absolutely Flum in front of wicket. No doubt at all. Even in a closed eyes, you can give it out, because that was a Flum. Absolutely Flum in front of wicket. The ball is almost straightening, and the batter just wrong technique by going back. The face bowling, where Loki Puttur, everybody knows, is generating some extra pace in his bowling. The going on to the back foot means you are asking for trouble, and finding himself right in front of middle stick. Wicket number 3 gone. It's 11 for loss of 3 wicket, all short of trouble here for the team EG India. They're not able to get the partnership here, which is badly required for the team EG India. The new batter in is Devdas. With the jersey number 09, walks towards the middle. Both opening bowlers did a great job. Spin and face attack in the power play, doing the job here for the team AJ Hospital. If they wanted to remain in the competition, it's a very important for the team AJ to get their victory.
Loki to continue from the commentary box end. In the offside region, short mid off, the fielder down at cover point, backward point, now slip in position, 2 slips now. A very attacking field set, 2 slip here for the new batter. The right strategy from Lokesh. Appeal from back-to-back 2 wickets. Once again, too far across the line of the delivery. Of course, when you are standing, taking the middle stump guard, and you are standing in the middle leg stump, and your initial movement, the initial movement before you are the bowler going to deliver the ball, the initial movement towards the off stump, you are almost in the middle stump, your front foot. This is a very dangerous tactics from the batter to little bit shuffled across the line of the delivery. And once you miss the ball from that line, you have to connect the ball to your bat. If you miss the bat, then you will definitely flump. The back-to-back 2 wickets here for Lokesh put more pressure onto the batters of team EG India, and Lokesh Puttur is on hat-trick. It might be a first hat-trick of the tournament if Lokesh will going to get the wicket one more here. 2 consecutive wickets in the form of leg before wicket. His addition there for umpire Viraj. The new batter in is jersey number 33. Ansar have to bat well, and first thing you have to do here is to prevent the hat-trick from Lokesh Puttur. He is absolutely firing from the commentary box, and 2 consecutive excellent deliveries. Perfect delivery to ball to the fresh leg. And everybody knows that when the batters are walking towards the middle, is a nervous legs. Because the condition which is what EG India has got here, they lost to 4 wickets very quickly for just 11 runs. Ansar takes a fresh guard from umpire and get ready to face Lokesh. Will going to try for the hat-trick. Here you go. Oh, nicely played it down to deep gully region. Nicely negotiated by the batter Ansar. He is absolutely denying the hat-trick from Lokesh. Once again, good stuff there from Lokesh, targeting on the midland off stump. But Ansar is absolutely came onto the front foot and played it very nicely towards the gully, deep gully for a single. 12 on the board for the loss of 4 wickets. Sudhindra is on strike. Again, that ball is almost going over the leg stump in the negation as Sudhindra shuffled across the line of the delivery. Pitched on the middle stumps, little bit in swing delivery. It's going around the leg stump of the batter. The wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. Lokesh again away from us. Again, played it very nicely using the pace and opening the face of the bat, and nicely generated down to backward point region for a single. With the addition of that single score, but now moves on to 13 on the board. That brings Ansar into strike now. Good over so far from Lokesh. 2 wickets and quite over. Swings and missed, and just wanted to go the expensive extra cover drive. And beaten by the pace, and a good over. The wicket taking over, which is comes in India from Lokesh. 4 overs completed after completion of 4 overs. Searching for the right track, struggling in the middle. EG India are 13 for 4. No change in bowling. The bowler will go into continue. Shishir, the spinner. Oh, the wicket keeper missed it. Even the slip card on fielder, it might be that. Looks like
The opportunity for catch there for the slip fielder. Sudhindra absolutely beaten by the flight of the delivery. Almost like Ashwin's bowling action we can see. The same bowling action we are noticing here. Ravichandran Ashwin, the Masters class off spin, the bowler from Team India. Again, played it down to a short cover point region. One more single, 14 on the board. And in NMPT cricket ground, we are witnessing not a drone camera, but instead a helicopter, the flying. Again, played it very nicely. The gap towards a deep long on. No one there in the deep. That will going to be a burst boundary for EG India. Answer has got the boundary at last, breaking the shackles. The scoreboard now moves on to 18 on the board for the loss of 4 wicket. As the Shishir not happy with that fielder, but the ball is a went in the gap at the fielder is inside the ring. Now there's dropped into deep long on now after that boundary. Deep square leg and deep long on. The fielders are in the deep. Bowled him. Again is absolutely misjudgment by the batter. Just he wanted to go for the cut shot, but the ball is almost very close to his body. Not that much of room to play the cut shot. Pays the penalty. Answer. After that, he played a boundary in the previous ball. Back in the pavilion. The 5th wicket is gone. It's 18 for 5. The team are in more trouble now. EG India. Thank you, DJ, and Answer back in the pavilion after scoring of 5 runs. He's got a boundary in that previous delivery, the wicket take, previous before the delivery of which is boundary which is came from the bat of Answer. The very next delivery, Shishir produced the wicket here for the team, and both opening bowler shared that 5 wickets, 3 wickets for Lokesh, 2 wickets for Shishir. Rohan, the new batter in. Again, they played it down to mid-off region. In fact, mid-on region. The mid-off fielder have to cover that little bit. One more addition. With the addition of that single, scoreboard now moves on to 19. So over number 5, which is comes to an end after completion of 5 overs. EG India searching for the right track, struggling in the middle. It's 19 for 5. And before the next over will going to start here, the time to change in commentary box. It's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश. First ball comes from 6th over.
पहले गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, कवर पॉइंट पर गेंद पहुंचे, 1 रन का इजाफा हो चुका है। 5 विकेटें ईजी इंडिया इस वक्त हो चुका है। और जहां तक सवाल है, टॉस जीतने के बाद जो बैटिंग बल्लेबाजी करने का निर्णय उनके कप्तान ने लिया था, इस वक्त कुछ हद तक गलत साबित हो चुका है, लेकिन यहाँ पर उस निर्धार को सही साबित करने का मौका अभी भी है, क्योंकि 5 विकेटें सुरक्षित है इस वक्त ईजी इंडिया के पास और 15 ओवर का खेल अभी भी बाकी। और लोकेश अपनी ओर के अगली गेंद, टॉप एज, मौका, आसान सा कैच कवर पॉइंट पर, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। तो इस वक्त बल्लेबाज सुधीर रहते गेंद को इस वक्त खेलना चाहते थे, लेकिन he just played that one with the wrong line and he just paid the penalty for that। और बल्ले के टॉपेज पर गेंद टकराने के बाद कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में पहुंची, और इसी के साथ छठा विकेट यहां पर गिर चुका है। ईजी इंडिया लुकिंग डीप इन ट्रबल एंड अ फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम द बॉलर्स ऑफ एजे हॉस्पिटल और शिशिर और लोकेश साथ मिलकर इस वक्त ईजी इंडिया के 6 विकेटों को प्राप्त कर चुका है। निश्चित रूप से एक बेहतरीन आरंभिक शुरुआत गेंदबाजी के जरिए वो दे चुके हैं। न्यू बैट्समैन नंबर 8 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। सुशांत नए बल्लेबाज और लोकेश 4 विकेट अब तक प्राप्त कर चुके हैं। सबसे सफल बॉलर यहां पर साबित हो चुके हैं अब तक एजे हॉस्पिटल के लिए। अगली गेंद, ये गेंद फुल टॉस गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। इनफैक्ट गेंद पहुंचे सिली मिड ऑन पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 20 रन 6 विकेट के नुकसान पर एब्सोल्युटली टेरिबल टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ ईजी इंडिया। और जहां तक एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक पार्टनरशिप इस संकटमय परिस्थिति से उभरने के लिए। और लोकेश पटकी हुई गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद को हल्के से ऑन साइड पर खेलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 14 ओवर इस ओवर के बाद और फेंके जा रहे हैं बाकी। और यहाँ पर इस वक्त ईजी इंडिया के बल्लेबाजों के सामने यह मुद्दा ठहरता है कि वो क्रीज पर जमने की कोशिश करें, जितने ज्यादा ओवर हो सके उतने ज्यादा ओवर तक, और एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप निभाने की कोशिश करें। और इस बीच लोकेश एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए अगली गेंद लेकर तैयार। और धीमी गेंद थी, जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट मोमेंट। गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। अपील जरूर हुई, लेकिन यहाँ पर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर गेंद, जस्ट चेंज ऑफ पेस मेड बाय बॉलर लोकेश, बोल्ड स्लो डिलीवर इन दिस ओवर। और इस गेंद का पीछा करना चाहता चूके, लेकिन सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 20 रनों के ऊपर, 20 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। लोकेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, पटके हुई गेंद कट करना चाहा, एक्स्ट्रा क्विक, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप। फैंटास्टिक ओवर, वन मोर फैंटास्टिक ओवर इन AJ Hospital's point of view came to an end, and after 6 overs, still the struggling time continuing here for the batsmen of AG India. They managed to score only 20 runs on the board for losing 6 wickets, and now just take out 4 wickets kept intact. और देखते हैं बचे हुए 4 विकेटों की मदद से बचे हुए 14 ओवर में ईजी इंडिया के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। मैच नंबर 2 CPL T20 कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग 2025-2025 इस वक्त एक शानदार प्रगति करता हुआ सुंदर से विशाल से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मैदान पर NMPA के। और निश्चित रूप से इस श्रृंखला का शानदार तरीके से प्रस्तुति की है SM क्रिकेटर्स ने। और शिशिर अपना चौथा ओवर लेकर तैयार।
perfect leg cutter deliver this time. The ball kept like the last movement. Back foot पर जाकर गेंद को कट करना चाहा था. गेंद के लोनेस को इस वक्त समझ नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. बेहतर गेंदबाजी इस बार. Just got it bottom edge on that. Just gone for a slog sweep shot at the last moment. Not connected that one properly. और गेंद बदले के निचले हिस्से पर बॉटम एज पर टकराने के बाद शॉट फाइनल पर फील्ड की जा चुकी है. रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. सिर्फ 20 रनों पर 6 विकेट गिर चुके हैं इस वक्त ईजी इंडिया के. फ्लाइटेड रक्षात्मक तरीके का खेल. जस्ट गोस ऑन टू द फ्रंट फुट, प्लेड दैट वन डिफेंसिवली इनटू द हैंड्स ऑफ बॉलर और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया गया. इस वक्त गेंदबाज शिशिर द्वारा और अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार ड्राइव कर दिया. लॉन्ग ऑन पर गेंद पहुंची. फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए जस्ट सिंगल ही गॉट एंड विद दैट सिंगल फ्रॉम द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 21 now from long time. 20 to 21 the score is for losing 6 wicket in the over number 7 in progress. एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज एजे हॉस्पिटल के और इस बीच शिशिर. Again beaten. This time flighted one. गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहता चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. बेहतर गेंदबाजी. क्रीज पर टिकने की पूरी कोशिश करते हुए क्रीज पर भी ये मौजूद है दोनों बल्लेबाज रोहन और सुशांत. और टिर्रफिकर वंस अगेन टिर्रफिकर फ्रॉम द बॉलर. परफेक्ट लेग कटर और इस बार पूरी तरह गेंद पर बीट हो गए एक बार फिर से बल्लेबाज. बेहतरीन एक और बेहतरीन ओवर की समाप्ति और 7 ओवर के बाद अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा मुश्किलों का सामना करते हुए बल्लेबाज ईजी इंडिया के सिर्फ 21 रन जोड़ चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर. 21 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट स्कोर्ड बाय द बैट्समैन ऑफ ईजी इंडिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर्स. एब्सोल्युटली अ टेरिबल टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर देम. तो लोकेश अपना चौथा ओवर प्रारंभ करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार. पटके भी गेंद टॉप एज मौका लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे गली क्षेत्र पर. रन से बल्लेबाज नहीं लेना चाहते हैं इस गेंद पर. शॉर्ट गेंद थी. गेंद को इस वक्त स्कूप करना चाहता पंजों पर उछलते हुए लेकिन अंतिम एक्शन में गेंद टॉप एज पर टकराई लेकिन खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाती हुई गली पर रन से नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 21 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर. लोकेश 4 विकेट अब तक प्राप्त कर चुके हैं अपने ओवर की चौथे ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पटकी हुई गेंद एक बार फिर से कट करना चाहा चूके पूरी तरह काफी तेज रफ्तार के साथ गेंद पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 21 रनों पर. रोहन सामना करते हुए रोहन और सुशांत इस वक्त एक पार्टनरशिप यानी साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए और लोकेश एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद. इस बार ड्रॉप दैट वन. ही ड्रॉप दैट वन और शायद गेंद आफ्टर फर्स्ट बाउंस इस वक्त आई थी लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से लपक नहीं पाए और यहाँ पर रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. एक वक्त ऐसा लगा था गेंद फुल टॉस पर आई थी लेकिन नहीं. अंतिम क्षण में गेंद अपने बल्ले के स्ट्रोक्स को रोक लिया था. स्ट्रोक्स को इस वक्त काट दिया था इस वक्त और गेंद सीधे पहुंची थी पॉइंट फील्डर के हाथों में. और एक बार फिर से लोकेश अपने 5वें विकेट की तलाश में. ये गेंद परफेक्ट लेग कटर गेंद थी. अंतिम एक्शन में कुछ हद तक धीमी गेंद. जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट मोमेंट. बॉल स्लोअर डिलीवरी अ लिटिल बिट कंपेयरिंग टू द प्रीवियस वन और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 21 रन. रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर करते हुए बल्लेबाज ईजी इंडिया के और लोकेश इस वक्त एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार.
इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गली पर गेंद, मिसफील्ड इस वक्त, और गेंद इस वक्त पहुंचे बैकवर्ड थर्ड मैन पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, लेकिन इससे पहले है बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका, कुल मिलाकर 22 रनों पर 22 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। और जहां तक सवाल है, रोहन और सुशांत जो क्रीज पर मौजूद है, दोनों बल्लेबाज पारी की भागदौड़ को इस वक्त संभाले हुए, और इस बीच लोकेश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, लंबे रनअप के जरिए अपनी ओवर की अगली गेंद। धीमी गेंद, फुल टॉस के तौर पर गेंद को खेलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाया, नॉट क्वाइट मिड विकेट है द लास्ट मोमेंट, सिली मिड ऑन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, ऊपर की समाप्ति, एक और सफल ओवर अगर एजे हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें सिर्फ 1 रन लोकेश ने प्रदान किया, और 8 ओवर के समाप्ति के बाद अभी भी ईजी इंडिया अपनी सही राह को तराशता हुआ, जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक, इट्स 2-2 for 6। दोपहर का वक्त लगभग 31 से 32 डिग्री सेल्सियस इस मंगलूर के पणबूर का तापमान इस वक्त दाखिल हो चुका है। भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी इस वक्त करते हुए, और सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ, और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ते हुए। और आज का दूसरा मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट CPL कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग 2025 T20 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के दरमियान इस दूसरा मैच का प्रथमार्ध, पहली पारी इस वक्त प्रगति पर। So bowler starts the fresh proceedings from the commentator box end. पहली गेंद कट करना चाहा, चंदन गेंदबाज थे जो कि ऑप्शन से कुछ बाहर की और गेंद उन्होंने फेंकी, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। 9वां ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है, और चंदन एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। 9वां ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका, अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चंदन तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, वाइड का इशारा, गेंद बल्लेबाज के पहुंच से बाहर, और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, इस बीच वाइड का इशारा हो चुका है। मिसिंग 2 फॉर द ऑफ स्टंप द लास्ट मोमेंट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है, कुल मिलाकर 23 रनों पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 9 इन प्रोग्रेस। चंदन इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा, कंसेक्यूटिव वाइड्स फॉर द बॉलर, ही जस्ट सर्चिंग फॉर हिज राइट लेंथ एंड लाइन एट द सिचुएशन, बॉल 2 कंसेक्यूटिव वाइड्स, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर, 24 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। चंदन अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन कवर पॉइंट पर रन से नहीं मिलेंगे। 2 कदम बल्लेबाजों ने जरूर आगे बढ़ाए थे, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया, देखा कि गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया है, और स्कोर यहां पर रुक चुका है अब 24 रनों पर, 24 द स्कोर बोर्ड स्टेज नाउ। चंदन एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, अगली गेंद। इस बार उछाला है गेंद को इनटू द गैप एज वेल, कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त हो गए, कोई फील्डर वहां पर नहीं, और मिड ऑफ से फील्डर दौड़ कर आए, वाइडिश मिड ऑफ पर, लॉन्ग ऑफ पर, जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था यहां पर 2 रन प्राप्त करने का। बेहतरीन स्कूप शॉट इस वक्त रोहन के बल्ले से लगता हुआ, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर, 26 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 9 इन प्रोग्रेस। और चंदन फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, बल्लेबाज रोहन सामना करने के लिए तैयार। Left it, this time chance for the point fielder, he won't get that one. गेंद उनके पहुंच से बाहर, और जब तक डीप बैकवर्ड स्कोर में थर्ड मैन फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 1 रन प्राप्त करने का। ऐसा करना पड़ेगा, जस्ट लीनिंग फॉर दैट एट द लास्ट मोमेंट, गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को उछाला था, नॉट क्वाइट मिड विकेट,
लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद इस वक्त पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से गुजरते हुए और एक रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 27 नाउ और चंदन इस बार ड्राइव किया, गेंदबाज की बाईं ओर से मिड ऑफ पर बेहतर फील्डिंग, लेकिन एक रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाया। हालांकि नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज थोड़ी देरी से दौड़े थे जरूर, लेकिन एक रन पूर्ण करने में सफल और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर और एक लंबा ओवर इस वक्त प्रगति पर गेंदबाज चंदन द्वारा। 2 गेंदें अभी भी बाकी उनकी इस ओवर में और अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार चंदन। 2 wides bowled by Chandan in this over. 1 ball left. Chandan last time in this over. Isbat just gone for a wide swing, not succeeded. The ball gets some extra bounce. And after beating the batsman's bat, it straight went into the hands of the wicketkeeper. 9th over has been came to an end in EG India's innings. Still, the batsmen of EG India searching for the right track. After 9 overs, it's 28 for 6. Ajay, the bowler is now brought into the attack. और फील्डिंग में वो जमावट करते हुए नया ओवर उनका प्रारंभ होता हुआ और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए और गेंदबाज अजय अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। इस बार कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद पंजों पर उछलते हुए, लेकिन अंतिम अक्षर में गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए ऑफ स्टंप से कुछ बाहर की ओर निकलती हुई चूके पूरी तरह बल्लेबाज और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। एक बेहतर गेंद के साथ गेंदबाज अजय इस वक्त गेंदबाजी की शुरुआत कर चुके हैं। इस बार गेंद को ऑन साइड पर मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट पर गेंद जाती हुई। थोड़ा सा दौड़ इस वक्त लगाना पड़ रहा है डीप मिड विकेट फील्डर को, लेकिन जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का और बल्लेबाज के पास काफी समय था कि इस गेंद को ऑन साइड पर खेल सके बैकफुट पर जाने के बाद। और इस बीच अजय एक बार फिर से कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद, ड्राइव कर दिया गेंद को खूबसूरती के साथ, लॉन्ग ऑन पर गेंद पहुंची, जस्ट अ सिंगल ही गॉट फील्डर आफ्टर इट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर। अब रन से कुछ हद तक इस यहाँ पर बनते हुए सिंगल्स के रूप में और धीरे धीरे क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज एक साझेदारी इस वक्त निभाते हुए। अगली गेंद बेहतर गेंद थी, लगभग ब्लॉक होल पर टिप्पा खाती हुई, रक्षात्मक तरीके से गेंद की तेजी को देखते हुए गेंद को हल्के से वहीं पर दबा दिया बल्लेबाज ने और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 30 रनों पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट और अजय अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार। और जस्ट परफेक्ट जजमेंट के साथ इस गेंद को छोड़ दिया अंतिम अक्षर में, गेंद के लाइन को पढ़ते हुए गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर गेंद थी, बेहतर लेफ्ट बल्लेबाज द्वारा और एक बार फिर से गेंदबाज अजय तैयार। रक्षात्मक तरीके का खेल, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त। 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31 रनों पर। So 31 for the loss of 6 wickets. Slowly and steadily, this partnership is now building up between Rohan and Sushant. और EG इंडिया को जहां तक उनका एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, ये दोनों बल्लेबाज रोहन और सुशांत को अगले 5-6 ओवर तक टिकना इस वक्त बेहद जरूरी बन चुका है, जहां तक एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप का सवाल है। और 11वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और इससे पहले कि 11वां ओवर यहाँ पर शुरू हो, आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए एक बार फिर से अंग्रेजी में मेरे काबिल दोस्त
सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, Gopi. Thank you, DJ Ajit. And we are into the 11th over now. 10 overs completed. The team AG India still they're searching for the right track after completion of over number 10. They're the 31 for the loss of 6 wicket. And still 10 more overs remaining in their innings. And wait and see how well this batter will going to get some runs. A partnership which is slowly building up between Rohan and Sushant. And from the far end, highway end, the bowler brought into attack, Avin in his first over. Oh, this time lovely delivery, little bit extra bounce here for Avin as he got the nice flighted delivery outside the line of off stump and no run scored. Scoreboard remains on 31 for the loss of 6 wicket. Avin absolutely is feeling some the same problem, the cramp. Playing the back-to-back matches, so that in this hot condition, it's always going to be the big ask for the players. If you are a regular player, I think it's not a big issue, but the lack of match practices in this condition, playing the back-to-back matches is always going to be challenging for the players. Scored 31 for the loss of 6 wicket. EG India winning the toss. They elected to field first. If elected to bat first, in fact, against team AJ Hospital. And it was a shackling start in the beginning. The starts with the 2 ducks, already 3 ducks in that batting performance of the team AG India. But these 2 batter, they're absolutely after that 6 wickets fallen. The bowlers dismantling the batting department of their opposition. Lokesh Puttur picking up 4 wickets, and Shishir, the spin bowler, is also picked up 2 wickets from his 5 overs. Both the bowlers bowled 5 overs each, sharing that 6 wickets between them in 10 overs. So Avin looks like after getting some first aid and quick relief spray is implemented, and is looks like everything is fine for him to continue the bowling. Avin
will going to continue, and Shishant will going to take the strike. Ball him, clean him up. Shishant just wanted to play that one off the back foot, but it's absolutely no chance for him to survive from the delivery from Avin. The partnership what we are talking about is slowly building up between Shishant and Rohan, and Shishant departs now. Just to try to play that one off the back foot, pays the penalty for that. It's a 31 for 7 now, EG India. Thank you. Shishant departs after scoring 3 runs after playing the plenty of deliveries. Vijit is a new batter in. Avin balls to Vijit, played it down to short mid wicket. Rohan, without watching the fielder, just wanted to get the single. No chance of any run. Dot ball. Again, typical the reaction for the number 9 batter Vijit, as he just wanted to play across the line. Cross batted stroke attempted. Again, almost going to be one more wicket in this over for Avin. Seven wicket back in the pavilion, 31 only the score for EG India. This time appeal for leg before wicket, but certainly the ball going to miss the stump. Good over, wicket taking over which is comes to the end here for Avin after completion of over number 11. The maiden over from Avin. The maiden wicket as well for Avin. It's 31 for 7, team EG India. All-rounder Ajay brought in the attack from the highway end. If second over. To Rohan, lovely shot. This is the first confident shot we can see here from the batter Rohan. Played it down to deep extra coverage, and before the fielder from deep cow point, almost covering the ground. Long way to go for him to cover the ground from long off cover to deep extra cover. Ample time for the batter Rohan to come back for the second. With that couple of runs, Kobanda moves on to 33 on the board. Ajay. Again, almost missing the line. Gone far outside the line of leg stump and wide call by umpire. With the addition of that extra score, but moves on to 34 for the loss of 7 wicket. Ajay. This time it's opportunity. Who will going to take this? And long on fielder taking a wonderful catch, isn't it? But at one stage it looks like he has got no control whatsoever. But he managed to keep his eye on the ball till the last moment, off balance, but still he's got two hands in the right position.
And the wicket number 8 is back in the pavilion. Excellent catch has been taken. Thank you, DJ. And wicket, this one more settled batter is back in the pavilion. Rohan is the only the batter has got a double figure from his bat. Is departs. Good catch taken by Darnesh in the deep. They're almost covering the ball, covering the ground from mid wicket to long on to complete the catch. The new batter, Akhilesh. Wide call by umpire, rightly so. Little margin for error when you try to get the ball around the legs of the batter. Miss the line completely. No run, 1 run added to total. 35 on the board for the loss of 35 for the loss of 8 wicket. One more lovely delivery outside the line of off stump. Typical number 10 batter Akhilesh reaction for that ball, which is he wanted to get that one off the front foot to get that extra cover, extra lip cover drive. Again, lovely flighted delivery outside the line of off stump, but completely beaten. Wicket keeper behind the stump did the rest. Back to bowler. 35 for 8. AJ India are looking in deep trouble. Oh, drags that one into the stump. They wanted to go for the cut shot, but ball is not away from his bat. It's very close to his body. And tried to cut the ball, and of course he himself drags the ball into the stump. And Ajay picks up his second wicket in this over. Ninth wicket of AJ India back in the pavilion. 35 for 9. Last pair in the middle for AJ India, and wait and see how AJ India will going to get the runs here, but they desperately needed some runs here. 35 only in the scoreboard. They got only last pair in the middle. Ajay is looking for his third wicket in this over. Picked up a 2. They wanted to bundle out their opposition as quick as possible. Shrajan. Almost and appeal for leg before wicket, but the ball is missing everything. Umpire saying the ball is absolutely has got a little bit extra bounce. Height is a factor. Over number 12, which is comes to an end. It's a 35 for 9. AJ India.
The over number 13, which is started. A win to continue from the far end. First ball, which is a dot one. Second delivery. Right arm over the wicket balls. Full toss and played it. Exquisite full shot down to deep square leg boundary for 4, and the ball went like a razor bullet. One more single with the addition of that single score number down to 40 on the board. The runs are coming after a long time for the team EG India. A fantastic cricket tournament is in progress, and we are witnessing some good crowd here. And along with that, we are having a special guest for this CPL, the specialist in underarm cricket, Mr. Unni and Chami, in our commentary box and enjoying the game of cricket. Welcome for him on behalf of organizers and on behalf of all cricket lovers. Warm welcome for the specialist of underarm cricket, Unni and Chemi, here in our commentary box. So one more dot ball. A win to continue. Copybook style defensively played. Not for run. Sajan. The friendly atmosphere in our committee box. Along with Jairam Vijay, we have Keshav Pujari, the organizer, enjoying the afternoon after lunch break. Plum in front of wicket. That's it. The bundle out. EG India are the bundle out for 40. Exactly the 40 runs they scored. And they set a target of 41 to win the match for team AJ Hospital. It's been outstanding bowling performance from AJ Hospital. And what we are seeing that the bowling of the team AJ Hospital absolutely dominating. And especially the highest wicket getter of this match, Lokesh Puttur, has picked up a 4. Haviz also picked up a wicket. Ajay picked up 2. The Shishir picked up a 2. And at last, Avin is also picked up 2 wickets in his bowling. Altogether, it's been outstanding bowling performance, dismantling the batting department. Meanwhile, it's a time for inviting our chief guest here. I request Mr. Unni and Chemi, kindly request you please to go to the presentation dais and receive the memento from our organizer. And Jairam Vijay will go into present memento for Unni and Chemi. And welcome for CPL T20, the Corporate Premier League 2025, which is proudly presented by SM Cricketers. The T20 Letter Ball Cricket Tournament in this most beautiful NMPA Dr. B.R. Ambedkar Cricket Stadium here in Panambur. And time for the presentation of memento for our 2 chief guests. Daimadi Unni ಮತ್ತೆ Chemi presentation ಡೈಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. I request Deepak Ramesh, please present the memento for Unni. ದಯಮಾಡಿ ಉನ್ನಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025. ಹಾಗೆ ಚೆಮ್ಮಿ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚೆಮ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ Keshav Pujari, the one more organizer of this cricket tournament, the pillar of this cricket tournament, will going to present the memento from Chemi, one more the fantastic performer in underarm cricket, the presence in this Corporate Premier League 2025. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
So we'll take a short break in our commentary box. And after short break, we are going to start the innings of the team AJ Hospital. Not a big total to chase down. Only 41 they need to get to register their first wicket. But a lot of hard work is required from the bowlers of AJ India if they wanted to win the match. So wait and see before the match will go into innings will go into start of team AJ Hospital. I request Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you.
I request the extra player of EG India please to be reported here to tell the player's name. EG India ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್. Right, the target is 41 for AJ Hospital. At batted first, EG India just bundled out for exactly 40 runs in 12 plus overs, and now they set a victory target of 41 for AJ Hospital. 41 they have to score in the stipulated 20 overs. That means the required run rate. Required run rate for them is just over 2 runs per hour. That means in exactly calculation it's going to be 2.05 runs per hour. They have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and their first ball of their innings is now coming up outside the off stump, and गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. तो बाएं हाथ के गेंदबाज वरुण गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं. शरण इस वक्त सामना करते हुए, जबकि नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज ध्रुव इस वक्त मौजूद है, और शरण सामना करने के लिए तैयार. एक बार फिर से वरुण की गेंदों का. वरुण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन गेंद को ठीक तरह से उछाल नहीं पाया और गेंद सीधे पहुंची, वहीं पर गिर गई. विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया. रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. तो जहां तक 40 रनों के स्कोर के अंदर रोक कर रखने का सवाल है एजे हॉस्पिटल के बल्लेबाजों को, तो यहाँ पर ईजी इंडिया के गेंदबाजों को एक घातक का, ऐसा कहना पड़ेगा, चमत्कारी गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी अगर उन्हें 40 रनों के अंदर रोक कर रखना है एजे हॉस्पिटल के बल्लेबाजों को. Yeah, this is an line. This is an absolutely fantastic line. Much straighter one. गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज वरुण की, और एक बार फिर से वो गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए अगली गेंद लेकर तैयार. तो ध्रुव जो कि अपने जूते के फीते को इस वक्त बंधवाते हुए सामने टीम के खिलाड़ी से, और निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतर क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है. ये गेंद एक बार फिर से गेंद को उछालना चाहता, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाया, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के 7 रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. 1 रन बिना किसी नुकसान के ये हॉस्पिटल. और इस बीच वरुण ने एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए बाएं हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. बाएं हाथ के बल्लेबाज शरण ने सामना करते हुए ये गेंद उछाला, इस वक्त टॉप एज पर मौका हो सकता है, लेकिन नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए फील्डर, और गेंद इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में जाते हुए, और काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब तक फील्डर फील्ड करे, सिर्फ एकमात्र रन यहां पर बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं. बल्लेबाज ये देखते रह गए कि गेंद सीमा रेखा को पार करेगी या नहीं, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद सीमा रेखा के अंदर रोक ली गई, और बल्लेबाज को सिर्फ 1 रन इस गेंद पर प्राप्त हुआ, और इस 1 रन के साथ बस स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर. 2 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और वरुण इस वक्त गेंदबाजी करेंगे. दाहिने हाथ के बल्लेबाज ध्रुव जो कि सामना करने के लिए तैयार, और पावर प्ले जो कि इस वक्त जारी. और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो वरुण ये गेंद ऑफ द टोस, गेंद को खेलना चाहा, जोरदार अपील जरूर, लेकिन गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर. आई थिंक इट्स ऑफ द बैट, इन फैक्ट इट्स गॉट अ डिफ्लेक्शन ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर. 3 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज वरुण इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ, माफ कीजिए, बाएं हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज शरण के लिए अंतिम गेंद. फुल टॉस, हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त. एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जब तक फील्ड हो, बल्लेबाज ने कोई रन यहाँ पर नहीं लिए. पहले ओवर की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति. 3 रन सिर्फ गेंदबाज वरुण ने प्रदान किए, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद एजे हॉस्पिटल 41 रनों के आसान से लक्ष्य का पीछा करते हुए
20 ओवर में अपने पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। स्टेडी स्टार्ट फॉर द बैट्समैन ऑफ एजे हॉस्पिटल। It's 3 without loss after completion of first over, chasing the victory target of 41 in 20 overs. और जहां तक सवाल है दूसरे ओवर का, विजेत नए गेंदबाज नया ओवर प्रारंभ करते हुए ध्रुव इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। पटकी हुई गेंद, रक्षात्मक तरीके का खेल, absolutely backward defensive stroke played by the batsman at the last point, just watching the line of that ball and there is no possibility of any run. और निश्चित रूप से प्लेयर्स डगआउट जो है इस वक्त एजे हॉस्पिटल का, उस प्लेयर्स डगआउट से कुछ हद तक शोर आवाजें यहाँ पर सुनाई देते हुए टीम के अन्य खिलाड़ी इस बार ऑफ द टोस गेंद को फ्लिक कर दिया खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर लेग पर। कोई फील्डर वहां पर नहीं, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन आसानी के साथ यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। ऑफ द टोस गेंद को मोड़ दिया था इस वक्त और प्लेयर्स डगआउट से इस वक्त तालियों की आवाज, सीटी की आवाज सुनाई देते हुए टीम के एजे हॉस्पिटल के अन्य खिलाड़ी प्लेयर्स डगआउट से अपने क्रीज पर मौजूद है। दोनों बल्लेबाजों का मनोबल यहाँ पर बढ़ाते हुए तालियों के साथ, आवाजों के साथ, सीटियों के साथ। और इस बीच गेंदबाज विजित एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, पटकी हुई गेंद, बैकवर्ड डिफेंस अंतिम क्षण में गेट्स अ मिक्स्ड बाउंस एट द लास्ट मोमेंट और गेंद को रक्षात्मक तरीके से इस वक्त खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट। शॉर्ट पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है, नो नीड टू पैनिक ऑल एट दिस सिचुएशन। लक्ष्य काफी छोटा और इसको मद्देनजर रखते हुए दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। इस बार ऑफ द टोस गेंद को मोड़ दिया इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका, कुल मिलाकर 6 रनों पर 6 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। ये दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए शरण और ध्रुव, और इस बीच ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार विजेत। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि क्रीज पर मौजूद था और इसकी वजह से हर गेंद के बाद फील्डिंग में जमावट बदलाव लाते हुए कप्तान यहाँ के ईजी इंडिया के। इस बार उछाला लंगों पर, लेकिन बेहतर फील्डिंग, फैंटास्टिक फील्डिंग मेड बाय द मिड ऑफ फील्डर। आफ्टर फर्स्ट बॉल गेंद उनकी तरफ आई थी लेकिन अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए एक बेहतर फील्डिंग उन्होंने की, गेंद को रोका और आखिरकार कोई भी रन इस गेंद पर बल्लेबाज को प्राप्त नहीं हुआ, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर। दूसरा ओवर प्रगति पर और गेंदबाज विजेत एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार just gone for drive on the offside, not succeeded. The ball gets a bounce, beaten completely by that pace, and the ball went into the hands of wicketkeeper. Second over has been came to an end. 3 runs came from this over. 3 runs came from the first over, and after 2 overs, steady start for AJ Hospital. It's 6 for none after 2 overs. Varun starts a fresh proceeding. Second over from him. First ball comes. इस बार लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त मोड़ दिया, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर। 7 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज वरुण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ध्रुव, माफ कीजिए शरण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार।
ये गेंद, oh good one, terrific one from the bowler. Varun just missing outside the off stump, just wanted to play that one on the offside by the batsman Sharan, beaten completely by that pace. और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 7 रन। शायद बल्लेबाज बल्ला दूसरा बैट के लिए इस वक्त इशारा करते हुए प्लेयर्स डकआउट की ओर। ओह गुड वन, ओह विकेट कीपर मिसेस और गेंद जाती हुई इस वक्त फाइन लेग की दिशा में, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, थोड़ी सी मिस फील्ड है, लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल बाई के रूप में। बेहतर गेंद थी और इस गेंद को बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी समझ नहीं पाए, और जब तक गेंद को फाइन लेग पर बैकअप किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। 8 ऑन द बोर्ड, येट टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और इस बीच गेंदबाज वरुण ध्रुव के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। हल्के से गेंद को दबा दिया अंतिम क्षण में, बेहतर गेंद थी और आखिरकार रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। ये दोनों बल्लेबाज धीमी गति की बल्लेबाजी इस वक्त अपनाते हुए, और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। Oh, fantastic delivery. This is an outstanding delivery. Gets some extra bounce, extra quicker, and beaten completely by that pace, and wicketkeeper collected the ball, and there is no possibility of any run. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर, 8 on the board in the over number 3 in progress. Good piece of bowling performance continuing here from Varun, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। Like that one, just right behind the line of that ball, driven that one perfectly down to a mid-on, not for run. और एक और फैंटास्टिक ओवर, एक और बेहतरीन ओवर की समाप्ति वरुण की। 3 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 8 रन जोड़ चुका है यहाँ पर एजे हॉस्पिटल, 41 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हैं जो ईजी इंडिया ने इस वक्त तय किया है। 8 on the board, yet to lose any wicket after completion of 3 overs scored by AJ Hospital, chasing the victory target of 41. तो गेंदबाज नया ओवर प्रारंभ करते हुए, चौथा ओवर शुरू होता हुआ यहाँ पर एजे हॉस्पिटल की पारी में। विजेत गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। बाएं हाथ के बल्लेबाज शरण के लिए इस वक्त एक फील्डर ठीक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग ठीक सीमा रेखा के पास तैनात, जबकि एक फील्डर डीप फाइन लेग पर, माफ कीजिए डीप थर्ड मैन पर मौजूद है। और ओवर की पहली गेंद लेकर विजेट गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए। इस बार स्ट्राइट इनटू द, हाउ ही ड्रॉप दैट वन, स्ट्राइट फॉर अ चांस गॉन इन वेन। अगर फील्डर जो खड़े थे मिड ऑफ पर वहीं पर खड़े रहते तो शायद गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंच सकती थी, लेकिन हड़बड़ाहट में गेंद को लपकने के चक्कर में 2-3 कदम आगे निकल आए और गेंद जैसे उनके सिर के ऊपर से गुजरने ही वाली थी, गेंद पर अपने हाथ अड़ाए लेकिन गेंद को दबोचने में असफल। और यहाँ पर बल्लेबाज शरण जीवदान के साथ साथ 1 रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रन बिना किसी नुकसान के। और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑफ द टोज, गेंद को मोड़ दिया फ्रंट फुट पर जाने के बाद डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची। इस वक्त 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। रन से ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए और डिफेंसिव
फ्रेम ऑफ माइंड की बल्लेबाजी इस वक्त अपनाते हुए ये दोनों बल्लेबाज स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, 10 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर। और इस बीच विजेत गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ राउंड द विकेट कहना पड़ेगा, बाएं हाथ के बल्लेबाज शरण के लिए तैयार। Just gone for a drive at the last moment, not succeeded. The ball whizzing just outside the off stump. It beat the batsman's bat with the extra pace and went into the hands of wicketkeeper. और रन से इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 10 रन बिना किसी नुकसान के। और चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज विजेत इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बार एक्स्ट्रा क्विकर गेंद लो फुल टॉस के तौर पर आई थी, गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज विजेत, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 10 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और एक बार फिर से गेंदबाज विजेत गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। Defensive forward defense, absolutely perfect forward defense played by the batsman शरण। और इस गेंद को फॉलो थ्रू में अपने दाईं ओर जाने के बाद गेंदबाज विजेत फील्ड कर चुके हैं, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए इस वक्त गेंदबाज ईजी इंडिया के इस बार just gone for a mighty heave on the outside after being shuffling across the line, not succeeded। गलत लाइन पर खेलना चाहता, चूंकि सफल ओवर की समाप्ति विजेत की। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्लोअर प्रोग्रेसिंग हियर नाउ फॉर एजे हॉस्पिटल, दे मैन टू स्कोर 10 runs on the board, yet to lose a wicket after completion of 4 overs। So same bowler starts the fresh proceedings। वरुण स्टार्टिंग का फ्रेश ओवर, पहली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलते हुए और पहली गेंद लेकर वरुण इस वक्त तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट। रनअप में कुछ हद तक बाधा, एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए गेंदबाज वरुण अपनी ओर की पहली गेंद लेकर तैयार। इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और लेग बाय का इशारा अंपायर इस वक्त करते हुए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रन बिना किसी नुकसान के। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे क्रीज पर इस वक्त जमते हुए, वो जानते हैं इस वक्त लक्ष्य काफी लंबा नहीं है, इत्मीनान भरी बल्लेबाजी की इस वक्त उन्हें जरूरत है। और इस बीच गेंदबाज वरुण टॉप एज, इस बार मौका जरूर मिड विकेट फीडर के लिए, लेकिन जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए। गेंद को इस वक्त उछाला था हाफ माइंडेडली, लेकिन गेंद टॉप एज पर जरूर टकराए, लेकिन अंतिम अक्षर में मिड विकेट पर जो फील्डर थे इस गेंद तक पहुंचने में असफल। और स्ट्रोक्स खेलते समय एक हाथ से उनका बल्ला फिसल गया था और आखिरकार गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 12 ऑन द बोर्ड, येट टू लूज एनी विकेट। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। पटकी गेंद कट किया, बैकफुट पर जाने के बाद खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, he's got at least a single and it's gone over the fence after beating the fielder। Fantastically square cutting stroke of the back foot, पंच कर दिया था गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट बल्लेबाज ध्रुव ने, और 4 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल।
16 on the board here to lose a wicket, and fantastically punched it away through the offside after the rocked on the back foot by the batsman Dhruv, and because of that he just got the boundary for that stroke. Fantastic struck. इस बार हल्के से गेंद को इस वक्त टैप करना चाहता अंतिम क्षण में, लेकिन गेंद सीधे पहुंची उनके बल्ले को वंचित करने के बाद विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है इस वक्त 16 रनों पर. द स्कोर स्टेज एट 16 ऑन द बोर्ड टू लूज एन विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. और इस बीच गेंदबाज वरुण full toss, square of the wicket, finds the gap as well. It's got a single. In fact, they don't have to take that second run. और इस बीच गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. वेलकम बाउंड्री. 20 on the board. Boundary number second scored in this over. तो चौका नंबर 2 इस ओवर में ध्रुव के बल्ले से लग चुका है. स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर. 20 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और वरुण तैयार. इस बार ऑफ द टॉस गेंद को मोड़ दिया. शॉर्ट मिड विकेट पर रन्स नहीं मिलेंगे और इसी के साथ 5वें ओवर की समाप्ति. 5 गॉन एंड आफ्टर 5 ओवर्स एजे हॉस्पिटल प्रोग्रेसिंग along nicely to the target. 20 without loss, chasing the victory target of 41 in 20 overs. They are 20 without loss after 5 overs. 21 to get from 15 overs and they got still all 10 wickets kept intact. और इससे पहले कि छठा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए अंग्रेजी में मैं सतीश को आमंत्रित करना चाहूँगा. धन्यवाद. थैंक यू. Welcome back after completion of 5 overs. Now Shishant Acharya brought into attack from the commentary box and starts with the delivery, which is the batter just wanted to go for the wide swing but missed it completely. Several times, not the first time. The captain of the side, Sharan, is trying for a big shot but not getting that much of success. The half of the job which is completed, I have to complete another half of the job. 21 required for the victory. Again, swings and missed, but umpire will not going to miss to call the wide. And with that extra score, but moves on to 21 on the board without loss of any wicket. And the team AJ Hospital chasing 41 to win the match. I'm really impressed with the bowling performance of the bowlers of EG India, even though their batters are not contributed from the bat, but bowlers absolutely doing a great job so far. Oh, what a catch! Magnificently taken. That was absolutely a spectacular caught and bowl taken by the bowler Sushant. Sharan departs after he played a long innings. The wicket number 1 is back in the pavilion at the score of 21. Checking the stroke in the last moment. But ball is almost looks like will go into dropping shot of the bowler. But an excellent diving catch taken on his follow through.
Sharan back into pavilion after scoring 3 runs. The facing 16 deliveries. Has got some batting practice in the middle. The new batter in, jersey number 23. Loki Putturu has been promoted up in the order to finish off the things quickly so that they can benefits the team AJ Hospital in the net run rate is concerned, because league stage matches is always important to keep your net run rate well, and this is the opportunity for AJ Hospital to finish up the things quickly. But a great bowling performance so far from the bowlers of EG India. Tushant has got a breakthrough in his first over. Sushant will going to take the strike. This is the last over of the power play, and deep third man and one fielder down at deep fine leg. The fielders in the deep, no one fielder in the deep in front of the wicket. Full toss, lovely straight drive, as straight as an arrow, and ball racing towards the fence, now deep long on boundary for 4 runs. Little margin for error. When you're bowling to the potential of Loki, it always going to be asking for trouble, but straight bat, which is good enough for Loki to get that straight drive, exquisite straight drive down to deep long on for 4 runs. With that boundary score, Banna moves on to 25 on the board. 16 required for the victory. She's a ball him, clean him up. Went for the wide swing. Have a look at the celebration there from Shishant. Why not? They need to celebrate, isn't it? Because he got a huge wicket of Lokesh. After that boundary, the full toss delivery ball by Shishant. The next one, right on the block hold. The batter playing a wrong line. Lokesh. The pays the penalty by that, and his up stump is uprooted. Sushant picked up his second. Lokesh back in the pavilion after scoring 4 in 2 deliveries with a strike rate of 200. Is back in the pavilion, and Shreyas replacing him. The great stuff from Sushant. 2 wickets in this particular over, much deserved. The very interesting number 10 and number 11, jersey number. Dhruv wearing jersey number 10 and Shreyas wearing jersey number 11. Here we go. Sushant to Shreyas, nice flicks. Nice looking flick shot of the toes down to square leg region for a single. So after this match is the last match of the day, number 1. EG India takes on team MCF, and that match will go into commence soon after this. After 2:45, the exact time will go into start that match. Full toss, but umpire will go into finish. Wide outside the line of leg stump. One more addition of that single scope, but moves on to 26 on the board. 27, correction. 14 more runs required for the victory. In our scoring department, Sachit is doing 2 jobs in one time. Online scoring and manual scoring. That was a nice timing in that shot. The ball is almost running towards the mid-wicket boundary, and looks like the ball will be stopped by one of the fielder inside the boundary line. Ample time for the batter to come back for third run.
So with that valuable 3 runs, Coburn moves on to 30 on the board. Just 11 more runs required for the victory for the team AJ Hospital. The 6 teams which is participating in this 3 days of T20 leather ball cricket tournament in the name of Corporate Premier League 2025, which is proudly presented by SM Cricketers, the Mangalore. Sumant, one more bowler brought into attack to bowl the next over. And spread out field set here. Deep square like one fielder at mid wicket, and mid off is going back to long off. One fielder down at deep cow point. There is a short mid off, short cow point, and backward point. Short square leg behind the square. Deep square leg in front of square. And this is a field set here for the right hander batter Dhruv. Sumant balls, appeal for leg before wicket, but half-hearted shout. Ball pitched outside the line of leg stump, and leg by call by umpire. One more addition. With the addition of that single, Coburn moves on to 28 on the board. (31) correction. 10 more runs required for the victory. This time Shreyas, they wanted to go for the big shot, quickly realizing that it's difficult for him to play that shot on the onside region. They're checking the stroke in the last moment. Went for the cut shot, missed it completely. No run scored. Good start there from Sumant. Again, lovely delivery. Batter again wanted to go for the cut shot off the back foot. Little bit late movement there from the back foot of the batter to go for the cut shot. Missed it completely. This time he got that one nicely down to point region for a easy single. With the addition of that single, Coburn moves on to 32. Fantastic tournament is in progress. CPL under the leadership of Jairam Vijay, Keshav Pujari, Deepak Ramesh, Naveen Kumar and Dharnesh, the 5 fielders of this cricket tournament. This time, just over that of the field. Then they wanted to come back for the second, and they made it quite easily. With that couple of runs, Coburn moves on to 34 on the board. One more over comes in, 34 for the loss of 2 wickets. And of course, we are talking about the organizer. Of course, the organizer of CPL T20. They are thankful and grateful for all the donors. And of course, some best wishes which is coming from
The donors, the Curry Spoon Restaurant Suratkal, Sona Bar and Restaurant Mumbai, Lotus Boys PG Chowki, SM Cricketers, and Smoke and Grill Restaurant, Apple Fly Wood, Snehaloka Cricketers, Dinesh Timbers, and Arushi Enterprises, Arish Shetty, Suratkal, Jairam Vijay, the organizer, Prajwal Shetty, Arish Shetty, Bondel, Keshav Pujari, Deepak Ramesh, Naveen Kumar, and Dharnesh Jogi, all our proud organizers. So thankful and grateful for your artful contribution for the success of CPL T20 cricket tournament, which is proudly presented by SM Cricketers. So just number 19, which brought into attack to bowl the next over. Sushant, one who got a wicket in the previous over, 2 wickets. Very successful bowler from the point of view of team EG India. Shreyas will be the striker. The starts with a wide, far outside the line of off stump. With the addition of that single score, but numbers on to 35. 1 big hit will going to finish the match. That means 6 runs required for the big victory. This time I wanted to go for the pull shot. Deflected from his pad, so that might be the contact with the tie pad. Leg by call by umpire. With the addition of that leg by score, but moves on to 36 for the loss of 2 wickets. Just 5 runs away from the victory. Dhruv is the batter, will going to take Sushant. He got a wicket of Loki Puttur in the previous over. Off the back foot, tried to pull the ball, but couldn't manage to get that room what he wanted to play the pull shot, but played it down to short mid-wicket region for a single. And just a boundary is required for the victory for the team AJ Hospital. Sam wanted to go for the drive, missed it completely. Wicket keeper also missed it, and the bye call by umpire. One more addition. The fine leg fielder will go into field the ball. 3 runs away from the victory. And wait and see which batter will going to get a chance of getting a victory run for the team. The Dhruv now will going to face Sushant. Full toss driven down to short mid off. Quickly they went for a single. With that single score, moves on to 39. Just a couple of runs required for the victory. After this match, we'll going to start the next match, last match of day number 1. The team MCF takes on EG India. Exactly at 2:45. A 15 minutes break almost. This time it is going to be no ball and winning run. He finish up the things in a style with the boundary or 6. Just umpire asking for the third umpire to see whether it's going to be a maximum or a boundary. So the big victory for the team AJ Hospital.
So six coming signal coming from the third umpire, so that 6 runs which is added to the total score of AJ Hospital. Congratulations AJ Hospital for their domination in this match, and hard luck ED EG India. The batter of course they failed to perform, but bowler absolutely did a great job in their bowling department. Thank you. Yes, welcome to the post-match. Correction, yes, a post-match presentation ceremony, and it's a time for the man of the match winner, and the man of the match, which is goes to undoubtedly man who dismantled the batting department of their opposition. It's one and only Loki Puttur, who judged as the man of the match for his outstanding bowling spell. Picked up 4 wickets, and I request Sharat Acharya of MCF kindly request him to please present the man of the match award for Lokesh Puttur for his great performance. ದಯಮಾಡಿ ಲೋಕೇಶ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶರತ್ ಆಚಾರ್ಯ MCF ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
So now it's the time for the presentation ceremony. The man of the match award, which goes to Lokesh Puttur of AJ Hospital and Sharat Acharya of MCF. Will going to present this man of the match award for the fabulous performance from the ball by Lokesh. He picked up 4 valuable wickets of their opposition and responsible for the victory for the team AJ Hospital. Thank you very much, Sharat Acharya of MCF. For your valuable time, and congratulations for Lokesh Puttur for their match-winning performance. Thank you. Thanks a lot.
SM Cricketers presents CPL T20 Corporate Premier League 2020. Morning, perfect weather condition here in NMPA Cricket Ground, B.R. Ambedkar Cricket Stadium here in Panamburu. So we are going to start with the match, which is between AJ Hospital versus MCF. They will going to start the day number 1. And first of all, I would like to welcome each and every cricket lovers for this prestigious cricket tournament. And yes, we have a gentleman out here in my left, the organizing committee. We have Mr. Keshav Pujari in the middle. We have Deepak Kumar, my left, Deepak Ramesh, in fact, and Avinash is the match referee of this cricket tournament. And my right, as always, my long-time commentary partner, Mr. Gopi, as well. So, first of all, it's going to be a fantastic day of cricket. Just I wanted to see the weather condition, Gopi. As always, in the month of April, we are witnessing some hot weather condition. The morning itself, it was a bright, sunny morning. Looks like it's going to be a fabulous day for cricket. But just wanted to see that day number 1, as far as NMPA cricket ground is concerned, as for our personal experience, this ground is going to be one of the dream ground for the batters, because as for the pitch, we just witnessed the tough AstroTrack, which is implemented in this NMPA cricket ground. The ball, which is definitely nicely coming to the bat. Of course, the first 3 overs, 4 overs, it might be the shiny ball. It was a new ball. Can move a little bit, but I think once the time progresses, it's going to be a good wicket to bat on. So we are just having some prediction that it's going to be a high-scoring game between AJ Hospital versus MCF, and toss-winning team might be loves to bat first, because if they manage to handle the first 3-4 overs, they can put some good score on the board and can put some pressure onto the chasing team. Altogether, Gopi, it's going to be a great day for the cricket. And once again, I would like to welcome each and everyone under the great leadership of Jairam Vijay, Deepak Ramesh, Keshav Pujari, and Dharnesh and Naveen Kumar, organizing wonderful cricket tournament. I hope, Gopi, this day number 1 going to be the most exciting day for cricket. Exactly, Satish. जैसा कि आपने फरमाया, एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, prestigious cricket tournament in the name of CPL T20 Corporate Premier League 2025. Dr. B.R. Ambedkar का ये मैदान, NMPT का मैदान कई मशहूर श्रृंखलाओं के लिए गवाह, और यहाँ पर एक मशहूर और प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है SM क्रिकेटर्स ने कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग 2025 के नाम पर 6 प्रतिष्ठित टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा ले रही हैं. 6 prestigious teams are participating in this corporate level tournament. MCF, MRPL, BASF, AJ Hospital, Infosys और BG India जैसी 6 प्रतिष्ठित टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा ले रही हैं. 3 दिनों तक ये श्रृंखला चलेगी, और we are expecting some fantastic battle in this 3 days of fantastic cricket tournament, corporate premier league 2025. और जहां तक पिच का सवाल है, जैसा कि आपने फरमाया, सुबह कुछ हद तक सीमर्स के लिए लगभग एक आधा घंटा तक मैच शुरू होने के बाद सीमर्स के लिए कुछ हद तक यहाँ पर लाभ मिल सकता है, लेकिन जैसा जैसा वक्त गुजरता जाएगा, as the time progresses, it's going to be a batting paradise for the batsmen. So जैसा कि आपने फरमाया, टॉस जीतने वाली टीम शायद पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी, और ऐसा कहना पड़ेगा, एक बेहतरीन और रोचक क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, और एक बेहतरीन नेक्स्ट वीक लाइव टेलीकास्ट भी है मैंगलोर मीडिया द्वारा जनाब कमल इनके सारथ्य में, और हम उम्मीद अपेक्षा कर सकते हैं सतीश, वी आर expecting some fantastic battle in this prestigious cricket tournament of 3 days, Corporate Premier League 2025, which is proudly presented by SM Cricketers. Exactly, Gopi, and what is not all about that CPL T20, and never to forget the in between, when the wickets are falling, the boundaries are coming and sixes are coming. Our DJ Ajit absolutely is ready for entertaining the crowds here in this NMPA cricket ground. Altogether, Gopi, this has been outstanding cricket tournament, well organized cricket tournament, and I'm wishing all the best for the organizer. May the best will come in the first. May the best will come in the 3 days of wonderful cricket tournament in the name of CPL T20. Thank you. I request the captain of team MCF as well as toss which is completed.
So Each India won the toss. They elected to bat first, so that we are going to start the match exactly at 3 o'clock. I request both the teams please get ready. EG India takes on MCF in the last match of the day number 1 of the prestigious CPL T20 cricket tournament.
I request the extra player of both teams to please report to the stage immediately. EG ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ MCF ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇತರ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ MCF ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು. धन्यवाद सतीश. So the match number 3rd and a final match of the day 1 of this prestigious cricket tournament, CPL T20 Corporate Premier League 2025 is now going to start between EG India versus MCF, and EG India after won the toss they elected to bat first. Surprisingly, once again they elected to bat first after won the toss after being bundled out for 40 in their previous match. After being won the toss and elected to bat first, now they once again opted to bat first. Now फर्स्ट बॉल पहली गेंद पैरों पर गेंद टकराई इस वक्त, और जहां तक रनों का सवाल है तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे. तो दोनों आरंभिक बल्लेबाज सुमंत और सुधींद्र इस वक्त क्रीज पर मौजूद. तो डॉट गेंद पहली गेंद और अभिजीत गेंदबाजी यहां पर शुरू कर चुके हैं. और अगर यहां पर अगली गेंद लेकर अभिजीत इस वक्त तैयार. पटकी हुई गेंद बैकफुट पर गए, हल्के से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया. पॉइंट पर गेंद पहुंची, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. और जहां तक सवाल है ईजी इंडिया का, तो इस वक्त इस मैच में विजय दर्ज करना उनके लिए बेहद जरूरी बन चुका है अगर उन्हें इस श्रृंखला में इस टूर्नामेंट में अपना अस्तित्व बरकरार रखना है. तो क्योंकि पहले मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था एजे हॉस्पिटल के खिलाफ. अगर इस मैच में भी वो हार जाता है तो इस श्रृंखला से निश्चित रूप से बाहर हो जाएगा. तो इस मैच को जीतना उनके लिए बेहद जरूरी यहाँ पर बन चुका है. इस बार बेहतर गेंद थी, इस वक्त अपील जारी है इस वक्त, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा गेंद और बल्ले का कोई डिफ्लेक्शन नहीं. द बॉल गेट्स सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. तो 3 डॉट गेंदें लगातार गेंदबाज अभिजीत इस वक्त फेंक चुके हैं और निश्चित रूप से एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर वो जारी रखते हुए. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो अभिजीत एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए. सुमंत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, एक बार फिर से अपील, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं. और जहां तक रनों का सवाल है तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे. जहां तक एमसीएफ का सवाल है, पहले मैच में एजे हॉस्पिटल के खिलाफ उन्होंने विजय दर्ज किया था. अगर इस मैच में भी वो विजय दर्ज करते हैं तो टेबल टॉपर के रूप में होकर इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त कर जाएंगे ग्रुप के अग्रस्थानी होकर. और दूसरा विजय दर्ज करने के लिए इस वक्त मुकाबला जारी है. और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद हल्के से गेंद को पुश करना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर. कोई फील्डर वहां पर डीप स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़कर आए और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. 2 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर. और अभिजीत एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए सामना करने के लिए तैयार सुमंत के लिए. सुमंत अभिजीत की गेंदों का सामना करते हुए. यह गेंद हल्के से गेंद को पुश करना चाहा, बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद टकराने के बाद इनसाइड एज टकराने के बाद गेंद इस वक्त पहुंची फाइन लेग पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका. पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. 3 विदाउट लॉस फॉर ईजी इंडिया after being won the toss and elected to bat first in the match number 3 of this day 1 of this prestigious cricket tournament, CPL T20 2025. They made a steady start. In fact, they managed to score 3 runs on the board to lose any wicket after completion of first over.
श्रवण गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए दूसरा ओवर शुरू होता हुआ ईजी इंडिया की पारी में और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार श्रवण दाहिने हाथ ओवर द विकेट सामना करते हुए सुधींद्र इस बार बाएं हाथ राउंड द विकेट पहली गेंद इस वक्त गेंद को खेल दिया डीप थर्ड मैन की दिशा में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता एक रन का इजाफा हो चुका है सुमंत थे बल्लेबाज और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के इट्स 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड स्टार्टेड जस्ट शॉट वेल एगो और गेंदबाज श्रवण अपने गेंदबाजी के मार्क पर इस वक्त तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुधींद्र सामना करने के लिए तैयार पटकी विकेट कट करना चाह जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन स्लैशिंग स्क्वायर कट आफ्टर बीइंग गोज ऑन टू द बैक फुट और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के दूसरा ओवर प्रगति पर और गेंदबाज श्रवण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल परफेक्ट बैकवर्ड डिफेंस एट द लास्ट मोमेंट पंजों पर उछलते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेल दिया राइट बिहाइंड द लाइन ऑफ द बॉल बैक टू द बॉलर की दिशा में रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला 4 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है बिना किसी नुकसान के जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर और श्रवण अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार इस बार पैरों पर गेंद टकराई और स्टंप्सों पर टकरा कर निकल चुकी है द बॉल स्टक टू द टॉप ऑफ द स्टंप्स बिल्स आर डिस्टर्ब्ड और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है सुधींद्र द मैन डिसमिस्ड जस्ट वांटेड टू ब्लॉक दैट बॉल एट द लास्ट मोमेंट लेकिन गेंद उनके बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे टॉप ऑफ द स्टंप्स जा टकराए बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ पहला विकेट खो चुका है ईजी इंडिया नाउ दे आर 4 for 1 तो एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सीपीएल टी20 जिसकी शानदार तरीके से प्रस्तुति की है एसएम क्रिकेटर्स ने और इस श्रृंखला के लिए बेस्ट विशेष शुभकामनाओं को भेजा है करी स्पून रेस्टोरेंट सूरत कल सोना बार एंड रेस्टोरेंट मुंबई लोटस बॉयज पीजी चौकी एसएम क्रिकेटर्स स्मोक एंड ग्रिल रेस्टोरेंट एप्पल प्लाईवुड स्नेहलोका क्रिकेटर्स दिनेश टिम्बर्स आरुषि एंटरप्राइजेस हरीश शेट्टी सूरत कल जयराम विजय जो कि इस श्रृंखला के प्रायोजकों में से ऑर्गेनाइजर्स संगठकों में से एक हैं जयराम विजय और प्रज्वल शेट्टी हरीश शेट्टी बोंदेल और केशव पुजारी दीपक रमेश नवीन कुमार और धरणीश जोगी जो कि इस श्रृंखला के दूसरे 4 संगठक ऑर्गेनाइजर्स और इन सब की शुभकामनाओं की बदौलत बेस्ट विशेष की बदौलत ये श्रृंखला ये टूर्नामेंट एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करती हुई इस सुंदर से विशाल से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एलएमपीटी के मैदान पर और जहाँ तक नए बल्लेबाज का सवाल है न्यू बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडिल चिराग एज नंबर 3 बैट्समैन इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर मौजूद और श्रवण इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार नए बल्लेबाज चिराग के लिए अगली गेंद इस बार रक्षात्मक तरीके के खेल परफेक्ट बैकवर्ड डिफेंस शॉट कवर पर गेंद पहुंची और एक रन का रन इस वक्त नहीं मिलेंगे स्कोर रुक चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर द स्कोर बोर्ड इज एट 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस एक बेहतर लिंक और लाइन के साथ गेंदबाज श्रवण इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए चिराग के लिए अच्छी गेंद थी टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई बैकफुट पर जाने के बाद पंजों पर उछलते हुए गेंद को ढकेलना चाहा गेंद पैरों पर टकरा इस वक्त लेकिन कोई क्षति नहीं क्योंकि गेंद लक्ष्य से बाहर की ओर निकलती हुई और इसी के साथ सफल ओवर की समाप्ति श्रवण की 2 ओवर की समाप्ति के बाद अभी वह अपनी सही राह को तराशता हुआ यहाँ पर ईजी इंडिया 4 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर जस्ट अ सिंगल रन कंसीडर्ड बाय द बॉलर श्रवण इन दिस ओवर एंड ही जस्ट गॉट द विकेट ऑफ सुधींद्र और 2 ओवर के बाद 4 रन बच चुके 1 विकेट के नुकसान पर इट्स 4 for 1 आफ्टर 2 ओवर्स अभिजीत अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त ईजी इंडिया की पारी में
और इस बीच फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज अभिजीत और अपने ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट। फर्स्ट बॉल कम्स। यह गेंद इस वक्त दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। पहली गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेल दिया इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में। रन से इस बीच नहीं मिलेगा। तो स्कोर रुक चुका है 4 रन। तीसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है। अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। इस बार रक्षात्मक तरीके का खेल, बैकवर्ड बैक टू द बॉलर की दिशा में। बैकवर्ड डिफेंस परफेक्ट, राइट बिहाइंड द लाइन ऑफ द बॉल और गेंद को ढकेल दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगी। धीमी प्रगति यहां पर करता हुआ ईजी इंडिया और गेंदबाज श्रवण, माफ कीजिए गेंदबाज अभिजीत गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। रक्षात्मक तरीके खेल, एक बार फिर से बैक टू द बॉलर की दिशा में। रन से इस बीच नहीं मिलेंगे। स्कोर रुक चुका है 4 रनों पर। तीसरा ओवर प्रगति पर और अभिजीत एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए। पावर प्ले जो कि इस वक्त जारी और गेंदबाज इस वक्त तैयार। फुल टॉस, ड्राइव कर दिया गेंद को इस वक्त। गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर पर और वाइड स्लॉक ऑफ से फील्डर तोड़कर आकर जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 5 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। Slower progressing here now for EG India. They lost their 1 wicket just short while ago in the face of Sudhindra. Bowled in a terrific from Shravan for note. और इस बीच अभिजीत अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त और विकेट से कुछ हद तक हटते हुए गेंद को खेलना चाहता। गेंद की उछाल को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर रुक चुका है 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और एक बेहतर लिंक तो लाइन के साथ गेंदबाज अभिजीत इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ उभरता विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। इस बार कट किया गेंद को खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर मौजूद डीप बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में। सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। रक्षण और प्रोटेक्शन मौजूद और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर। 6 ऑन द बोर्ड for losing 1 wicket. Just 2 runs came from this over. One more good over in MCF's point of view came straight, and 2 runs came from the over, and after completion of 3 overs, the batsmen of EG India searching for the right track. It's 6 for 1 after 3 overs. Shravan starting his second over और चौथा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त ईजी इंडिया की पारी में। पहली गेंद खेल दिया इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट। कवर पॉइंट पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 7 for the loss of 1 wicket at the start of the 4th over in fact. श्रवण अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। दाहिने हाथ माफ कीजिए बाएं हाथ राउंड द विकेट। अगली गेंद ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए जस्ट वांटेड टू फॉलो दैट वन एट द लास्ट मोमेंट। गेंद का पीछा करना चाहा लेकिन गेंद सीधे पहुंची काफी तेज रफ्तार के साथ उनके बल्ले को वंचित करते हुए विकेट कीपर के हाथों में। रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है वक्त 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर और श्रवण
अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार ड्राइव किया, इस वक्त शॉट कवर की दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना इस वक्त चूक चुका है अंतिम क्षण में, और इस बीच बल्लेबाज एक रन के साथ सुरक्षितम अपना छोड़ बदल चुके हैं। जोखिम भरा रन जरूर, लेकिन यशस्वीतम सफलतम पूर्ण करते हुए दोनों बल्लेबाज, और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। 8 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज श्रवण गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। Again, just gone for a slashing square drive at the last moment, not succeeded. And the ball went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. Score इस वक्त रुक चुका है 8 रनों पर, 8 on the board. Slower progressing here for EG India now. Still the runs coming in singles for them. और श्रवण इस बार कट किया खूबसूरती के साथ मिसफील्ड, और गेंद जाती हुई डीप कवर पॉइंट की दिशा में। हाफ स्टॉप इस वक्त करते हुए पॉइंट के फील्डर, और जब तक गेंद को डीप कवर पॉइंट पर बैकअप करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था इस वक्त, और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल। couple of runs added to the total, scoreboard moving up to double figures now। 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और श्रवण अगली गेंद के लिए इस वक्त तैयार। चिराग सामना करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद उतनी ही बेहतर स्ट्रोक कवर पॉइंट पर, लेकिन 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल। So 4 overs completed, still slower progressing here for EG India, and now it's 11 on the board, 1 wickets down, and 16 overs to go, still in overall calculation in their innings. The third match of the Day 1 of this prestigious cricket tournament, Cpl T20 Corporate Premier League 2025 T20 Leather Ball Cricket Tournament, which is proudly presented by SM Cricketers, is now progressing here under bright sunshine. It's already 3 past 10, 3:10 दोपहर के बज चुके। धूप का कहर अभी भी उसी हद में बरकरार, गर्मी का एहसास, भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि जो गिने चुने दर्शक है मैदान पर, वो भी इस भीषण गर्मी का एहसास यहाँ पर करते हुए, और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त एक मुकाबला जारी है आज के इस तीसरे मैच में, इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट। दीपक द न्यू बॉलर इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक, स्टार्ट्स फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द कमेंटेटर बॉक्स, एंड पहली गेंद लेकर तैयार। फर्स्ट बॉल कम्स फ्रॉम दीपक, ये गेंद, और इस बार गेंद को खेलना चाहता, अब goes the finger from umpire, he's got a big deflection on that, just trying to play that one on the offside, it's got a big nick on that, and the wicket keeper behind the stumps made no mistake, just took the catch in his gloves. So number 4 batsman is now comes out to the middle, रोहन, और यहाँ पर चिराग का विकेट का पतन होने के बाद उनका आगमन हो चुका है, और दीपक का अपनी पहली गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं, और अपनी दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद कट किया, बैकफुट पर जाने के बाद पॉइंट पर गेंद पहुंची,
जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट। और दीपक का बाएं हाथ राउंड द विकेट अपने ओवर के अगली गेंद लेकर तैयार। फ्लाइटेड गेंद, इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और वाइड का इशारा। गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहा था चूंकि और टॉस की गई थी गेंद इस गेंद पर और स्ट्रोक्स खेल नहीं पाए, वाइड का इशारा। 13 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट और अगली गेंद लेकर दीपक। धीमी गति की गेंद और स्लिप कॉर्डन, दो पहली स्लिप जो थी उनके हाथों से गेंद इस वक्त छूटी आफ्टर फर्स्ट बाउंस और बैकअप किया गया शॉट थर्ड मैन पर। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट और गेंदबाज दीपक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर गए, गेंद को खेला जरूर लेकिन जगह नहीं बना पाए और शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दीपक ये गेंद एक बार फिर से गेंद को खेला लेकिन जगह नहीं बना पाए, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को खेला था लेकिन सीधी मिड ऑन फीडर के हाथों में गेंद पहुंची, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका 13 रन पर। 13 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट। दीपक धीरे धीरे अपनी सही लय रिदम को इस वक्त प्राप्त करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट अगली गेंद। क्विकर गेंद थी, इस वक्त लेग स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। 14 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। दीपक फ्लाइटेड गेंद, बैकफुट पर गए, गेंद को इस वक्त खेल दिया, इस वक्त कवर पॉइंट पर 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 15 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है और ओवर नंबर 5 की समाप्ति हो चुकी है। सो 5 overs completed and after 5 overs still EG India making a slower progressing here. 15 for the loss of 2 wicket after completion of 5 overs. Still 15 overs left in their innings और दिखते इन बचे हुए 15 ओवर में बचे हुए 8 विकेटों की मदद से EG इंडिया के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इससे पहले कि छठा ओवर शुरू हो, माइक्रोफोन पर अब आगे का खुदे काल सुनाने के लिए एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। So got him first ball and this time slip cordon fielder made no mistake. Just wanted to steering it away, not succeeded. He just steering that one but can't find the gap as well and slip fielder took a very sharp catch. Third wicket down, they are looking in trouble और अब इंतजार है नंबर 5 बल्लेबाज का। तो आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए इस वक्त अंग्रेजी में मैं सतीश को आमंत्रित करना चाहूंगा। Thank you, Gopi. And Sumant departs in the first delivery of the over number 6. And Rajiv has got a breakthrough. The team EG India are looking in trouble again. So 15 for 3 and the new batter walk towards the middle for the team EG India. Answer and the new batter in will going to face next delivery of Rajiv. The spinner is in action right above the wicket. This time again extra bounce in relegation for Rajiv. Even the answer is absolutely the tall player. But again, the beaten by the turn and the bounce of the delivery. A wicket keeper fumbles, but no chance of any run. Rajiv.
Again, wanted to go for the cut shot away from his bat. Wicket keeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Rajiv again. Again, cuts it nicely in the between backward point and cover point. The fielder behind the wall. And before the one of the fielder will going to get that one, ample time for Ansar to complete valuable couple of runs. This time he got the connection of the back foot. And with that, a couple of runs scored, moves on to 17 on the board. The over number 6 is in progress. Rajiv. Again, very close to that off stump in the negation. Last moment, Ansar has got the bat onto that. Played it again off the back foot down to backward point region for a single. 18 on the board for the loss of 3 wicket in the over number 6 is in progress. Or they wanted to go for the big shot this time. The ball is missed at stump. And even there is opportunity of stump out as well. And surely the batter is out of a crease. The good over, the wicket taking over, which is comes to an end of year of Rajiv after completion of over number 6. Team EG India are 18 for the loss of 3 wicket. You're watching the third match of Cpl T20 leather ball cricket tournament, which is proudly presented by SM Cricketers in this most beautiful venue. Deepak Ramesh, one of the organizer. Left arm orthodox spinner is an attack and he got the wicket. Full toss delivery. Answer couldn't manage to take that run over the infield, but he just finds the fielder at wideish mid on. Wicket number 4 back in the pavilion of East India. Thank you. Thank you, DJ. The new batter in is Devdas walks towards the middle and the bowler is in attack, and the first ball itself Deepak has got a wicket here for the team. This time Plum in front of wicket, absolutely Plum, no doubt at all. Is try to get that one off the back foot, quite a dangerous one while going for the back foot, and that for unfortunately Devdas the misses the line completely. The wicket number 5, which is back in the pavilion. The back-to-back wicket here for bowler Deepak.
So one with the wicket back in the pavilion, 2 wickets in a 2 delivery for Deepak. That means he's on hat trick now. And a new batter in Shishant. And so far no hat trick in the tournament. The golden opportunity for Deepak. Left hand ball. So that's a lovely delivery indeed. And Shishant couldn't manage to read the turn of the ball, but last moment he got a bat onto that. The great display of left arm orthodox spin bowling there from Deepak. Again wanted to go for the cut shot, a very dangerous one, very close to his body in the negation. That ball is nipped back, and with the spin, no run scored. Very hard to combine the runs. Again wanted to go for the cut shot, a quicker one compared to the previous 4 deliveries. This is a much quicker delivery from Deepak, and the batter again completely beaten by that pace of the bowler. No run scored. Slow one, quite nicely depended with the front foot. It's going to be a great over. Maiden 2 wicket here for Deepak. Over number 7, which is comes to an end. And searching for the right track. It's 18 on the board. With a good start from Rajiv. The first ball, which is a dot delivery. Rohan. The previous match also, Rohan, the only one batter, has got a double figure. Again, just tried to cut the ball, but missed it completely. No run scored. Rajiv. This time he got that one into the hands of backward point region fielder. Excellent bowling there from the spin bowlers of MCF. They're keeping the things very tight, not giving any chance for the batter to get any kind of runs. Tossed up delivery, nicely driven into the deep long on region, and that is going to be a boundary. The Rohan, I've already mentioned, only one batter we can see that is batted confidently so far for team EG India. And with that bound, is Koban moves on to 22 on the board. Lovely looking straight drive. Thank you, DJ. Right arm over the wicket balls. Again, extra bounce for Raju. It's got height, and of course, sometimes the ball is getting a little bit extra bounce and keeping the batter very quiet so far. Off the back foot, played it straight to the hands of slip fielder. No chance of any run. One more good over, which is comes to an end. And 22 on the board. The boundary which is came from this over after completion of over number 8 overs completed. 22 for the loss of 4 wickets. 5 wickets in fact back in the pavilion. Welcome to Naveen Bantwal, the official, and giving some rest for the Darnesh. He is leaving the field. So 9th over will going to start here, and Deepak will going to continue. One who picked up 2 wickets, a maiden 2 wickets in the previous over. Will going to continue here. The wicket, the 5 wickets back in the pavilion.
Nicely bowled, tossed up delivery, giving some extra air through there and getting some extra turn when you are giving more flight in the delivery. We'll go and get more turn. This time ball missing the line. White call by umpire. The off cutter, and of course off cutter in the sense is bowling a leg cutter, left arm bowler. It's going to be in off spin delivery for the bowler batter. Appeal. Oh, that is a loud shout for leg before wicket, but umpire Avinash not interested. Extra deviation, extra turn in the ball, saving the batter from the leg before. Deepak again. Played it gently down to square leg region for a easy single. With that single, Skubana moves on to 24 for the loss of 5 wickets. So very slow cricket in progress of the innings of East India. This time again wanted to go for the expansive drive. Doesn't get hold of that properly. But there will be a single down to square leg. Oh, a little bit mix up. Chance of run out in the striker's end. And asking for trouble. The fumble from the fielder so that Rohan wants a second, but rightly sent him back by the batter. Deepak again. Again, well depended off the front foot. Early front foot stretch from the batter before the bowler will go into deliver the ball. Went for the cut shot, a wide call by umpire. And again the ball is spun a lot away from the right hander. One more addition of that single score, but moves on to 26 on the board. This is nice looking full. Beautifully played that one down to deep square leg region for 4 runs. Shot outside the line of leg stamp. And the batter off the back foot played it. Nice looking on drive down to deep square leg for 4 runs. Eight completed is 30 on the board. 9 overs completed. So 9 completed, 30 on the board, and Dharnesh leaving the field, and Naveen joining the official panel. Thank you very much for Dharnesh for the success of day number 1. Yes, sir. One more single. That looks like the ball running down to deep third man bridge, and the fielder behind the ball. And almost a good, lovely stop by the fielder. And ample time for the batter to come back for a couple of runs. 32 on the board. Rajiv. Right arm over the wicket and played it down to backward point region, not for run. Little bit short in the down the outside the line of off stump. Rajiv. Quicker one, faster one.
Appeal for stump out, and first time today is so far no one umpire used his third umpire for the stump out or a run out, but it's a stump out for the stump out. The third umpire has been asked whether the batter is short of crease or not. Thank you. Not out is a call from the third umpire, and the batter is safe. Not Amazon. Rajiv to continue. The 10th over is in progress. And nicely played it down to backward point region. Not for run. Rohan, the batter who's got the boundary in the previous over. This time lofted nicely straight down the ground into the deep long on region. And no one there in the deep. It's going to be a boundary there. Lovely shot there from Rohan. He is a very confident player. And scoreboard now moves on to 36 on the board. The over number 10 is in progress. Rohan is looking very confident, and that was a stroke of the confident player. Again, short pitch delivery. They wanted to go for the full shot, and extra bounce, missing the timing. And good over from the point of view of EG India. Over number 10, which is consonant after completion of 10 over. Total score is 36 on the board. EG India are looking towards some score around 100 plus here. Wait and see how well they will go into play the remaining 10 overs. Meantime, change in commentary box. It's over to Gopi. Thank you. ಅದು ಶ್ರವಣ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಶ್ರವಣ ಅಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲ್ದಿನ ಗೊತ್ತೈತಿ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಲೂಸ್ ಆತಲಿ ಕೆಬಿಟೆ ಬಾಕಿ ಇದು 36 ಅಲ್ಲ ಫೈವ್ ವಿಕೆಟ್ ನಾನು ಮೈನೂರು ಪುಟ್ ನಂಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪೋದಿದ್ದ ಐನೂರು ಒಂದೇ ಪೋಯಿ ವಿಕೆಟೇ ಪೋದಿ
धन्यवाद सतीश। सो इस वक्त रोहन और सुशांत पारी की भागदौड़ को इस वक्त संभाले हुए 36 रन बन चुके 5 विकेट के नुकसान पर और ईजी इंडिया एक रेस्पेक्टिव स्कोर की ओर बढ़ने की पूरी कोशिश यहां पर करता हुआ और जहां तक एक गौरवार स्कोर तक पहुंचने का सवाल है रोहन और सुशांत की उपस्थिति इस वक्त उनके लिए बेहद जरूरी है। हमसे दूर वाले छोर से फ्रॉम द फार एंड इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दीपक का पहली गेंद लेकर तैयार। फ्लाइटेड गेंद पैरों पर गेंद टकराई, अपील जरूर लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। बॉल कुछ हद तक उछाल लेते हुए अंतिम क्षण में और गेंद इस वक्त स्लिप पॉइंट पर फील्ड कर ली गई है, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। लेफ्ट आर्म गेंदबाज दीपक जो कि गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके अपने कोटे की दूसरी गेंद लेकर तैयार। ये गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 36 रनों पर 5 विकेट के नुकसान। 36 for the loss of 5 wicket और गेंदबाज बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को खेल दिया, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची, रन से नहीं मिलेगा। सुशांत और रोहन इस वक्त क्रीज पर जमने की पूरी कोशिश करते हुए 10 ओवर का खेल अभी भी बाकी है, इस ओवर को शामिल करके और दीपक फ्लाइटेड गेंद फ्रंट फुट डिफेंस इस वक्त शॉट कवर पर रन नहीं मिलेंगे। 4 बेहतर गेंद इस ओवर में दीपक इस वक्त फेंक चुके अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। क्विकर गेंद कट किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गेंद बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। Just rocked on the back foot and cuts that one perfectly. Little bit of a width for the batsman, and he cuts that one square off the wicket and finds the gap as well in between gully and a point. और 4 रन इस वक्त बल्लेबाज सुशांत इस वक्त प्राप्त करने में सफल। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर 40 for the loss of 5 wickets. अंतिम बार इस ओवर में गेंदबाज दीपक तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। फ्लाइटेड गेंद इस वक्त फॉरवर्ड डिफेंस, ओवर की समाप्ति 4 रन इस ओवर में बनने। 4 runs came from this over and after 11 overs still the batsmen of EG India searching for the right track. It's 40 for 5 after 11. तो राजीव गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए, राजीव स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम दैट साइड एंड फर्स्ट बॉल कम्स फ्रॉम हिम। इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला, इस वक्त डीप मिड विकेट पर कोई फील्डर वहां पर नहीं और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई और घने ग्रास के कारण गेंद जब तक सीमा रेखा के अंदर अपने रफ्तार स्पीड को खोने के बाद रुक जाए, फील्डर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था यहां पर 3 रन प्राप्त करने का और खाली क्षेत्र देखकर गेंद को इस वक्त खेल दिया था डीप मिड विकेट और वारिश लंगोन के दरमियान। और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार राजीव। ये गेंद कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद, चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची और अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड करने में सफल, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। और फिर से एक बार राजीव अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार स्वीप करना चाहा, गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, दोनों छोर से दोनों एंड से इस वक्त स्पिन गेंदबाजी लगाई गई है। और इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर राजीव इस वक्त तैयार। इस बार बेहतर गेंद थी, अंदर की ओर आते हुए तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, गेंद को कट करने के बाद गली क्षेत्र पर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 44 रनों पर 44 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 12 इन प्रोग्रेस। और राजीव अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। Just called for a mighty quick piece of work made by wicketkeeper, but I think the batsman got his back foot onto his crease at the last moment, and because of that he survived. The score इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 44 रनों पर 44 the scoreboard stays for losing 5 wickets. This is the third match of this prestigious cricket tournament, CPL T20 Corporate Premier League 2025 T20 Leather Ball cricket tournament is now progressing here, which is proudly presented by SM Cricketers.
इस बार राजीव की गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल और गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा को इस वक्त पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बॉलर तो अंतिम गेंद पर जो चौका रोहन के बल्ले से लगा था वो चौका इस वक्त उनके टीम के कुल रन संख्या को पहुंचा चुका है 48 रनों पर। 48 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। 12 overs have been bowled. 13th over going to start. तो इस वक्त हल्के से गेंद को पुश करते हैं। इस वक्त शॉट स्क्वायर लेग पर कोई फील्डर वहां पर नहीं, बल्लेबाज दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं लेंगे। डीप स्क्वायर लेग से फील्डर तेजी के साथ इस वक्त पहुंचते विकेट का इजाफा। और जहां तक अंपायरिंग का सवाल है, नवीन बंटवाल और अविनाश बंटवाल दोनों भाई इस वक्त इस मैच के लिए अंपायरिंग का कार्यभार करते हुए काफी अनुभवी अंपायर्स श्रीमान नवीन बंटवाल और श्रीमान अविनाश बंटवाल दोनों भाई इस वक्त इस मैच के लिए अपना किरदार बाखूबी यहां पर अदा करते हुए। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त निहाल गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। एक्स्ट्रा क्विकर मत स्ट्रेट लाइन गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूंकि कुछ ज्यादा गेंद उछाल लेते हुए और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 49 रनों पर 1 कम 50 और निहाल तैयार। ये गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया इस वक्त मिड ऑफ पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़ा। इस 1 रन के साथ द 50 कम्स अप फॉर ईजी इंडिया। 50 ऑन द बोर्ड एंड फैंटास्टिक fifth wicket partnership is now sixth wicket partnership is now building up between Rohan and Sushant. 32 runs added for the 6th wicket so far between these two batsmen. Rohan and Sushant now playing very confidently. Nihal पटकी हुई गेंद एक्स्ट्रा क्विक स्टीयर कर दिया खूबसूरती के साथ थर्ड मैन की दिशा में। जस्ट सिंगल ही गॉट और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 51 रनों पर 51 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। सेंसिबल बल्लेबाजी इस वक्त अपनाते हुए क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाज रोहन और सुशांत। पटकी हुई गेंद उछाल लेते हुए गेंद को इस वक्त कट करना चाहा चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे अपना सही रिदम लाइन लय इस वक्त प्राप्त करते हुए निहाल गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। पटकी हुई गेंद एक बार फिर से बेहतर गेंद थी इस वक्त सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची गेंद बल्लेबाज को वंचित करने के बाद बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करने के बाद तो इसके साथ ओवर नंबर 13 की समाप्ति हो चुकी है। 13 overs completed and after 13 overs still the batsmen of EG India just searching for the right track. 51 for 5 and 33 runs already added now for the 6th wicket so far unbeaten between Rohan and Sushant. So after 13 overs, 51 for 5 with 7 to go in their innings. गणेश उपाध्याय नए गेंदबाज जो कि गेंदबाजी शुरू करते हुए अपने हमसे दूर वाले छोर से पहली गेंद लेकर तैयार। इस बार गेंद को उछाल दिया, गेंद जाती हुई मिड ऑफ पर और गेंद को रोकने में सफल हो चुके हैं बड़ी मुश्किल के साथ और सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 52 रनों पर। 52 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 14th ओवर। गणेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट मौका लेकिन फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
रोहन के बल्ले से चौका लग चुका है. Score of the wicket he lofted and finds the gap as well. 56 for the loss of 5 wicket. Ganesh. इस बार गॉडिस इनसाइड इट डाउन टू अ शॉर्ट फाइल लेग. रन इस वक्त नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 56. अब तक 56 रन बन चुके हैं ईजी इंडिया के, जबकि 14वां ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर रहा. और गेंदबाज गणेश इस वक्त तैयार. ये गेंद खूबसूरत स्ट्रोक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्रोक इनटू द गैप एज वेल. रोहन के बल्ले से चौका लग चुका है और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 60 रनों पर रहा. खाली क्षेत्र चुनते ही पहले ही गेंद को उछाल दिया. इस वक्त वाइड स्लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान, और 2 गेंद पहले ऐसे ही एक स्ट्रोक उन्होंने उस इलाके पर लगाया था. थोड़ा सा स्क्वायर इस बार कुछ हद तक सीधा, लेकिन 4 रन इस वक्त बल्लेबाज रोहन के खाते में जुड़ता हुआ. अगली गेंद गणेश. दाहिने हाथों बढ़ता विकेट रोहन के लिए, जो कि एक बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए और उनका अच्छा साथ निभाते हुए इस वक्त नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज सुशांत. ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, दिशाहीन गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 61 रनों पर. 61 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन द ओवर नंबर 14 इन प्रोग्रेस. और गणेश उपाध्याय अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार बल्लेबाज रोहन के लिए. पटकी हुई गेंद लेग स्टंप से बाहर, एक और वाइड. कंसेक्यूटिव वाइड्स फॉर द बॉलर. He's just searching for his right length and line at this situation. Bowled 2 consecutive wides और इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 62 रनों पर. 62 now for the loss of 5 wicket. गणेश. इस बार गेंद को उछाला कवर पॉइंट पर, 2 स्क्वायर और चौका नंबर 3 यहां पर लगता हुआ रोहन के बल्ले से. तो 3 चौके इस ओवर में रोहन झड़ चुके हैं. निश्चित रूप से अपने इरादों को इन चौकों की 3 चौकों की बदौलत तब बुलंद कर चुके हैं. 15 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं. इस ओवर में अंतिम बार गणेश उपाध्याय तैयार रोहन के लिए. कुछ बातचीत करने के बाद अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार. अगली गेंद गणेश रोहन के लिए इस ओवर में अंतिम बार. इस बार कट किया, बैकफुट पर जाने के बाद गली की दिशा में गेंद पहुंची. बल्लेबाज काफी तेज, 1 रन मिलेगा. काफी ऊंचा थ्रो विकेट कीपर के दस्तान में पहुंचता हुआ और एक हाथ में अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए अपने दस्तानों में एक हाथ से इस गेंद को कैद करते हुए. सो फैंटास्टिक ओवर in EG India's point of view came to an end. 16 runs came from this over from Ganesh Upadhyay, and because of this over I must say EG India now are back in the game a little bit. And 14 overs completed, 67 on the board, 6 wicket loss for them. In fact, it's a 5 wickets loss for them. निहाल गेंदबाजी शुरू करते हुए 15वां ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ और रोहन न सामना करते हुए इस वक्त. इस बार हल्के से गेंद को उछाला, गेंद मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन वहां पर कवर पॉइंट पर मिसफील्ड होते हुए, हालांकि गेंद हवे में जरूर थी. पहले इस वक्त स्ट्रोक खेलते ही रोहन दौड़ पड़े, लेकिन नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज थोड़ा सा झिझके इस वक्त और आखिरकार वहां पर मिसफील्ड की वजह से बल्लेबाज रोहन क्रीज पर सुरक्षित, वापिस सब कुछ सुरक्षित उनके लिए. अगली गेंद पटके विकेट, स्क्वायर ऑफ द विकेट, टॉप एज, एंड
finds the gap as well. Long chase for the fielder, but he won't get that one, and it goes over the fence for a boundary. तो इस वक्त गेंद को उछालना चाहते थे बैकवर्ड थर्ड मैन के ऊपर से, लेकिन गेंद टॉप एज पर टकराने के बाद थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर चले गए 4 रनों के लिए। यह गेंद उछाला गेंदबाज के सिर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ पर। अब रोहन काफी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए, गेंद पर उनकी नजरें इस वक्त जम चुके हैं और स्कोर इस 1 रन के साथ अब बढ़कर पहुंच चुका है 72 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 72 for the loss of 5 wickets in the over number 15 in progress। और निहाल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद कट किया बैकफुट पर जाने के बाद दब गली पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा। 73 on the board, 45 runs। 6th wicket partnership is now in fact the partnership is now going up to 55 runs already scored for the 6th wicket so far. Rohan is now batting on 38, playing a sheet anchor's role for their side। मुख्य सूत्रधार की भूमिका अदा करते हुए रोहन, और गेंदबाज तैयार। यह गेंद रोहन के लिए, गेंद को उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 74 द स्कोर। 15th ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। निस्संदेह इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा एमसीएफ के गेंदबाजों को इस जोड़ी को तोड़ना बेहद जरूरी इस वक्त बन चुका है। और गेंदबाज निहाल पटकी हुई गेंद कट किया बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची गली पर, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 75 रनों पर। द प्लैटिनम जुबिली इज अप फॉर देम। 75 फॉर द लॉस ऑफ 5 wickets and 57 runs already scored for the unbeaten 6th wicket, and Rohan and Sushant are now playing very confidently। 5 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 5 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। 75 for 5 after 15 overs। और इससे पहले कि 16वां ओवर प्रारंभ हो, आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंतिम 5 ओवर का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. The very good partnership is in progress between Rohan and Sushant, and lot more improvement in the batting performance of each India in their second match. And first ball of the over number 16, and played it gently down to short mid-wicket region. They got a single for that, and that brings total score into 76 on the board for the loss of 5 wickets. The great partnership is in progress, 50 plus runs partnership so far from these two batters. Excellent one for team Each India. Right above the gate, lofted, and it's some chance here for the fielder, but ball will go into land it safely in the no man area between mid-wicket and the short mid-wicket. Doesn't get hold of that done properly. The batter just wanted to go for the acceleration of run rate. Needed to be after they settle down in the middle. They have to take this last 5 overs for some acceleration of run rate. 77 on the board. Again hitting him into the pads. It's, the ball might be a little bit keeping low at the last moment. The bowler Abhijit is bowling his second spell, and so far the great performance is in progress from the batters. The batter wanted water break for the next over. There might be just a very hot sun, even though time is 4 o'clock in the evening, but still we are witnessing some very hot condition. Abhijit bowls lovely, lifting off delivery, isn't it? Good enough for the little master Rohan. Correction, Sushant in fact is just wanted to get that one off the back foot. Luckily that ball is
missed his bat. Otherwise, definitely it's a chance of caught behind. The one fielder in the deep, in the offside region, in the deep cow point region. So the opportunity for the batter to get that one into the extra cover. Oh, one more lovely delivery in the last moment. Shishant has got a bat onto that. Quite hardly managed to get the ball into his bat. But one more addition of that singles takes us to the score into 78 for the loss of 5 wicket in the over number 16 in progress. What we are talking about, comparison of EG India's batting performance. The previous match, they are bundled out for 40. Swings and missed. Looking for the wide swing of the bat. Misses the line completely. And one more over is completed. 16 gone after the completion of 16 over. Total score of Team EG India 78 for the loss of 5 wickets. It's only for the batter's water break, not for the fielding team. A little bit disappointment for MCF players. Yes, we are talking about the day number 1 with a very successful day for the cricket. Cpl T20 Corporate Premier League 2025 in the morning. It's been inaugurated. And so far it's been a nice going here of the day number 1. Excellent cricket. All that we are witness some excellent batting performance, the opener match. It's a great comeback by the team MCF. They won the match against the team AJ Hospital. The second match is one-sided, but the last one we are witnessing the last match. And more than anything else, most attractive part of this third match is the two brothers are in the middle. Non-field umpire, Naveen and Avinash. So 12th, 17th over will going to start from the far end. Looks like Abhijit himself will going to continue from the far end. No, Shravan brought into attack. The ball is third over of his quota. Bowled 2 very good overs in the power play. So left arm medium fast bowler starts with a beautiful outswing delivery. Left arm, the bowler operated round the wicket to the right hand batter and just wanted to go for the drive. Shishant misses the line completely. No runs scored. Shravan. Again, lovely delivery. Equally well played there by the batter off the back foot, Shishant. This is sensible batting, in fact, because even if you are not able to get the boundaries and 6, but at least they wanted to rotate the strike. The single we cannot underestimate in any format of a game. Maybe it was very small in size and safe like raindrops, but continuing falls of the raindrops can make a river overflow. But along with the singles, if you look for one big shot, but at least the boundary takes average runs of the over at least 8 to 9 runs. Again, wanted to go for the drive, but not getting that much of timing in that stroke. Just a single with the addition of that single score, but moves on to 80 on the board in the over number 17 in progress. Coming down the track using his feet. Again, lack of placement. Chance of run out in the strikers and wide throw coming from the fielder. And quick single. They have to take the risk, and Shishant picked up a risk single. 81 on the board in the over number 17 in progress. Short fine leg, the fielder at short mid wicket, deep square like mid wicket, correction long on, wideish and long off. Dry slice, looking straight drive, beautifully played. Formed it one down to deep long on, but just for a single.
Nice looking drive from the batter. One more addition, 82 on the board. Or number 17 in progress. Ball him, cleaned up, absolutely fantastic delivery. The stump switch is cartwheeled. And the batter just wanted to go for the wide swing of the bat. Misses the line completely. You miss a hit. The Sushant, the batter, departs after he's been fantastic with Rohan responsible for the partnership. But partnership which is comes to an end. Abhijit departs. But it is a good innings there from Abhijit. Scored some valuable runs for his team. Thank you, DJ. And the innings of Sushant, which is comes to an end after scoring a 19 valuable runs in 31 deliveries. And Rohan, in other end, is looking so good. Scored 42 valuable runs in just 35 deliveries with the help of 7 boundaries. The partnership which is comes to an end. Great partnership for the team AG India. Aha! This has been a big no ball, I want to tell you. It's a, the might be umpire will not want to see that, whether it's going to be a wide or no ball or anything else here. Avinash and Naveen will have a chat here because as for the new rules and regulation of the cricket is concerned, it might be, I think it's at my best of knowledge, it definitely it's going to be a no ball because ball is almost past the pitch and it's a no ball, rightly so. Absolutely right, it's a no ball. So free hit delivery for the batter. Oh, drives that one nicely into the long off. Only for single. With the addition of the single score, but moves on to 84 on the board. That brings a new batter into strike now. Varun, the batter, the left-hand batter, will go into face Abhijit. A lot of improvement we can see that is India compared to the previous performance against AJ Hospital. I already mentioned they bundled out for 40 runs, but a lot of improvement in their batting in this particular match. They scored 86 and so far still 3 to go after this over. Abhijit. Nicely cuts, beautiful shot. That was absolutely poetry in the motion. That was a class in that stroke, in that occasion. Of course, off volley. The batter have to deliver that one right from the middle of the bat into the gap towards a deep cow point boundary for 4 runs. Varun dispatched that one towards the deep cow point for 4. Lovely shot. With that boundary score, but moves on to 88 on the board. Abhijit again. This time up in the air and long on fielder coming from the deep long on won't get there. Misjudgment, I want to tell you. Couple of runs completed, 90 on the board.
They played it very high, but long on fielder has got a plenty of time to come to his front to take the catch, but it was a slow movement and misjudgment, and costing that the ball is landed safely in front of that fielder. The 90 on the board. Intention is very clear from the batter Varun. Oh, lovely delivery. One more wicket. Cleaned him up with a beauty. Well, that means it's a Yorker, but batter absolutely misreading that Yorker and delivery. Once again, he's managed to uproot the two stumps. And seventh wicket is back in the pavilion of EJ India. Varun departs. Now the beauty from Abhijit. Vijit is a new batter in as he walks the dismissal of Varun. One who looks so good. Hits a boundary, a couple of runs. Looks like he will going to play some the proper innings for his team in the end. But Abhijit has dismissed him with the beauty. Slow Yorker and delivery. Of his balls again, one more Yorker and delivery. No idea for the batter where the ball is. 2 is the call, and they wanted to come back for the 2, and they will made it quite easily in the end. Before Deepak will going to return the ball, ample time for the batter to come back for the second with that couple of runs scored. But the moves on to 92 on the board. Just like I mentioned earlier, the first intention of the team EJ India to get past that 100. The figure which is gives little bit confidence. Bowled him, one more wicket, 3 wickets in this over for Abhijit. All the 3 are bowled out, and that shows the accuracy of the bowler. Once again he disturbed the furniture with an excellent one. 8 wicket back in the pavilion. The over number 18 which is comes to an end. The great piece of bowling performance from Abhijit. 3 wickets in 1 over. Vijit out for 2. $18 gone, it's 92 for 8, and a new batter, number 10 batter walks towards the middle with the jersey number 02. Pradnesh is the new batter. I have to give some kind of stand for Rohan in other end. The only batter so far managed very well. So looking towards his 50. He's batting on 43 in 37 deliveries. It might be a good 50, I want to tell you, under pressure situation. The 7 runs which is required for the 50, and more than anything else, his team is required some runs in the remaining 2 overs. And the bowler brought into attack to bowl that over number 19. Left arm bowler. Swings and missed. And the last thing what Rohan wanted to do here is that wanted to take the risk of getting some big runs, big shots. But Rohan is a very experienced bowler for the side as he bowls excellent good length delivery to defeat the bat of Rohan. Sharan again. Balls rise off top. Chance of run out in the striker's end, but both the batters completed quick single
With the addition of that single scoreboard, now moves on to 93 on the board. And Rohan, his individual score now moves on to 44. Pradnesh takes a fresh guard from umpire. Appeal as Plum, absolutely Plum in front of wicket. One more wicket back in the pavilion. And Pradnesh is the batter actually. He doesn't know anything about that. Umpire is given him out. But he is looking for run. Ninth wicket is back in the pavilion of team Ichi India. Now last wicket remaining in their innings. Right on the block hold. And the team MCF wanted to bundle out their opposition as quick as possible. They doesn't want to let Rohan to come to the strike. Last wicket remaining of the team Ichi India. Tomorrow will be the day number 2 of this prestigious Cpl T20. And the same time we're going to start the day number 2 as well. Exactly at 8 o'clock we're going to start the day number 2. Maybe Infosys and MRPL will going to take this first match, looks like. Team MCF, they won the match, first match in the morning against AJ Hospital, the margin of 33 runs. And then the VZ victory for the AJ Hospital against team AJ India. And this is the match number 3 in progress. The MCF, the bowling first after toss won by AJ India, they elected to bat first. The last pair in the middle. Akhilesh will go into face Sharan. Left arm over the wicket. Oh, nicely played it down to backward point region. Excellent piece of fielding by the fielder in the deep backward point region. Just a single. Rohan doesn't want to take a couple because he wanted to retain the strike. .94 on the board. Shiv Kumar is very impressive. The fielder in the deep cow point region. Very athletic. Quick fielder for the side of MCF. This time, what a shot. Rohan is just wanted to make his 50. He is absolutely keen to make a 50 there. The boundary will take him into 48. Thank you, DJ. The total score of the team EG India is 98, and Rohan's total score is individual score is 48. Both the team and his individual needed 2 runs, because if he gets 2 runs, he will going to complete the 50, and his team will also complete the 100. And that can be managed simultaneously here. Wait and see. Oh, this time he's walking and looks like, my goodness, what is doing here? This is the last wicket. No question of keeping the strike. What Rohan is doing here? Absolutely absence of mind. This is absolutely absence of mind. He thought it might be some wickets are there, but it's the last pair in the middle. And unfortunately, he's back into the pavilion in the form of run out. The run out taken place, unfortunately. Akhilesh, I think, the batter is run out. So 98, the total score of EG India. They set a target of 99
for MCF to win this match. But Morohan will going to get the standing ovation from their teammates for his wonderful fighting innings. The 48 valuable runs he scored from the bat. So we'll take a short break here in our community box. After the short break, we are back. And the MCF will go into chase 99 to get their second victory of their league matches. And wait and see how well EG India will go into restrict their opposition. They got some good bowling attack in their side. So that I think we are expecting some great battle between these two. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಲುಂಗಿ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಲುಂಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಿಪಿಎಲ್ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲುಂಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, the director of a famous Kannada movie Lungi and also a businessman. Heartily welcome to you, sir, once again to this prestigious cricket tournament, Cpl T20 2025.
धन्यवाद सतीश. So 99 the target for MCF set by EG in India. They finished well after being struggling at one stage at 18 for the loss of 5 wicket. After that, fantastic partnership held between Rohan and Sushant. Rohan made a top scorer for their side, remained unbeaten on 48. Meantime, well support came from the other side. Sushant, the number 7 batter who contributed with a bat at 19 runs. And because of their fantastic batting performance, both of their fantastic batting performance, they finished well with 98. And they set a 99 target for MCF, and their innings now going to start. And their innings starts going to within just short. Their innings now going to start within just a short while. But before that, I have to announce some best wishes, which came from a long way to the success of this cricket tournament. Cpl T20 2025 best wishes came from Curry Spoon Restaurant, Suratkal, Sona Bar and Restaurant, Mumbai, Lotus Boys PG, Choki, SM Cricketers, Smoke and Grill Restaurant, Apple Plywood, Sneha Loka Cricketers, Dinesh Timbers, Arushi Enterprises, Harish Shetty Suratkal, and one of the organizers of this fantastic cricket tournament, Mr. Jairam Vijay, Prajwal Shetty, Harish Shetty, both there, and other 4 organizers of this prestigious cricket tournament, Keshav Pujari, Deepak Ramesh, Naveen Kumar, Naveen Bantwal, and Dharanish Jogi. So these are the main organizers of this prestigious cricket tournament, Cpl T20 Corporate Premier League 2025 T20 Leather Ball Cricket Tournament. The last session of the first day of this prestigious cricket tournament, which is proudly presented by SM Cricketers. SM Cricketers is now going to begin. And now the target is 99 for MCF. Their openers. Rajiv on strike, and Deepak the non-striker. And meantime, the bowler starts a fresh proceedings from the commentator box, and is Varun Kumar. और इंतज़ार है इस वक्त. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द फर्स्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स. इंतज़ार है इस वक्त पहली गेंद का. तो इस वक्त वरुण कुमार गेंदबाजी शुरू करते हुए राजीव के लिए. और जहाँ तक राजीव का सवाल है, पिछले मैच में उन्होंने बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था एजी हॉस्पिटल्स के खिलाफ, और अर्धशतक भी उन्होंने जड़ा था. और यहाँ पर देखते हैं उस सफलता के सिलसिले को क्या वो इस मैच में भी आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं. 99 रनों का लक्ष्य, 99 द टारगेट फॉर देम. और पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ. पहला पावर प्ले ओवर, और गेंदबाज वरुण इस वक्त गेंदबाजी में फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार राजीव के लिए. ये गेंद कट किया. इस वक्त गेंद पहुंची पॉइंट पर. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 5 रन प्रति ओवर से कुछ नीचे. ठीक तरह से कहा जाए तो द रिक्वायर्ड रन रेट इज एग्जैक्टली 4.95 रन पर ओवर. दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री. They are stipulated 20 overs. That means in the stipulated 120 deliveries, they have to score 99 runs with a required run rate of exactly 4.95 runs per over. Varun. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को डिफ्लेक्ट करना चाहता. गेंद पैरों पर टकराई जरूर, लेकिन गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और अपील को सही तरीके से अंपायर ने इस वक्त नकार दिया. रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. तो 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज वरुण न फेंक चुके हैं, और अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए राजीव के लिए. ये गेंद हल्के से गेंद को रोक लिया. बेहतर गेंद थी, लगभग ब्लॉक होल पर टिप्पा खाते हुए अपने स्ट्रोक्स को रोकते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया. इस वक्त सिली मिडॉन पर रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज वरुण कुमार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी उछाल लेते हुए अंतिम अक्षर में गेंद को साइड पर मोड़ना चाहा, ठीक तरह से मोड़ नहीं पाए. गेंद लगभग उनके कमर पर टकराने के बाद सिली पॉइंट पर फील्ड होते हुए रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. 4 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज वरुण कुमार इस वक्त फेंक चुके हैं. और जहां तक सवाल है इस वक्त ईजी इंडिया का, तो अगर इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में उन्हें अपना अस्तित्व बरकरार रखना है तो इस मैच को जीतना बेहद ज़रूरी उनके लिए बन चुका है. और इस बीच गेंदबाज वरुण
ये गेंद हल्के से गेंद को फ्रंट फुट पर जाने के बाद खेलना चाहा, बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद जब तक स्क्वायर लेग फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका है। इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है एमसीएफ के लिए। 1 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। और जहां तक का सवाल है इस वक्त सामना करने का, तो दीपक का इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज वरुण कुमार की ओवर की अंतिम गेंद का। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए वरुण कुमार और दीपक का सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज बाएं हाथ के गेंदबाज का सामना करते हुए। ये गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल, perfect forward defensive stroke. Over number 1 has been came to an end. So after first over, fantastic start in the bowling department for Varun Kumar and a slower start for MCF. It's 1 without loss after completion of first over. तो 99 रन इस वक्त बनाने हैं। जहां तक सवाल है एमसीएफ का, अगर इस मैच में भी वो विजय दर्ज करता है तो निश्चित रूप से दोनों मैचेस को जीतने के बाद इस ग्रुप के अग्रस्थानी होकर सेमीफाइनल में वो प्रवेश प्राप्त कर जाएगा। और जहां तक ईजी इंडिया का सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, पहले मैच में उन्होंने एजे हॉस्पिटल के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, तो इस मैच में भी वो हार जाते हैं तो निश्चित रूप से इस श्रृंखला से बाहर हो जाएंगे। तो इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में उन्हें अपना अस्तित्व बरकरार रखना है, तो इस मैच को जीतना उनके लिए बेहद जरूरी बन चुका है, ऐसा कहना पड़ेगा। मस्ट विन मैच है, डू और डाई मैच इस वक्त उनके लिए। और गेंदबाज पहली गेंद ड्राइव कर दिया, इस वक्त गेंद पहुंची मिड ऑफ की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग। इस बार थ्रो को रिसीव करने में असफल। आसान सा रन आउट स्ट्राइकर एंड पर हो सकता था, लेकिन फील्डर ने गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर। ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर इस थ्रो को रिसीव करने में असफल गेंदबाज। और आखिरकार बाल गेंद पर, इस गेंद पर बल्लेबाज बचते हुए 1 रन यहाँ पर दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। आसान सा रन आउट इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर होने वाला था, लेकिन यहाँ पर फील्डर की गलती की वजह से बल्लेबाज जीवदान के रूप में अपना विकेट बचा चुके हैं और 1 रन भी वो प्राप्त कर चुके हैं। अब गेंदबाज वरुण, ये गेंद रक्षात्मक तरीके की खेल, बेहतर गेंद थी इस वक्त, परफेक्ट बैकवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक, स्लिप डाउन पर गेंद पहुंची, रन से नहीं मिलेगा। विजेत है गेंदबाज, जो कि गेंदबाज इस वक्त शुरू कर चुके हैं और अपने ओवर की तीसरी गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, अपील, लेकिन गेंद निश्चित रूप से लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और रन बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त 2 रनों पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, विजेत अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक का सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद उछाला, जस्ट ओवर द बॉलर सेट दिस टाइम, जस्ट चेक द शॉट एट द लास्ट मोमेंट, अपने स्ट्रोक्स को चेक कर लिया था और आखिरकार गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकलते हुए जब तक मिड ऑफ क्षेत्र पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के साथ यहाँ पर दीपक अपना खाता खोल चुके और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर। और विजय तैयार। फुल टॉस ड्राइव कर दिया इस वक्त, मिड ऑन पर रन नहीं मिलेंगे, खाली क्षेत्र चुनने में सफल और बेहतर स्टॉप इस वक्त करते हैं मिड ऑन के फील्डर और यहाँ पर रन पूरा कर चुके हैं बल्लेबाज। गेंद को रोकने के बाद शायद अपने पैर में कुछ हद तक दर्द महसूस कर रहे थे, गेंद वहीं पर पड़ी रही और इसका फायदा उठाकर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चतुरता के साथ क्लेवरली यहाँ पर पूर्ण करने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। मिड ऑन के खिलाड़ी इस वक्त अपने पैर में कुछ हद तक दर्द महसूस करते हुए, शायद मांसपेशियों की खिंचावट जिसे कहते हैं, हैमस्ट्रिंग इंजरी, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। 4 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। शाम का वक्त 4:40 यहाँ पर बच चुके हैं
और धूप का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मैदान पर मौजूद है। सूरज मैदान की बाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन इस वक्त करता हुआ धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है। इसे ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर धूप की तीव्रता भी कम होते हुए, और आज का तीसरा और अंतिम मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत पहले दिन का यहाँ पर खेला जाता हुआ CPL T20 2025 क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत। और गेंदबाज इस बीच तैयार विजेत। यह गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल, और जब तक मिड ऑन फील्डर अपने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा 1 रन चुरा चुके थे, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर, 5 ऑन द बोर्ड। And this is the over number second has been came to, and 4 runs came from this over, and after 2 overs slower start for MCF, just chasing the victory target of 99 in 20 overs. They are 5 for none after 2 overs. तो गेंदबाज नया ओवर प्रारंभ करते हैं विजेत। पहली गेंद दीपक के लिए स्टीयर किया इस वक्त, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद गली क्षेत्र पर कहना पड़ेगा, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज EG इंडिया के, और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर विजेत इस वक्त गेंदबाजी, माफ कीजिए वरुण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, और ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई, वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर, 6 ऑन द बोर्ड। टू लूज एन विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। इन फैक्ट हल्की सी हवा मैदान की दाईं से बाईं ओर इस वक्त गुजरती हुई, और ये हवा इस वक्त खिलाड़ी और दर्शकों को इस गर्मी से काफी हद तक राहत दिलाते हुए, और गेंदबाज वरुण, ये गेंद बेहतर गेंद थी, परफेक्ट ऑफ कटर गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके, लेकिन गेंद लगभग हवा में स्विंग होते हुए, घुमाव लेते हुए बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करने के बाद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और गेंदबाज वरुण एक बार फिर से तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ऑफ द टोस, गेंद को फ्लिक कर दिया खूबसूरती के साथ, डीप स्कोर, लेग फील्डर काफी पीछे, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और वहां से थ्रो पहुंचा, लेकिन थ्रो इससे पहले कि पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। फ्लिक्स इट अवे ऑफ द टोस डाउन टू बैक ऑफ द स्क्वायर लेग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर प्रगति पर, ये दोनों बल्लेबाज एक बेहतर शुरुआत देने की पूरी कोशिश करते हुए, राजीव और दीपक का, और गेंदबाज बाएं हाथ ऊपर द विकेट। इस बार गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑन पर इनटू द गैप एज वेल, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है आफ्टर 1 बाउंस चौके के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा, गेंद की उछाल को पहचानते हुए गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया खूबसूरती के साथ राजीव ने, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए एनफील्ड क्लियर करते हुए, और डीप मिड विकेट पर आसानी के साथ गेंद आफ्टर 1 बाउंस सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, ये गेंद इस बार कट किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, और गेंद इस वक्त डीप बैक थर्ड मैन गेंद तक पहुंच नहीं पाए। एक और चौका, कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर द बैट्समैन राजीव। तो लगातार 2 चौके इस वक्त बल्लेबाज राजीव झड़ चुके हैं, और इन 2 चौकों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर। 15 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। अब फील्डिंग में कुछ हद तक बदलाव लाते हुए कप्तान EG इंडिया के, और राजीव धीरे धीरे अपने कदमों को क्रीज पर इस वक्त जमाते हुए 2 लगातार चौकों के साथ वो काफी हद तक आत्मविश्वास यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। और इस बीच गेंदबाज
वरुण गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल, पंजों पर उछलते हुए गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेल दिया सिली पॉइंट पर। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 15 रन बिना किसी नुकसान के। 15 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर, in fact it's the third over completed, and third over completed, pretty good one. First good over in MCF's point of view came to an end. 11 runs came from this over, and in fact 10 runs came from this over, and after completion of this over, MCF are now recovered a little bit after being a slower start in their first 2 overs. Now 10 runs came from the last over. Now it's 15 for none after 3 overs. एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब कमल लेन के सारथ्य में, और निश्चित रूप से ये श्रृंखला, ये टूर्नामेंट एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए, और गेंदबाज विजेत पहली गेंद फुल टॉस शेयर किया खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से गेंद बाहर हो चुके, 4 रनों के लिए नो बॉल का इशारा भी यहां पर हो चुका है। लगभग छाती की ऊंचाई पर इस वक्त गेंद आ चुकी थी, इस गेंद को स्टीयर कर दिया था इस वक्त, और नो बॉल भी घोषित करते हुए अंपायर 5 रन उनके खाते में जुड़ चुकेंगे। 5 रन एडेड टू द टोटल, और इन रन पंचक के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। 20 ऑन द बोर्ड, फैंटास्टिकली स्टीयर्ड बाय द बैट्समैन, लेफ्टी बैट्समैन दीपक, और गेंदबाज इस बार उछालना चाहा, नॉट करेक्ट दैट वन प्रॉपर्ली, बट द बॉल वेंट इन द गैप, इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री। तो लगातार 2 चौके इस वक्त दीपक झड़ चुके हैं, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 24 रनों पर। 24 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। गेंद को तराश कर इस वक्त लाया जा रहा है, और गेंदबाज के हाथों में इस वक्त सौंपा जा रहा है। जहां तक सवाल है लक्ष्य तक पहुंचने का, तो लक्ष्य इस वक्त कुछ हद तक आसान होता हुआ, जबकि 24 रन बच चुके हैं। 24 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। 2 चौके राजीव झड़ चुके हैं पिछले ओवर में, जबकि 2 चौके इस ओवर में दीपक झड़ चुके हैं, और गेंदबाज विजेत अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक के लिए यह गेंद ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक मिड ऑफ पर, लेकिन गैप चुनने में ठीक तरह से असफल। सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हो। मिड ऑफ पर थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन बेहतर तरीके से गेंद को रोक लिया था इस वक्त फील्डर ने, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 without loss in the open number 4 in progress. Slowly and steadily this opening partnership is now building up here for MCF, और इस बीच विजेत down the track, driven that one, beat the mid-on fielder, and it's crossed over the fence for a boundary. Fantastic struck came from the bat of Rajiv. दो तीन कदम आगे निकलते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ फुल टॉस, लो फुल टॉस गेंद को कनेक्ट करते हुए खेल दिया मिड ऑन फील्डर के दाईं ओर से 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक राजीव के बल्ले से लगता हुआ, चौका नंबर 3 उनके बल्ले से लग चुका है। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। पटकी हुई गेंद लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर अपने दस्तानों में गेंद को कैद करने में सफल रहे। शायद उनके अंगूठे पर थंब, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इस वक्त कुछ हद तक दर्द महसूस करते हुए, और वाइड का इशारा इस वक्त अंपायर का हो चुका है। 1+1, 2 runs now added to the total, and with that couple of runs, scoreboard moving up to 31 on the board for losing no wicket in the over number 4 in progress.
तो शायद विकेट कीपर के अंगूठे थंब में कुछ हद तक का चोट आई है, तो खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। एक बेहतरीन शुरुआत, हालांकि पहले 2 ओवर में काफी धीमी बल्लेबाजी की थी राजीव और दीपक ने, लेकिन उसके बाद तीसरे ओवर के बाद तीसरे और चौथे ओवर में लगभग 5 चौका झड़ चुके हैं दोनों बल्लेबाज। 3 राजीव के बल्ले से लग चुके हैं और 2 चौके इस वक्त दीपक का लगा चुके हैं पिछले ओवर में। और अब स्कोर एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ यहाँ पर MCF 31 रन जोड़ चुका, 31 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। तो 3 गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी हैं और खेल एक बार फिर से पुनरारंभ यहां पर होता हुआ। स्कोर इस वक्त 31 रन और गेंदबाज विजेत इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक इस वक्त सामना करते हुए। यह गेंद खूबसूरत स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ मिड ऑफ फील्डर, बट ही ड्रॉप्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस गॉन इन वेन और शायद उनके पैर में, जांग में इस वक्त कुछ हद तक चोट आई है। काफी तेज रफ्तार के साथ उनकी दिशा में पहुंचे थे, कैच को वो छोड़ चुके हैं। शायद उनके हाथों में इस वक्त या पैर में, जांग में इस वक्त चोट आई है और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए एक बार फिर से यहां पर रुक चुका है। दैट वाज एन शार्प कैच एट द लास्ट मोमेंट went into the hands of mid off fielder, but unable to hold that one, dropped by him, and the batsman got a life in this delivery. तो मैदान पर खिलाड़ी इस वक्त लेटे हुए कुछ हद तक अपने जांघों में दर्द, अपने जांग में दर्द इस वक्त महसूस करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है।
So once again the game restarts और जो खिलाड़ी चोटिल हुए थे अब काफी हद तक सही सलामत और इस बीच गेंदबाज विजेत अगली गेंद इस बार शॉट गेंद इस बार गेंद को पुल करना चाहता विकेट कीपर चूके इस वक्त और जब तक गेंद थर्ड मैन पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका है सिर्फ बाई का इशारा अंपायर द्वारा और बाई इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रनों पर 33 ऑन द बोर्ड yet to lose any wicket in the over number 4 in progress. एक बेहतर प्रगति यहाँ पर करता हुआ MCF और जहाँ तक one ball left in the previous over एक गेंद अभी भी बाकी है और गेंदबाज अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामना करते हुए इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक विजेत इस बार ऑफ द टोस फ्लिक्ड अवे ऑफ द टोस फैंटास्टिकली डाउन टू अ डीप स्क्वायर लेग इन फैक्ट और बल्लेबाज 2 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल खूबसूरती के साथ कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ दिया था इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर बल्लेबाज दीपक ने 2 रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल एंड विद दैट कपल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 35 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs द प्रेजेंट run rate is exactly 8.75 is now progressing here for them and now they are looking in a good situation still 64 to get for victory in remaining 16 overs and the required run rate is now straight away coming down to exactly 4 runs per over right from 4.95 at the beginning of their innings और पांचवा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ सुशांत जिन्होंने बेहतर बल्लेबाजी की थी 19 रनों की बेहतरीन पारी उन्होंने खेली थी एक अच्छा साथ निभाया था उन्होंने रोहन का इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और पांचवा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ फर्स्ट बॉल कम्स इस बार गेंद को उछाला मिड विकेट पर जस्ट ओवर द मिड विकेट फील्डर सेट और जहां तक सवाल है गेंद का पीछा करने के बावजूद गेंद को रोकने में सफल हो चुके हैं या नहीं देखना पड़ेगा इस बीच और जहां तक सवाल है इस वक्त अंपायर इस वक्त परिशीलन करते हुए वहां पर तो सिर्फ 2 रन इस वक्त बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ते हुए और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 37 रनों पर 37 और गेंदबाज सुशांत अपनी अगली गेंद लेकर तैयार लगभग भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की शैली में वो गेंदबाजी करते हुए इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरत स्ट्रोक इनटू द गैप एज वेल एंड ही फाइंड्स द गैप एज वेल बाउंड्री रिजल्ट्स फैंटास्टिक स्ट्रोक केम टू द बैट ऑफ राजीव और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर 41 on the board yet to lose any wicket and this is the over number just a 5 in progress they are progressing along nicely तो 4 गेंद इस ओवर में अभी बाकी पहले 2 गेंदों पे 6 रन प्राप्त कर चुके हैं इस वक्त बल्लेबाज राजीव और इस बीच गेंद के लिए तलाश इस वक्त जारी है और गेंद जो घने घास है सीमा रेखा के बाहर हैवी क्रॉस उन पर खो चुकी है और गेंद को तलाशते हुए इस वक्त फील्डर और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है तो अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार सुशांत गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए lofted this time chance for the mid on fielder and he took the catch successfully at last the batsman Rajiv departs just trying to clearing the infield this time not succeeded not quite to get that one from the middle of the bat and mid on fielder made no mistake just took the catch inside the 20-yard circle and at last the 41 runs opening partnership has been broken in the face of Rajiv and now his departs caught by mid on fielder of the bowling of Sushant and now first wicket loss for MCF it's 41 for 1
So after the departure of Rajiv, the number 3 batsman wearing a number 05 jersey now comes out to the middle for MCF. और वो इस वक्त सामना करेंगे सुशांत की गेंदों का और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 41 रन एक विकेट के नुकसान पर। कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और बल्लेबाज नए बल्लेबाज केशव इस वक्त सामना करते हुए सुशांत की गेंदों का पहली बार इस ओवर में। इस बार ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, गेंद को इस वक्त जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में। अपने बल्ले को हवा में उठाने के बाद बल्लेबाज केशव ने रन से इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 41 रनों पर, 41 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और गेंदबाज सुशांत एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। केशव के लिए अगली गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था, चूंकि लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर, 42 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 wicket in the over number 5 in progress. Fantastic progressing here for MCF at this situation. और एक बार फिर से सुशांत अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए अगली गेंद लेकर तैयार। बल्लेबाज केशव सामना करते हुए ये गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा इस वक्त, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, 2 कदम आगे जरूर निकाले रन के लिए, लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों में पहुंच रही है, अपने निर्धार को बदलते हुए, अपने इरादे को बदलते हुए अपने क्रीज पर कदमों को क्रीज पर खींच लिए। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो केशव के लिए इस वक्त हैट्रिक चौका अगर लगाते तो 2000 रुपए का नगद पुरस्कार और हर छक्के के लिए 1000 रुपए का नगद पुरस्कार एसएम क्रिकेटर्स इनकी ओर से घोषित किया गया है। और इस बीच गेंदबाज सुशांत टॉप एज मौका हो सकता है इस वक्त, फील्डर जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन पर जब तक फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लीडिंग एज पर टकराते हुए, टॉप एज पर टकराते हुए, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गली पर जो फील्डर थे पीछे की ओर दौड़ते हुए गेंद को लपक नहीं पाए और बल्लेबाज यहां पर इस गेंद पर जीवदान के साथ 1 रन प्राप्त करते हुए 43 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 5 overs had been bowled, still MCF looking in a good situation। 15 ओवर में चाहिए 56 रन और 56 more to get in remaining 56 more runs to get in remaining 15 overs। और इक्वेशन इस वक्त आसान न लगता हुआ इजी इंडिया के गेंदबाज को कमबैक करना है, तो निश्चित रूप से इन बचे हुए ओवर्स में एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्हें देना होगा। देखते हैं उनकी पारी में अगले चंद ओवर में क्या होता है। तो इससे पहले कि छठा ओवर प्रारंभ हो, आगे का आंखों देखा सुनाने के एक बार फिर से अंग्रेजी में मैं सतीश को आमंत्रित करना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, Gopi. And chasing 98, 99 to win the match, the team MCF are looking in commanding position. They lost only 1 wicket and they're almost half a marks. They're completed almost. The one more single has been added total with the addition of that single score, but Namuzan to 44 on the board for the loss of 1 wicket. After that, a great start given by the opening batter and the Rajiv and Deepak. The two batters are made a fantastic start for the team, adding the good runs for the first wicket. Now, the left-hand batter Keshav will going to take the strike. This time wide outside the line of leg stump, little margin for error, and umpire Naveen has got no hesitation to call that wide with that extra score, but Namuzan to 45 on the board. 45 for the loss of 1 wicket. The bowler is in action, Sumant.
The spin bowler in action and calling that fielder from deep third man to come little bit front into the inside the ring. Sumant again. The Keshav using his feet quite nicely, almost coming down the track and uses his feet very well to reach to the pitch of the delivery with the full face of the bat. He sends that one nicely towards the long off by Keshav Pujari. One more addition of that single score, but moves on to 46. So both are the organizing committee and two pillars of this cricket tournament are in the middle. They played it down to short cow point region, not for run. Deepak and Keshav. Again, lovely delivery indeed, but equally well played there by Deepak. Keshav, in fact, played it gently down to extra cover region for a single. The addition of that single score, but moves on to 47 on the board. And both the batters are absolutely knows that no need to panic at all. They are almost in the game. Just rotating the strike. Just using his feet. So good in that shot. And especially Deepak Ramesh. This time fumble from the fielder. They're grabbing that opportunity to convert that single into two. And with that couple of runs scored, moves on to 49. One shot of 50. Deepak Ramesh are almost looking well composed, well controlled. Again driven nicely, just wide of mid on. One more addition. 50 comes off for the team MCF, chasing 99 to win the match. They got a 50 in 11 overs. It's good going. 6 overs left, correction. Another 14 overs remaining to get that remaining runs. The 49 more runs required for the victory in remaining 14 overs. So a lot of hard work required here for the bowlers of team H India. And before that, the organizers are thankful and grateful for all the sponsors, donors, the best wishes which is coming from long way. And of course, the Curry Spoon Restaurant Suratkal, Sona Bar and Restaurant Mumbai, the Lotus Boys, the PG Chowki, SM Cricketers, and Smoke and Grill Restaurant, Apple Fly Wood, Snehologa Cricketers, Dinesh Timbers, Arushi Enterprises, Arish Shetty, Suratkal, Jairam Vijay, organizer, the Prajwal Shetty. Meanwhile, first ball of the over numbered 7, which is dot ball, no run scored. Arish Shetty, Bondel, Keshav Pujari, Deepak Ramesh, Naveen Kumar, Dharnesh Jogi, all are organizers of the pillar of this cricket tournament. So 3 days of cricket tournament. Almost we are in the last stage of the first day. Balled him, cleaned him up, fantastically delivered. The Sumant has been impressive in the previous match also. Sushant will be correction. In the previous match when they tried to defend that small total of 41, he bowled very well against the team AJ Hospital. Again he is continuing that success in this match as well. Right on the block hold, even technically very sound player Deepak Ramesh absolutely has got no clue whatsoever. The pitch of the delivery came from the hands of Sumant will be correction. Sushant has got a vital breakthrough for his team. Wicket number 2 is back in the pavilion.
New batter coming to the middle. Oh, fantastic delivery again, right on the block hold. They wanted to go for the single, they managed. What a delivery that one again from Sushant. Absolutely is delivering some excellent deliveries. Nitin Ullal is off the mark with that single and negotiated very well that Yorker line delivery from Sushant. Again, nicely behind the line of the ball and played it a little bit square of the wicket. Good understanding between the wicket and quickly they managed to complete the single. Good response came from Keshav. So one more addition. Scoreboard now moves on to 52 on the board in the over number 7 in progress. 47 more runs required for the victory. The plenty of deliveries remaining in their innings and Sushant to continue. Full toss, drives at one. And the fielder at short mid-off, not cleanly collected, but managed to stop that stroke, which is powerfully driven by Keshav. And one more addition to total addition of that single scoreboard now moves on to 53 on the board. Oh, lovely delivery indeed. Keshav tried to get that one onto the back foot, but at last he is just changing his mind. Played it defensively. Good over, great over there from Sushant. Wicket taking over as well. And after completion of over number 7, it's a 53 on the board for the loss of 2 wicket. Fantastic job done by all the 5 organizers. And leading from the front, Jairam, Vijay, Keshav Pujari, Deepak Ramesh, Naveen Kumar, Dharnesh, Jogi, all the organizers done a great job. This time drive firmly, a lovely stop, chance of run out. Oh, that might be the close. The good fielding there from that short mid-off fielder. Fields the ball, returns the ball. Little bit hesitation for that run. Nitin almost started his run. Even Keshav responded lately, but he is not running towards the danger end. So that they managed to complete the single. Full toss. Drives that one just for a single. With the addition of that single, scoreboard moves on to 55 for the loss of 2 wicket. You're watching the last match of day number 1 T20 leather ball cricket tournament. Rise at one towards the mid-wicket region. The fielder they are in the deep and they are settled for a single already. They are decided they are not going for the second, only a single for Nitin. 55 now, 56 on the board. Nice looking drive in the gap. That will go into a boundary. He won the fielder there in the widest long off, but he's just watching the ball. The firmly driven with the perfect timing by Keshav Pujari, just breaking the shackles, and scoreboard now jumps into 60. Another 39 more runs required for the victory. The off-volley, the batter have to take that off-volley with the full face of the bat and firmly driven. Sumant pitching it puller line delivery. Again using his feet, gently push that one, chance of run out. The wicket keeper might be the fails to take that throw from the fielder. Risky run.
taken by both the batters. One more over which is comes to an end after completion of over number 8. Scoreboard is 61 for the loss of 2 wickets. 38 more runs required for the victory. Slowly and steadily, the team are absolutely cruising towards the victory. AJ India, if they wanted to remain in the competition, they have to win this match. CPL is under progress in IPL today, and RCB Royal Challenge Bangalore takes on Punjab Super Kings. So one more big encounter. Both the teams absolutely they're in a terrific form. The Keshav on a strike here. Off the backward, cuts that one very nicely down to deep backward point region. That will going to be a chance here for the fielder to stop the boundary. Heavy grass. Ball will not going to travel, but look at that fielder, whether the ball is the fielded well inside the boundary line or not. And it looks like they completed 3 valuable runs. So with that 3 valuable runs, scoreboard number to 64 on the board. Lovely caught shot which is offered by the bowler Sushant. The bowler very impressive so far in the bowling department. Swings and missed. Have a look at that one movement and extra bounce. Nitin just wanted to go for the big swing of the bat without coming to the line of the ball. Just wanted to go for the wide swing of the bat. Missed it completely. No run scored and dot ball. Sushant again bowling away from us. Pass umpire Avinash. Full toss. Nicely driven in the gap. This time he's got enough power. But still the chase here for the fielder. This time ball winning the race against the fieldsman. Again pitching that one almost the shot outside the line of off tempo. Afali for the batter Nitin to dispatch that one into deep cow point boundary for 4 runs. .68 on the board and another 31 runs required for the victory. Again played it down to short cow point region for an easy single. 69 on the board. Wide outside the line of leg stump and 2 wides. In fact, umpire just waiting whether the ball is crossed the boundary. No, it's a fine. The fielder is there in the deep. Couple of runs and with that couple of runs, Coburn moves on to 71. Sushant again bowling away from us. Oh, lovely short pitch delivery. Nitin just again wanted to go for the pull shot. Beaten by that bounce of the delivery. Good short pitch delivery, well directed, well executed. With the pace. Excellent one from Sushant.
71 on the board. 28 more runs required for the victory. Nitin to face Shushan. Full toss. Played it down to short mid off for a easy single. With that single scoreboard moves on to 72. One more over which is comes to an end after completion of over number 9. 72 on the board. 11 runs came from that over. But expensive over which is bowled by Sushant. 27 needed from 11 overs. 66 ball. 27 runs required for the victory. Tomorrow will be the day number 2, and day after tomorrow, the Sunday, the final and decider day of Cpl T20 Corporate Premier League 2025. Wait and see out of 6 teams which team will going to become the champion. Whether it's going to be the MCF or AG Hospital, MRPL, BASF, Infosys, BG India. Tomorrow some big teams will going to take part. The teams like MRPL, Infosys. They are the favorites of coming to the finals. Sumant brought in attack and first ball, short pitch. But the batter Nitin fails to capitalize. Played it straight to the hands of short mid off. Again tries that one. The fielder has been outstanding. That mid off fielder is very impressive. He's almost not giving any ball to get past from him. One more single. 73. Keshav wanted to cut the ball. Very lucky indeed. This ball is passing outside edge of the bat. Shishant. Again wanted to go for the expansive drive. Low full toss. Inside edge of the bat. One more addition. With the addition of that single scoreboard moves on to 74. 25 required. Again tries that one. This time misfielded by the fielder. The first time I'm just telling that fielder is very impressive, but this time is fails to stop the boundary. Pritham standing at short mid off. Misfielded and went into the fence for 4 runs. Firmly struck. With that boundary scoreboard moves on to 78 on the board. 21 needed in 61 deliveries. That was a quite interesting opportunity of run out missed by the fielder. Nitin just coming down the track at the last moment, he's seeing that is a short miss delivery, can't use his feet, and he just taps the ball down to backward point region, try to pick the single. One more over which is comes to an end after completion of over number 10. The total score is 78 on the board. 21 required for the victory, and before next over will going to start here, time to change in commentary box. The time for Gopi, the final time today in the day number 1. I would like to call him on the mic. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त विजय की ओर अग्रसर होता हुआ यहाँ पर एमसीएफ सिर्फ 21 रन चाहिए 10 ओवर में। द रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ कमिंग डाउन टू एग्जैक्टली 10.2 in fact 2.10 runs per hour, 2.10 the required run rate at the situation, 21 to get from 60 balls। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से विजेत गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार नितिन लाल। पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई केशव इस वक्त सामना करते हुए और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 79 रनों पर। 79 ऑन द बोर्ड for losing 2 wicket at the start of the 11th over। In fact, just 20 runs more now they have to score for victory in remaining 10 overs। Required is now straight away count exactly 2 runs per over। विजेत इस बार आक्रामक स्ट्रोक और गेंद गैप पर जा चुकी है 4 रनों के लिए। खाली क्षेत्र चुनते हुए गेंद को इस वक्त निकाल दिया था वाइडिश मिड ऑन और मिड विकेट के बीच, और कोई क्षेत्र रक्षक इस वक्त मौजूद नहीं। डीप मिड विकेट सीमा रेखा के पास और आसानी के साथ गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है। पटकी हुई गेंद कट करना चाहा इस वक्त अंतिम क्षण में, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर नहीं है। कुछ हद तक उछाल लेते हुए गेंद और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त पहुंच चुका है 83 रनों पर। 83 on the board, just 16 to get now। This is the third and a final match of the day one of this prestigious cricket tournament, CPL T20 Corporate Premier League 2025 is now progressing here। Again cut किया खूबसूरती के साथ into the gap as well, just wide of the gully fielder and he's got a boundary for that stroke। Fantastically square cutting at the last moment, just rocked on the back foot and cuts that one perfectly, just wide of the gully fielder and got a boundary for that। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 87 रनों पर। 87 on the board, just 12 runs to get for victory and things getting much easier now for the batting side of the situation for MCF। और CPL T20 जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है SM क्रिकेटर्स ने, और इस बीच गेंदबाज विजेत गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार हल्के से गेंद को खेलना चाहा, टैप करते हुए दौड़ना चाहा रन के लिए, लेकिन गेंद गई बैक टू द बॉलर के दिशा में और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 87 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 87 for the loss of 2 wicket, the scoreboard stays at। और विजेत इस वक्त केशव के लिए जो कि 14 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। Oh, Beamer, this is an out। This is an gone wide of wicket keeper at the last moment। No ball also called by umpire। In fact, फील्डर जो मौजूद थे गेंद को उन्होंने फील्ड जरूर किया डीप फाइन लेग पर, लेकिन इस बीच नो बॉल का इशारा और नो बॉल के रन और कुल मिलाकर 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। 89 ऑन द बोर्ड और फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए। Left it down to long off, but protection out there। Slight bit of fumble there and it might be cut off just inside the fence, I think so। तो एक रन इस वक्त दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 90 रन बन चुके हैं। 90 on the board for losing 2 wicket, just 9 to get for victory in remaining 9+ overs। Just gone for a big one, misses। विकेट कीपर also misses, लेकिन इस बीच बल्लेबाज रन लेना नहीं चाहा। तेजी के साथ अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को उन्होंने फील्ड कर लिया। ओवर नंबर 11 की समाप्ति हो चुकी है। 11 overs completed, 90 for the loss of 2 wicket and now just 9 to get for victory in remaining 9 overs and the required run rate is now straight away coming down to exactly 1 run per over। सिर्फ 9 रन चाहिए विजय के लिए, ऐसा कहना पड़ेगा। एमसीएफ अपने विजय के द्वार पर आकर इस वक्त रुक चुका। अब कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही यहाँ पर ईजी इंडिया को इस मैच में वापस ला सकती है। तो गेंदबाजी इस वक्त
बदल दिया गया है और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर प्रारंभ करते हुए सामना करने के लिए तैयार इस वक्त नितिन उल्लाल ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। देवदास गेंदबाजी शुरू करते हुए टॉप एज मौका हो सकता है, स्वयं नहीं फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाए मिड ऑन पर और एक रन में इस बीच बल्लेबाज को मिला। आक्रामक का प्रहार करना चाहते थे लेकिन गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए टॉप एज पर टकराए, खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए मिड ऑन पर एक रन का इजाफा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 92 रनों पर। 92 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट, जस्ट 7 टू गेट फॉर विक्ट्री। देवदास lofted, square of the wicket, just clearing the infield and the ball running down to apex to cover, long chase for the fielder और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करें नॉन स्ट्राइकर एंड पर डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 93 ऑन द बोर्ड इन फैक्ट, सिर्फ 6 मात्र रन चाहिए और विजय के लिए और देवदास इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए केशव के लिए। पटके विकेट क्विक वन, जस्ट वांटेड टू लॉफ्ट दैट वन ऑन द ऑनसाइड एरिया लेकिन अंतिम अक्षर में गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। शाम के 5:45 इस वक्त बच चुके हैं और निश्चित रूप से धीरे धीरे मैदान पर रोशनी इस वक्त कम होते हुए देवदास इस बार ड्राइव कर दिया, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकलते हुए मिड ऑन पर और तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन पूर्ण करने में सफल। 94 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, जस्ट 5 टू गेट फॉर विक्ट्री एंड नाउ इट्स लुक्स लाइक जस्ट फॉर्मेलिटीज रिमेनिंग इन दिस मैच और देवदास एक बार फिर से अपनी ओर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। शॉर्ट गेंद पुल किया, चांस एट मिड विकेट and he took the catch successfully, not quite meeting it at the last moment and the ball after being got his stoppage it comfortably held at mid wicket just inside the 20-yard circle. Third wicket down, Nitin Ullal departs, it's 94 for 3. So the batsman wearing a number 99 jersey is now comes out to the middle as a number 5 batsman for MCF अभिजीत जो कि नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और देवदास की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार है और देवदास दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अभिजीत के लिए अगली गेंद। इस वक्त अपने ग्लव्स को पहनने के बाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पटके भी गेंद टॉप एज पर गेंद टकरा चुकी है लेकिन स्क्वायर लेग फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर जब तक फील्डर पीछे की ओर दौड़कर जाकर फील्ड करे, एक रन का इजाफा हो चुका है और इस बार ओवर थ्रो लेकिन बल्लेबाज ने कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई दूसरा रन पूर्ण करने में। हालांकि शॉर्ट गेंद थी, गेंद को उछालना चाहता, टॉप एज पर टकराए लेकिन आखिरकार खाली क्षेत्र पर डीप स्क्वायर लेग पर गेंद टिप्पा खाते हुए जस्ट अ सिंगल रन ही गॉट। 95 on the board, just 1-4 to get for victory. सिर्फ एक चौके की जरूरत विजय के लिए। CPL T20 कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग 2025 T20 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट इसके मुख्य पिलर्स 5 पिलर्स कहना पड़ेगा, 5 मुख्य सूत्रधार इस श्रृंखला के सफलता के श्रीमान जयराम विजय, श्रीमान केशव पुजारी, श्रीमान
दीपक रमेश, श्रीमान नवीन कुमार बंटवाल और श्रीमान धरणीश जोगी, इन 5 संगठकों की कड़ी मेहनत मुशक्कत के बदौलत ये श्रृंखला CPL T20 2025 एक शानदार प्रगति करते हुए और ये टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति करते हुए और आज इस श्रृंखला का पहले दिन का अंतिम मैच प्रगति पर बॉल जस्ट कॉल फॉर अ बिग वन, मिडल स्टंप अप्रूटेड. So Keshav, the batsman dismissed out for well made 25 and 4th wicket lost for MCF. Now they are 95 for 4 new batsmen. Number 6 batsman is now comes out to the middle. श्रवण नंबर 6 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए प्रज्ञेश इस बार गेंद को उछाल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इनटू द गैप एज वेल और गेंद इस वक्त वाइड इज लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर फील्ड जब तक की जाए बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. खूबसूरती के साथ इस वक्त बल्लेबाज श्रवण ने गेंद को उछाला था खाली क्षेत्र चुनते हुए वाइड इज लॉन्ग ऑफ पर 2 रनों के लिए एंड इट्स अ बाउंड्री डिक्लेयर्ड बाय अंपायर. So with this boundary the match is now over. That means they won the match by 6 wickets. So comprehensive victory for MCF against EG India, and with that comprehensive victory they have registered their 2nd consecutive victory in this competition by MCF, and EG India now out of the tournament with their 2nd consecutive defeats. So the match, a 3rd and a final match of the day 1 of this prestigious cricket tournament CPL T20 2025 has been came to an end. Corporate Premier League 2025 T20 leather ball cricket tournament. The 3rd and a final match has been captured. So that's it for all the cricketing actions of the day 1 of this prestigious cricket tournament CPL T20. And the man of the match, Deepak Ramesh of MCF adjudged the man of the match for his fantastic batting performance of 19 runs in just 16 deliveries. And also he contributed well as with the ball also. 4 overs, 1 made in 16 runs and 3 wickets, and also he contributed with the bat scoring 19 runs, and because of that all-rounding performance Deepak Ramesh of MCF adjudged man of the match. I request Mr. Deepak Ramesh to please come out to the stage and receive the man of the match award from one of our organizers. So that's it for the day 1 of this prestigious that's it for the day 1 of this prestigious cricket tournament CPL T20 Corporate Premier League season Corporate Premier League 2025 and we'll be back on the day number 2 of this prestigious cricket tournament tomorrow exactly at 8 a.m. The first match of the day 2 of this prestigious cricket tournament will be starts exactly at 8 a.m. in the morning. Till then we are saying you goodbye right from here. And now it's time for DJ. Thank you. So we are giving और हम इस वक्त अभिवादन करना चाहते संगठकों का, मेरे काबिल दोस्त सतीश और मैं गोपी संगठक ऑर्गेनाइजर का हार्दिक अभिवादन करना चाहूँगा CPL T20 संगठकों को, जो कि हमें भी इस श्रृंखला का
एक हिस्सा बनने का मौका उन्होंने प्रदान किया. बी ए पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट. एक बार फिर से उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं. हार्टली थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ CPL T20 Corporate Premier League 2025. Heartfully thankful to once again all the organizers, right from behalf of myself and my friend Satish Salian. We'll be back right on tomorrow morning 8 a.m. Till then, we're saying you goodbye right from here. Thank you. ಈಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುವಂತೆ. ಈಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುವಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಈಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.